ಬಿಲೂನ್ ಅನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ಉರ್ವಾ, ಶಿವಾನಂದ ಡಿಲ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುರುಬರ ಸಂಘ, Mr. Arun D'Souza Bantwal and industrialist of real estate, Ranjit Kumar Bolu, the businessman, and Kishore Sai Slok, and along with all the members, Manjunath, ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವಿಕೆಟ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್, ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಶೋರ್ ಸಾಯಿ ಸ್ಲೋಕ್ and Manjunath sir, ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರದ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಲ ಬರಲಿ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಇಯಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪರಿಸರದ ಶಕ್ತಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿತೆ ಶರಣ್ಯ ಶ್ರೀತ್ರ ಎಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಕ್ತ ಜಂಬೋ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೇ. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ಕ್ರೀಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಪಂದ್ಯದ ಚಾಲನೆ. ಬೆಲೂನನ್ನು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸಕ್ರಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ರಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ 500 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಶಿವಾನಂದ್ ಡೀಲ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಾನಂದ್ ಇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ 500 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಉದ್ಯಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಹೇಮಂತ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ 500 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯರು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಂಘದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರ್, ಇವರ ಹಾಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ 500 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಯಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುತ್ತನ ಇವರು ಹೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಯಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿವಾನಂದ್ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಜೈ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಂಜಿತ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಜೈ ಅವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಇವರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತಹ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಮರು ದಿವಸ ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಶಿವಾನಂದ್ will go into face the very next ball and outside off stump and going for the drive, missing it completely. Again Shivanand will go into face next delivery. Nice shot, beautifully driven down to mid-on region. Thank you very much. And now Arun D'Souza sir will go into bat here. Bombing down the track, using his feet straight down the ground towards the deep long on region. Nice looking drive there from Arun D'Souza. Again right arm over the wicket. Coming down the track, beautifully ball, and that is called coconut bowling, tarai bowling, one of the popular bowling the olden days. Very difficult one to bat. Just again batsman Arun D'Souza using his feet. This time he missed it completely, and Ranjit will go into bat here. Ranjit Kumar. And drives that one upishly down to extra cover region by the batsman Ranjit Kumar. I request two teams captain, ಎರಡು ತರದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಬೈಲ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ತನದ ನಾಯಕರು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದೇಶಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, one of the best cricketer in the olden days, but still now is a very good fit as far as the performance is concerned. Ganesh Kulal is a very good striker of the ball, one who represented for Mangalore cricketers Urwa in the olden days when his younger age. A very good striker of the ball, destructive batsman. Ali team matrix ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ತಸ್ಲೀಂ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಬೈಲ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ team by Ashok Nagar captain. The captains. So Naveen is the captain of Team Bail as well as Taslim, the captain of Team Matrix. And we'll go into toss the coin. And umpire Roland Pinto sir will go into toss the coin. And of course with the presence of Shivanand, the chief guest. Already signed signature completed from both the teams, so that Shivanand will go into toss the coin. Is a call from So call from captain of team. Head is the call, and it's a tail. So that means the captain of Team Bail won the toss,
And Naveen, you won the toss once again. A very good toss to win in the last tournament also. You are very lucky to won the toss. And once again, what you will going to decide? We will field first. The same as UCG cricket ground, everyone winning the toss will be elected to field first. So Team Matrix, just coming back to your opposition, I think the team is a little bit stronger because in the last two seasons they've done a great job, and the last tournament which is held at Bandwal JD Boys Trophy, they becomes the runner-up. What is the game plan against the Team Matrix? Because maybe they are the favorite of winning the match, but what is your game plan against Team Matrix? We want to go slow initially and run every ball and put up a good score and chase it later. You want to chase that? How many runs you want to restrict them in the morning? Since it is a morning and obviously the pitch is wet, so we want to limit them within 30-35 and chase them down. Absolutely, it's a very good toss to win, but winning the toss is not important, but after winning the toss, implementing your game plan strategy is so important. All the best, Naveen, for your game plan, and all the best for the captain of Team Matrix. The news from the center is that captain of Team by Ashok Nagar, Naveen won the toss and elected to field first, and he is saying that he wanted to restrict the opposition Team Matrix within 35 runs, and wait and see how well his game plan will going to work out. So that's news from the center, and instead we were coming to the commentary box along with my friend Mr. Gopi. Thank you.
So, thank you very much. Once again, welcome back. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶಿವಾನಂದ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಜಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಯಿ ಸ್ಲೋಕ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. The first match of this prestigious real estate group registered Bejai Mangalore presented United Trophy 2023 and Team Matrix versus Team Bile Ashok Nagar. And in the morning after that inaugural ceremony, we are into the inaugural match and we are just waiting for the umpires to enter into the ground. And after winning the toss, captain of Team Bile Ashok Nagar, Captain Naveen, rightly elected to field first in the morning. It's a very good toss to win, and wait and see how well this tournament will go into progress. Will it go into be the bowler's day or a batsman's day? Let's wait and see. So all the best for umpires Arish Padil as well as umpire Roland Pinto and Mohan Yadi. Three very good umpires for this prestigious cricket tournament and very popular umpires for this cricket tournament, United Trophy 2023. So just like I mentioned earlier, this tournament which is divided into two groups, the 2 days of cricket tournament. First day, local pool will go into take part. So as per the rules and regulation of this cricket tournament is concerned, please request each and every team to kindly request you to follow the rules and regulation. First of all, this tournament will be of 6 overs, and in these 6 overs, 2 overs going to be a power play where you can keep only 2 fielders outside the circle, not more than 2 in the first 2 overs of the power play. And after that, remaining 4 overs, not more than 5 fielders outside the circle. And that is the rules and regulation of the fielding restriction is concerned in this particular tournament. After that, the time sense is so important, and I request all the teams please follow the time sense. 24 minutes which is allotted time plus 3 minutes which is going to be a grace time. That means the fielding team altogether they have to complete their 6 overs within 27 minutes. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ತಂಡದ ನಾಯಕರು 27 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ 6 ಓವರನ್ನು ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರು ಅವರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ if you want to avoid all these things and you need to cooperate with the umpires, and you need to see the timings. The time sense is very important. Please don't waste the time, and we have to complete 9 matches today, so your cooperation is much required. The organizer decision will going to be our final, and local pool will going to play the first day of cricket tournament, and wait and see which team will going to qualify for the finals of this prestigious cricket tournament. Coming back to the local pool, we have a first match between Team Matrix versus Team Bile Ashok Nagar, and afterwards the second match will be played between Kodikal Challenger versus GFC Konchadi. The third match will be played between Sarvagni Urwa versus Durga Konchadi. The fourth match will be played between Friends Kuttar versus Deadly Kankanadi. And these all are the first round match. And today is day number 1 of this prestigious United Trophy 2023. And all set now for the big day for this cricket tournament. So UCG cricket ground is famously known as
lots of underarm cricket, and you can say it's a Kashi of underarm cricket. And all set now for the first over. The Kiran, the experienced campaigner, will go into start the proceedings, and a team for team by Ashok Nagar. Kiran, one who represent for Mangalore cricketers, are representing for his home team. So he will go into start the proceedings from the commentary box end. So left arm, first ball, going for the slog sweep shot, and the batsman Sadiq is a very good striker of the ball. Sadiq missed it completely because the line is so good, and a very good start there from the bowler Kiran in this first ball. Be bowled outside the line of off stump. Again, the bowler coming from the commentary box and left arm over the wicket, beautifully driven down to deep backward square leg boundary for the first boundary of the tournament. Just like I mentioned, Sadiq is a very good striker of the ball. You can't bowl to him around mid-line leg stump. Even the middle stump is loves to play that shot. The previous delivery, which is outside the line of off stump, he couldn't manage to reach the ball. This time might be Kiran trying for the delivery, which is very close to the bat. And for the strikers like batters like Sadiq, if you ball that line, he will take the advantage of that one. Now after that boundary, Kiran kept one fielder in the deep square leg in front of square, and the boundary comes up with a good start here for Team Matrix. The 4 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Kiran again bowling away from us, left arm balls, nicely driven down to deep wideish long on region. They will come back for the second because placement is so good. Deep long on fielder is in almost in a straight version, so that he has to move towards the right of his side. So ample time for the batter to complete the couple of runs there. With that couple of runs, covered numbers on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. A very good start, positive start there from the opening batter, especially the Sadiq, one who picked up 6 valuable runs in just 3 deliveries. So a lot of fielding changes, mid-on coming towards the mid-off region, 5 men in the offside region, 4 in the on, short fine leg, square leg, mid-wicket, deep square leg in front of square, and 1 at deep long on. Deep long off is there. Beautifully ball, sharp incoming delivery there from Kiran. Change up pace at the same time, slower one, and little bit turn here and encouragement for the bowlers, just like the captain Naveen mentioned about a little bit wetness in the pitch. Might be a little bit encouragement for the bowler, but need to capitalize that one. The bowlers, both bowling some good line and length. This time again across the line, wanted to swing that one. Chance of run out there in the non-striker end, but throw is not good enough. If it is a full throw into the hands of bowler, the run out which is created. Kiran left arm over the wicket. Balls, lack of placement, down to short mid-off region, and there is no chance at all for any. Good comeback here by Kiran. The 7 from that over, not a bad over, considering the fact that the power play overs in that one boundary which is conceded, and a couple of runs and a single. So 7 in the first over. Looks like an equal start for both the team. A steady start from the opening batsmen of Team Matrix. Team Matrix, of course, they got a very good season in this particular season. The performance is so good in Yuvaratna Trophy. They qualify for the semi-final, but immediately after that, in the prestigious JD Boys Trophy 2023, they performed really very well. They came into the finals in that JD Boys Trophy 2023, and they gave a lot of fight for the opposition in the final. And Adimaheshwari cricketers against Adimaheshwari cricketers, when everything is over out of the hands of Team Matrix, in the last moment they bounced back, but they lost the match by at least 4 or 3 runs in the final. Starts with the Spectra wide. No ball call by umpire,
and ball which is gone out of the pitch, so that no ball called by umpire. With that 1+1. Again the no ball. The bowler is a little bit struggling here. So 1+1, 1+1, 2 no balls, free hit delivery continues here. It's not a good sign. It's not a good sign for team by Ashok Nagar. Conceded 4 runs without a single delivery, and might be the bowler having a problem, a little bit feeling the pressure here, and Mukesh, again that ball going outside the line of off stump too much. One more no ball. 3 no balls. Again that's 1+1. 6 runs which is conceded. I think it's a better option to coming round the wicket for bowler Mukesh to bowl round the wicket. I think it's a better option, that's like mentioned about, and he bowled first fair delivery of this over, and second time in this over bowling round the wicket. Balls this time, loose delivery, hits that one down to deep backward square leg boundary, 1 bounce into the fence for 4 runs. So instead of looking for any good delivery, but bowler wanted to complete his over. By doing that, he is not really concentrated over the line. He only concentrated ball that fair delivery. By doing that ball which is going down the leg stump, batsman capitalizing that one. Rizwan hits the ball into the fence for 4. 1 more wide, 1 more extra. With that extra score, but Namuzan to 18 on the board. It's not a good start for team by Ashok Nagar. This time lofted opportunity for the cow point fielder to take the catch. At last, the breakthrough for team by Ashok Nagar through Mukesh, and but I think is too costly already. And Rizwan is looking for the expansive drive on the offside region, not quite getting that one from the middle of the bat, and mistiming that one, and cow point fielder making no mistake at all. Wicket number the first which is back into pavilion, 18 for the loss of 1 wicket. So new batsman is walking towards the middle with the jersey number 3. Safwan is the batsman. Will go into face. Driven again upishly, and this time ball is not carried to the fielder at cow point region, and mistimed cricketing stroke there from Safwan. Luckily that ball is landed safely in front of the cow point and got ample time to complete the single. 19 for the loss of 1 wicket. This time Sadiq went for the big shot. Dilraj going back, and he takes a good catch. So at last the Mukesh able to bounce back in this over with the 2 wickets. Both the opening batters are back into pavilion. Now Sadiq, the batter, is back into pavilion. So over number 2 is in progress, and they lost 2 wickets. We got 2 wickets in this over after the shackling start. This next match
Kodikal Challengers versus GFC Konchadi. So that I request both the teams captain, please report here in commentary box immediately to sign the official chart. ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್, 19 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಓವರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬೌಲರ್ Mukesh. After that he bowled some no balls and wide balls, then one boundary, and he bounced back well with wicket taking deliveries. 2 wickets for Mukesh. Again nicely bowled, almost angling away from the right hander batsman and going for the dry and just missing it completely, that line. And one more addition to total. Correction, it's over completed. It's over completed. 2 overs completed. So 2 overs completed after completion of over number 2. It's 19 for the loss of 2 wicket, and over number 3 will going to start from the commentary box and Rohan Corporation, which is far end, one of the popular real estate firm organization, Rohan Corporation. So bowler from the commentary box and Chetan brought into attack. Start with beautiful leg cutter. Chetan is one of the future of Underarm cricket, and a very talented bowler. Starts with the delivery, which is fantastic leg cutter, and just going away from the right hander batsman, just missing that outside edge of the bat. And now off cutter, but not a big off cutter. The batsman right behind the line of the ball, Safwan, just placing the ball down to back point region. Along with that, he takes a single there. With that single, Scoven was on to 20 for the loss of 2 wicket. Again nicely bowled there by Chetan. One more dotted delivery. Team by Ashok Nagar badly required that kind of overs. The Chetan wanted to produce one good over because of 2 expensive overs. This time he's looking for the slog sweep shot. Top edge. Oh my goodness! It looks like Dilraj. Umpire Roland Pinto saying that if you're not able to take that catch in a second attempt, I will going to take the catch. And he was very close to the square like umpire Roland Pinto. And he's saying that it's a easy catch, my boy. Why you're taking that much of the pressure? And after ball is just slipping out of the hands of Dilraj. The second attempt, the Roland Pinto accidentally he's wanted to take the catch. He was almost just extended his hand to take the catch. But if Roland Pinto will going to take the catch, it's going to be a very difficult for scorer to register who takes the catch, whether the Dilraj or Roland Pinto. So 24 the loss of 3 wicket. Anyhow, a little bit the comedy of error, and the batsman is gone. Chetan got a fantastic wicket, absolutely. He's deserved this wicket because the way that he's bowling that line and length. Chetan again, right arm over the wicket balls. Went for the reverse play. That dangerous one for the wicket keeper. The batsman looking for the reverse stroke. The bat is very close to the face of wicket keeper. Wicket keeper need to be very careful, because sometimes it's happening. The batsman going for some unorthodox cricketing strokes very close to the wicket keeper. Again, that the ball just a little bit going down the leg stump and hitting the legs. Fantastic over which is comes to an end here from Chetan. 3 overs completed after completion of over number 3. Searching for the right track. It's a 21 for the loss of 3 wicket. And now I think Chetan is really brought team by Ashok Nagar
back in this game because of the too expensive over, especially the last over, which is very expensive. And in this particular over, just a couple of runs. It's outstanding bowling performance here from Chetan. And wait and see how many runs Team Matrix will going to score in the remaining 3 overs. And wait and see how Team Bile will going to restrict the runs in the remaining 3 overs. So now it's a time to change in commentary box as well. And time to ask Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And good morning, Gopi. Once again, it's a busy schedule for us after completing yesterday's Tuckers organized BK Champions Trophy. We are into the real estate organizing United Trophy 2023, and it looks like real estate group registered Bejai Manglore. They got a very good concept of organizing cricket tournament with the motive of helping the students who are backward financially. They wanted to help them. I think it's a very good concept from real estate group registered Bejai Mangalore organizing United Trophy. Only the aim of helping the poor students. Thank you. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों को मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस वक्त रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय ने इस वक्त इस श्रृंखला के जरिए ढूंढा है। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिलेगा। और गरीब बच्चों के विद्याभ्यास शिक्षण के लिए इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है और निस्संदेह एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहना पड़ेगा जो रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय ने इस वक्त किया है। इस श्रृंखला में जितना भी धनराशि आएगी वो धनराशि को उन्हें गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए जो कि इस्तेमाल करने के लिए दान दिए जाएंगे। तो निस्संदेह कहना पड़ेगा काबिल तारीफ काम इस वक्त करते हुए रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय के सर्व सदस्य। और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला। और जहां तक सवाल है, यह गेंद पुल किया इस वक्त डीप विकेट के ऊपर से, लेकिन वहां पर क्या छूट चुका है, कैच इस वक्त छूट चुका है। और यहां पर बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। तो आसान सा कैच था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा फील्डर के हाथों से छूटती हुई। तो अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद चिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की दिशा में 1 रन मिलेगा। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, गेंदबाज मंजीज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करते हुए सफान। अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस, एब्सोल्युटली परफेक्ट इम्प्रोवाइजेशन, दिस टाइम इज गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। This is an absolutely perfect strike. Just played that one with a twisted bat and finds the gap as well between backward third man and a deep cover point. Boundary results and with that boundary the scoreboard moving up to 31 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त फुल टॉस गेंद पर रबर शॉट के जरिए सफान ने गेंद को खेला इस वक्त 4 रनों के लिए। और एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाज मंजीत तैयार, रोहन स्टेट एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस, पुल दैट वन बट स्ट्रेट टू फील्डर। This time he won't survive. Safan the man depart. Just wanted to heave the ball over the long on area. Not succeeded. Can't face the gap as well. And the long on fielder just took the catch inside the fence successfully. और इसी के साथ चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका, लेकिन रन की गति काफी बेहतर रहा इस वक्त टीम मैट्रिक्स की। जहां तक टीम मैट्रिक्स का सवाल है, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, टीम मैट्रिक्स चंद दिनों पहले बंटवाल में जो जेडी बॉयज प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन हुआ था, उस क्रिकेट श्रृंखला में रनर्स अप का खिताब उन्होंने प्राप्त किया था, जबकि आदि महेश्वरी चैंपियन रही थी। तो उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश में टीम मैट्रिक्स के सदस्य, और देखना यह कि इस श्रृंखला में वो फाइनल तक प्रवेश कर पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त खासकर ए पूल में 10 प्रतिष्ठित टीमों का मुकाबला हो रहा है और इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। तो टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंस एंड इनटू द फेंस। Inside out cricket he played and he played that one into the gap as well. Boundary results, and with that boundary the scoreboard moving up to 35 for the loss of 4 wickets now at the start of the 5th over in fact.
बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए बल्लेबाज इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला था निजाम ने और चौका प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ 35 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 overs completed, 35 for the loss of 4 wickets. Still, except they lost their 4 wicket, team metrics are looking in a commanding situation. The first match of the prestigious cricket tournament, United Trophy 2023, is now progressing here, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai. और जहां तक सवाल है अगले मैच का, कोडिकल challengers will takes over GFC Konchadi in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद को खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। चेतन गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं, अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद टॉप एज मौका हो सकता है, लंबन फील्डर यहां पर आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए बल्ले के टॉपेज पर टकराई, लंगोन पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका फील्डर ने। 5वां विकेट गिर चुका है, 35 for 5। तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, 10 प्रतिष्ठित टीमें इस पूल ए में हिस्सा ले रही है। टीम बैल अशोकनगर और टीम मैट्रिक्स के बीच पहला मैच इस वक्त जारी है। कोडिकल चैलेंजर्स GFC कुंचाड़ी का मुकाबला होगा दूसरे मैच में, और बाकी की टीमें न्यू स्टार कुंजतपेल, रेड विंग्स, सर्वाग्नि उर्वा, दुर्गा कुंचाड़ी, फ्रेंड्स कुत्तार और डेडली कंकनाड़ी, जो कि 10 प्रतिष्ठित टीमें इस लोकल पूल में हिस्सा यहां पर ले रही है। कल मंगलोर के टॉप सीडेड टीमों का मैच खेला जाएगा। 6 प्रतिष्ठित टॉप सीडेड टीमें मंगलोर के इस कल बी ग्रुप में यहां पर भिड़ेंगी और निस्संदेह कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ, और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। तो ओवर द विकेट स्वीप किया इस बार, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, गेंद का इंतजार करते रहे, ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। फिर से वहां पर मिसफील्ड, बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके। सो एब्सोल्युटली गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 3 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। चेतन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, सामना इस वक्त करते हुए निजाम, और जहां तक सवाल है ये गेंद पैरों पर टकराए, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड, और 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंचेगा 39 रन पर। बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल नियुक्त किया गया है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के लिए। श्रीमान लोरेन पिंटो, इनके सारथ्य में श्रीमान हरीश पटेल और श्रीमान मोहन यैयाड़ी, जो कि इस श्रृंखला के अपना कार्यभार इस वक्त कार्यभार निभाते हुए कहना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार था, तो ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह, ऑफ कटर गेंद थी, गेंद लगभग उनके पैर पर टकराई, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 39 for the loss of 5 wicket. They are looking in a good situation for team metrics after completion of 5 overs against team Bale in the match number 1 of United Trophy 2023. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. K196057 ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು K196057 ನಂಬರಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So this one, and the bowler Kiran starts the fresh proceedings. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा लेकिन ठीक तरह से स्वीप नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 6वां ओवर प्रारंभ हो चुका, 6th ओवर स्टार्टेड, 6th एंड फाइनल ओवर इन फैक्ट स्टार्टेड इन द रिंग्स। किरण अनुभवी गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला, पकड़ा थर्मन की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 2 कदम आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को इस वक्त खींच चुके हैं। निस्संदेह वहां पर उनकी पारी
पर पर्दा गिर सकता अगर दूसरा रन वो लेते अंतिम क्षण में, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 40 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेल दिया डीप स्क्वायर की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 41 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। और टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाज अपनी छाती के अनुगुण इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और एक बेहतर स्कोर खड़ा करने की ओर अग्रसर होते हुए। और फिर से एक बार किरण बाएं हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके, शॉट फाइनल की दिशा में 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। रोहन स्टेट कॉर्पोरेशन नेट की ओर से गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए किरण बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद थी, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, जस्ट वांटेड टू पुल दैट वन ऑन द ऑन साइड, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली, प्रीटी स्लो वन फ्रॉम किरण एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। One more wicket fallen, 6 wicket gone, it's 42 for 6 and Mohammad Shaz now departs. और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में अंतिम गेंद बाकी और उस बचे हुए अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज नासिर। तो नासिर का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज किरण। और बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, सुबह का वक्त 9:45 यहां पर बच चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का पहला मैच यहां पर प्रगति पर बाएं हाथ ओवर द विकेट पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ये गेंद किरण की गेंद उछाला in the air, this could be a chance. In fact, the ball fell short of a feeder at mid-off. In fact, they come back for the second. This could be in trouble, but he made it. He made it at the last moment. Couple of runs added to the total for Nasir. और इन दो रनों के साथ innings is up for team metrics. Their stipulated overs are completed and they finished with 44 for the loss of 6 wickets after their completion of 6 overs. And the target is exactly 65 for Team Bail Ashok Nagar, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.5 runs per over, 7.50 runs per over they have to score for victory. 45 they have to score in the stipulated 36 innings. That means in 6 overs with the help of 10 wickets they have to score. The present equation shows for them, and let's see can they read the target or not. Meantime, I once again call the captain and the players of Codical Challengers and GFC Konchadi, please to be reported here to make a sign in the official chart. And back to this game, and the innings of Team Bail. The innings of Team Bail Ashok Nagar will going to start with just a short while. Till then, waiting short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the innings of Team Bail Ashok Nagar will going to begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಎಫ್ಸಿ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Thank you very much, Gopi. So before going to the innings of team by Ashok Nagar, I request all the players of Kodikal Challengers as well as GFC Konchadi. ತಮಗಿದು ಎರಡನೇ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ GFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ use total on the board, and 45 is going to be a target in front of team by Ashok Nagar, and wait and see how well team by Ashok Nagar will going to produce the start here, and some kind of aggressive start which is required for team by Ashok Nagar, especially in the power play overs, and wait and see how well they're going to deal with that 2 hour of the power play to get some good start. Umpire Arish Padil signaling towards our scorer, and Sachin Kamath is a very experienced scorer as well as a very good Kannada commentator. Just receiving the signal from our umpire Arish Padil. Looks like everything is ready for the power play overs. In the power play, deep long on and deep long off for the 2 fielders in the outside the circle, and inside the circle, one at short fine leg, one at square leg at behind in front of square, short mid wicket, wideish mid on, one at short extra cover, short cover point, short third man, deep long off and deep long on the 2 fielders outside the circle. Taslim, the captain of the side, will go into ball first delivery of the innings. Right arm over the wicket, improvisation, beautifully down to deep third and boundary ball for 4 runs. Oh my goodness. Oh my goodness, the ball looks like the fielder while chasing that ball is almost very close to that. Of course, looks like it's one of the dangerous areas as far as the usage cricket ground concerned. And need to complete that work of building galleries, prayers galleries, and it is a wall which is not height enough, and for the God's sake, the fielder quickly realizing that the dangerous, so that he just given up and ball went towards a deep third man boundary for 4 runs. A very good start from Praveen, executed so well the first ball itself towards a deep third man boundary by playing the silver save. This is appeal for leg before wicket. The ball little bit just going down the leg stump. Very good comeback by Taslim, and he really likes the way that Taslim, of course, once he got appeal for umpire Arish Padil, and quickly he realized that yes, umpire rightly so, that ball is just going down the leg stump with the deviation and extra turn in that delivery, but it's a very good comeback here by Taslim. Taslim again back to his bowling mark, right arm over the wicket to Praveen. Praveen this time again, that was a sharp incoming delivery indeed, hurried out to the batsman. It's hurried out to the batsman. Good comeback by Taslim. He's a man in form from his bowling, and he's the one is responsible for the victory for his team in the JD Boys Trophy 2023, because he's the one is leading from the front every time. He's got a very good start from his bowling. When he was a power play is on, he's the one. He's always produced a good start for his team, and in this match even first ball it's a boundary, then 2 very good deliveries to bounce back. Again one more very good delivery indeed. After that boundary, Praveen played 3 dotted deliveries here, 3 dotted deliveries. Again Taslim bowling right arm over the wicket to the right-hander batsman. Praveen will go into ball is in there, and first wicket is back into pavilion. It's a 4 for the loss of 1 wicket. So first wicket is back into pavilion, and the batsman Praveen, after he got a very good start from the bat, and he couldn't manage to
continue the start what he has got, and he went for the reverse stroke once again, but not really able to get that one from the middle of the bat. Ball went straight to the hands of back at point region. First wicket is back into pavilion. 4 for the loss of 1 wicket. The slim balls. This time Dilraj is a new batsman in. Appeal for leg before wicket, but ball just going down the leg stump. Fantastic over there from Taslim. It's only the good bowler can do that job, isn't it? After that boundary in the first ball, then he bowled 5 magnificent deliveries. In that he picked up a wicket as well. 5 dotted deliveries, 1 wicket and 1 boundary. Altogether, it's good start given there by again Taslim from his bowling. But for team by Ashok Nagar, this is not a kind of start what they really wanted when you are chasing a total score of 45 to win this match. And when it's a run rate required is 8.5 runs per over, I think the first over is going to be very key to get some good start. But after getting a boundary, they just lost the momentum. And that's only because of Taslim. After that, he's back very strongly with some very tidy line and length. So, equation 41 more runs required for the victory in remaining 30 balls. 30 ball, 41 required. The difference between run and ball exactly the 11. And that difference, I think a team by Ashok Nagar have to reduce each and every overs, isn't it? This is the last over of the power play, and wait to see how well these two batsmen will go into take this last over of the power play. Prasanna is on strike. Dilraj is on non-striker's end. And first ball of the over number second. Chance of run out, and fielder in the short extra cover region. I think is a Safan is the fielder there in the short extra cover, trying for the shy at the stumps, missed it completely, and Prasanna got a single for that. With that single, score moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Nizam again from the far end. Right arm over wicket to Dilraj. Dilraj going for the expansive drive. Of course, Dilraj is a very good striker of the ball. Absolutely perfect striker of the ball, but sometime it's need to see that some deliveries which is not that much of easy to hit the ball. There's a good ball there from Nizam all around the midland off stump, wide outside the run of off stump. Now I think the bowler Nizam wanted to defeat the bat of right-hander batsman so that he would try it for the delivery which is outside the line of off stump, but he just lost his concentration over the line too much outside the line of off stump. White call by umpire Roland Pinto. Scoreboard 6 on the board for the loss of 1 wicket. Taslim balls and against the line, he wanted to swing that one. Chance of run out, but I think the bowler just missing the throw from the fielder. So good attempt there by the fielder at short cow point region, just to pick up and throw into his wrong end. It's a good collection and throw from the fielder, but I think the bowler couldn't manage to catch that throw from the fielder. Otherwise, Dilraj is in so danger of getting run out, and he's lucky there, still there in the middle. 7 for the loss of 1 wicket. Going for the drive, got outside the edge of the bat, didn't got in the proper connection in the relegation there from Prasanna's bat. Just a single there. With that single, scored Namuzan to 8 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. So again, the bowler back to his bowling mark, Nizam, with short run up from the Rohan Corporation end. Balls beautifully balled, perfect line to ball to the batsman like Dilraj, because Dilraj is a kind of batsman he wanted to see the ball around his playing area in the sense in the slot, but the bowler bowled outside the line of off stump and he just missed that completely from the bat. 8 for the loss of 1 wicket. Again went for the drive, again the same line, same length. Dilraj missed it. So again the second over is going in favor of Team Matrix. Team by Ashok Nagar, really they needed good over, needed one good over, needed one productive over. So far I think 2 overs which is belongs to fielding team, Team Matrix. They bowled very well 2 overs. Captain Taslim bowled over of 4 runs. Nizam also bowled over of 4 runs. Altogether 8 runs. 8 deducted from 45. That means 37 more runs required for the victory in 24 deliveries. Each and every economical over seems to be a little bit difficult task now for team by Ashok Nagar, but not impossible. The condition is not that much of bad here to bat on. Looks like in the morning itself
that batting first team scoring 45 runs means it's not a bowler's paradise. This is absolutely going to be a batting paradise. Just seeing the nature of the ball which is used in this particular tournament is a Dunlop stage. It's definitely going to be the ball where batsmen can dominate. If we get very proper timing and some power behind the stroke, they can get the distance. So 8 for the loss of 1 wicket. The wait and see how well the team by the 2 batsmen will going to change the gear here. They need to change the gear if he wanted to back into this match. Taslim, right arm over wicket, drives that one down to deep long on region by Prasanna, but protection is there for him in the deep long on region, so that he has to settle for the single. With that single score, numbers on to 9 on the board without loss of 9 on the board for the loss of 1 wicket. Dilraj is a kind of batsman who loves to play in front of wicket, because there are some players like 30-yard and 7s, they are always strong in front of wicket, and because of their strength, the scoring opportunity in the 30-yard and 7s is well in front of wicket. And that's why Taslim again right arm over the wicket. Dilraj drives that one down to deep long on region for a single. I still remember Dilraj has played a very good innings for his team in the last tournament which is played in the UCG cricket ground. Maybe it was the Yuvaratna Trophy 2023. He's got a very good time from his bat and the ball, and needed is one more experienced batting performance for his team if he wanted to win this match. 10 for the loss of 1 wicket. Taslim, right arm over the wicket, tries that one, lack of placement, straight to the field, a chance of run out, but again the overthrow. But the batsmen are not interested for that overthrow, because Dilraj, of course, he started his run. He already started his run from the non-striker's end. When the ball went straight to the hands of short extra cover, rightly so, Prasanna is not interested because of that stroke which is went very, very quickly to that extra cover, short mid-off fielder, wide short mid-off fielder. In fact, and here is Taslim again, drives that one. Prasanna, beautiful looking stroke, but not more than a single here. Lack of placement, very hard to get the placement because of the fielding restriction is over. We can find so many bodies out there in the deep. One a deep backward square leg, deep mid wicket, deep long on, deep long off, and deep extra cover. The fielders are in the deep, saving the boundaries. Taslim again now, bowling away from us. Right arm over the wicket to Dilraj. Dilraj improvising that one, but again the ball went straight to the hands of square leg region behind the square. One more addition to total with the addition of that single. 12 for the loss of 1 wicket. Of course, Taslim is not really bothered about that singles. You know exactly what kind of bowling required in this situation. Ali Daimadi, Kodikal Challengers Hagu GFC ಕೊಂಚಾಡಿತನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Driven straight down the ground, but protection has been given in the deep long off region. Powerfully driven back. Opportunity for Taslim to take the cotton ball, but it's a very hard opportunity because that reaction time is very less. Just a fraction of a second you need to react to that catch. And one more good over completed. After completion of over number 3, chasing 45 to win this match. Team by Ashok Nagar till stairs, searching for the right track, struggling in the middle. 13 for the loss of 1 wicket. And before the next over going to start from the Rohan Corporation, and it's time for Gopi to take over the microphone in remaining 3 overs and 18 balls. They have to get another 32 runs to win the match. And Gopi, it looks like 32. It's going to be a very difficult one. 10.33 runs per over is the requirement, it might be. And I think these two batters have to think a little bit different. And I think they need to change the gear here onwards, because asking run is climbing up each and every economical over. And now I think it's a do or die situation for team by Ashok Nagar if they wanted to win the match. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, और 32 रन इस वक्त चाहिए. एग्जैक्टली रिक्वायर्ड 10.66 रन फॉर ओवर दिस सिचुएशन, एंड 32 दे हैव टू स्कोर इन द रिमेनिंग 3 ओवर्स. और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और देखते हैं इस इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद इस वक्त अपने दूसरे प्रयत्न में फील्ड कर ली गई. अंपायर गेंदबाज को पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग देते हुए डेंजर जोन पर प्रवेश करने के लिए. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए निजाम दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद, दूसरी गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ड्राइव किया, स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। तो जहां तक का सवाल है डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर स्विंग करना चाह चुके और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। लेग बाय का इशारा और लेग बाय किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर 4था ओवर यहाँ पर प्रगति पर चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है इस वक्त टीम बेल अशोकनगर को इस मैच में वापस आने के लिए और अपनी ओर की अगली गेंद। ये गेंद जमीन के सहारे गेंद उछाला इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट मिड विकेट फील्डर आफ्टर इट but won't prevent the single, and with that single run the scoreboard moving up to 16 for the loss of 1 wicket now in the over number 4 in progress। रनों के लिए कड़ा संघर्ष इस वक्त करते हुए बल्लेबाज टीम बेल अशोकनगर के और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद चिप किया इस बार लॉन्ग ऑफ के दिशा में गेंद जाते हुए नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो जहाँ तक का सवाल है रनों का तो रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर्स कंप्लीटेड 18 रन्स ऑन द बोर्ड 1 विकेट लॉस्ट 27 to get from 2 overs with a required run rate of exactly 13.5 runs per over। Absolutely difficult task in front of the batsmen of Team Bale Ashoknagar, but not impossible. If they batted bravely, it would have been a possible for them. And let's see what will happen in this remaining 2 overs of their innings. Meantime, I once again to call upon the captains and players of Kodikal Challengers and GFC Konchadi. Especially, I call players of Kodikal Challengers to please to be reported here to make a sign in the official chart. Kodikal Challengers ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ GFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. नया ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑन पर कहना पड़ेगा मिसफील्ड इस बीच तस्लीम द्वारा जब तक गेंद को दूसरे फील्डर बैकअप करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी वाइड का इशारा अंपायर का। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इनफैक्ट रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से गेंदबाज माफ कीजिए इस छोर से कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन्स नहीं मिलेंगे। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मैट्रिक्स के और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल लेकिन एक रन मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर absolutely fantastic fielding made by fielder at deep mid wicket. In fact the batsman got only a single for that stroke and with that single run the scoreboard moving up to 23 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress। और निजाम अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद अंतिम क्षण में गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और 23 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 8 गेंदें बाकी और 22 रन चाहिए 22 रन टू गेट फ्रॉम 8 डिलीवरीज।
और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब टीम बैल अशोकनगर को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार अपने ओर की अगली गेंद लेकर दाहिना तो ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद ड्राइव किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट ही गेट्स अ सिंगल द बॉलर हिमसेल्फ आफ्टर इट एट शॉर्ट मिड विकेट ही कलेक्टेड द बॉल बट वोंट प्रिवेंट द सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद लगभग उनके पैर पर टकराई और एक रन का इजाफा। I think he's got a bat on that at the last moment and a single run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 25 for the loss of 2 wickets. 5 overs have been bowled, 20 runs to get from last over. Absolutely difficult task and as far as the boundary and sixes are concerned, the situation for Team Bail Ashoknagar, they badly required couple of big strokes at the stage to get back into this match in this remaining last over. तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर विजय ने इस श्रृंखला का आयोजन किया गरीब बच्चों के पढ़ाई के फंड के लिए और पढ़ाई की सहायता के लिए कहना पड़ेगा। एक बेहतरीन उद्देश्य के साथ यहाँ पर इस बेहतरीन श्रृंखला का, इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया है रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर विजय मैंगलोर ने। और आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला यहाँ पर शुरू हुई और एक बेहतरीन प्रगति ये श्रृंखला यहाँ पर करती हुई मैच, इस श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और अंतिम ओवर इस मैच का यहाँ पर शुरू होता हुआ। मुस्ताफा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 20 रिक्वायर्ड इन द लास्ट ओवर और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त वारिस लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े इस वक्त नजदीकी मामला, लेकिन इससे पहले की गेंद गेंदबाज के हाथों में पहुंचे बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सिक्स्थ एंड लास्ट ओवर। 5 balls left, 18 runs to get. So गेंदबाज मुस्ताफा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। 17 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज, 17 रन चाहिए बचे हुए 4 गेंदों में और मुस्ताफा एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार उछालने में चूक है, शॉट फॉरने की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 22 का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, 16 रन चाहिए 3 गेंदों में, लगभग अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ टीम बैल अशोकनगर, 16 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 balls। और मुस्ताफा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, यह गेंद उछाला लंबी की दिशा में इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। 23 for 2 now, 2 sixes required now in remaining last 2 deliveries. The hopes alive for Team Bail Ashoknagar और 2 छक्कों की जरूरत है और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेला था बल्लेबाज दिनराज ने और इस चौके के साथ वो अपने टीम के उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं। अब अंतिम अवकाश अभी भी बरकरार, 2 sixes required in the last 2 deliveries और गेंदबाज इस वक्त तैयार, मुस्ताफा दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दिनराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 2 छक्के चाहिए अंतिम 2 ओवर में, यह गेंद इस बार खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिर्फ 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 35
10 required of last ball. 9 for tie, 10 for win. अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो टीम मैट्रिक्स की विजय यहां पर निश्चित है। और देखते हैं अंतिम गेंद पर मुस्तफा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। 10 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल। दाहिने हाथों पर द विकेट मुस्तफा दिनराज के लिए। मैच की अंतिम गेंद इस बार चूके। दैट्स इट, 9 runs victory for Team Matrix against Team Bail Ashoknagar in the match number 1 of United Trophy 2023, with proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore, and with that 9 runs victory they are through to the next round of this competition. Next match, Conical Challengers will take over GFC Konchadi, and that match is now coming up live and exclusively right in front of you with the short pile. Till then we're taking short break, and we'll back right after the short break with the match number 2 will going to commence. Thank you. Dhanyavad. Man of the match of this match award goes to the man who performed with the bat as well as with the ball. Nizam of Team Matrix adjured the man of the match because of his all-rounding performance. I request Nizam please come on to the stage and receive the man of the match award from organizer. Jersey number 44, Nizam adjured the man of the match. And I request once again Nizam, very good, jersey number 44, please come on to the stage and receive the man of the match award from organizers. So man of the match award sponsored by Grahini Brand Masalas. They are organizing this. They are presented this man of the match award. Grahini Brand Masala. I request Mr. Nizam to please go on to the stage and receive the man of the match award from organizers, as well as the losing team captain. Also, please go on to the stage and receive the momentum from the organizers to participating in this tournament. So GFC Konchadi are won the toss, and what the decision they will take, just we have to wait and see, against Conical Challengers in the match number 2 of United Trophy 2023. And the match number 2 of this tournament is now coming up live exclusively right in front of you with the just shot pile. Nizam of Team Matrix received the man of the match award from the organizers, and the man of the match award presented by Grahini Masala, and he'll receive the man of the match award in the face of t-shirt. Beautiful t-shirt distributed by organizer to Nizam for the man of the match award, which presented by Grahini Brand Masala. GFC
Konchadi after 1 they elected to field first against Kodigal Challengers in the match number 2 of this tournament, and I request all the players to please start the match immediately. Thank you. Dhanyavad. ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್.
Welcome back once again. The match number 2 of this prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, Mangalore. And everything is ready here for the second match. And umpire Roland Pinto signaling towards our scorer. And Swastik as our scorer. Everyone is ready here. And first ball will go into start from the commentary box. And the bowler will go into start the proceedings. First ball. Right arm over the wicket to Kiran. Kiran this time no ball called by umpire. The first ball itself, it's ball pitching outside the line of the pitch, so that no ball called by umpire, and the free hit delivery will go into for free hit delivery, which is signaled by umpire, and Kiran has got an opportunity to hit the free hit delivery. First ball, right arm over the wicket again, going to be a one more wide. This time wide, pitched a little bit outside the line of off time. Again the deviation, leg cutter going further away, and free hit delivery which is continues for batter. Right arm over the wicket to Kiran. Kiran, oh my goodness, one more wide delivery if Kiran left the ball, but he wanted to reach the ball to and outside and off stump. He got a bat onto that, so that he got a single for that. With that single, scoreboard numbers onto 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Prithvi is a striker. Pritesh, right arm over the wicket again. The problem continues here for Pritesh. It's not a good start there for team GFC Konchadi. And next ball, and a nicely driven, like a placement, but no problem whatsoever as far as single is concerned. Prithvi's got his first run from the bat. And scoreboard now 5 on the board without loss of any wicket. Again outside and off stump, one more wide. Altogether there is 1 no ball and 3 wides conceded by bowler Pritesh. Is struggling to get his line and length. 6 without loss of any wicket. Previous match already the team by Ashok Nagar pays the penalty by bowling some extras. This time he lofted handsomely, and will going to be a 6 here. Magnificent struck there from Kiran. And what a shot that one. Have a look at that one in a replay. The magnificent stroke, isn't there? Nothing much wrong with the line. Just he shuffled across the line of the delivery. And Kiran, everybody knows what is potential. Once he hits the ball very neatly and cleanly. And he got distance for that. Again, this time appeal for leg before wicket. And looks like it's a ball which is little bit has got a bat onto that, so that the batsman survives from the leg before wicket. That's why the bowler is not that much of confident appeal coming from bowler. He also knows that Kiran has got a bat onto that, and after having a bat, ball is hitting his leg. Scoreboard now 13 on the board without loss of any wicket. Right arm over the wicket, bounce again up and over, but straight to the hands of fielder Raghavendra Bhatt down at short cow point region. Experienced campaigner, not really making any mistake in the occasion, just a little bit going back, and takes a good catch, and Prithvi is back into pavilion. 13 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Pritesh, good comeback. After that, a little bit nervous start in the first 2-3 deliveries. Wide balls, no balls. Then 1-6 which is came from the bat of Kiran. Then next delivery. And after one delivery, he picked up a wicket of Prithvi, caught at cow point. Raghavendra Bhatt is a catcher there in the cow point. One of the biggest supporter of cricket, Raghavendra Bhatt. Absolutely one of the cricketer come supporter of cricketer. Again nicely bowled, and batsman, new batsman plays it short down to short mid-on region, not for run. So first over completed, little bit expensive over from Pritesh. 13 came from that over, even though you got a wicket for that 13 runs. But as far as good start is concerned for Kodigal challengers, they got to start what they really wanted in the first over. 13 for the loss of 1 wicket.
Nitin is the bowler. Mithun will be the bowler. Going to ball from Rohan Corporation and Ramit. Ramit is the bowler, and first ball it's going to be a wide as like his partner. He also starts with a wide 14 for the loss of 1 wicket. Ramit bowls again the second wide of this over, struggling a little bit, and the morning warm-up delivery from Ramit, 2 back-to-back wide deliveries, 15 for the loss of 1 wicket. Ramit. Right arm over the wicket, bowls to Kiran. Kiran drives that one up easily down to wideish long off region. The fielder in the deep, long off a little bit, fumble. They're coming back for the second. Chance of run out. Not good. The throw which is not good enough to make that run out. If it is a good throw, and might be the opportunity of run out in the non-striker's end, because batsman in other end Chetan little bit struggling to reach his home, and at last they managed to complete that couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 17 on the board for the loss of 1 wicket. Kiran get ready to face the next delivery from bowler. This time a good piece of fielding, absolutely good one there from a short mid-wicket fielder, and Kiran driven that one powerfully and didn't got enough room to play the shot. That's why that ball went towards the short mid-wicket region. This time driven powerfully down to deep extra cover boundary. The fielder did a good job. Very good footwork there from the fielder. But Kiran only settled for the single. And what could be a couple of runs here. Kiran is not a good runner. But you know exactly one. Chetan is also. He's got a little bit heavy body weight. So that both the batters are completed. Settled for the single. 18 for the loss of 1 wicket. Going for the dry outside of the bat. Chance of run out to direct it, and I think he's gone. After umpire showing his finger, then suddenly he's showing his 2 fingers, and he's draw that for the third umpire. That is drawing the television. Just means it's a television replay what umpire wanted to see. But I think Kiran is looks like he is in trouble. But we need to see the umpire decision. Arish Padil, third umpire here, and very interesting to see that. If you see it in a replay of Roland Pinto sir, how he is given that third umpire decision. First, his right finger is gone up. Second, its left finger is gone up. Then he slowly draw that television replay because he know exactly Roland Pinto sir that in the naked eye it's going to be out. He know exactly it's out, and batsman is out, run out. So in the present cricket, even umpires doesn't want to take any risk, and doesn't want to take any risk because television. Whenever there is a live telecast of the cricket tournament, the umpires have always, when there is a close one, they wanted to take the advantage of the technology, because sometimes the batsman very confident that he is in. But it need to see that level of confidence of the third umpire, whether the batsman is in or out. And out which is given by the third umpire, and Kiran is back into pavilion, just like I mentioned about. He's not a good runner between the wicket. Little bit lazy running between the wicket, costing a wicket in the form of run out. 18 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Ramit bowling from the far end, right arm over the wicket balls. They're straight to the hands of fielder. Loose stroke. Vikil is the new batsman, is out for the golden duck. Loose stroke, isn't it? He can hit the ball, but he wanted to get that one by wrist work. Just a roll of the wrist comes into play, and he couldn't manage to keep it down. And ball went straight to the hands of square leg, in front of square. It's not a mid wicket. Just a little bit left of square leg umpire. The batsman fielder is there at square leg, takes the catch. 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. New batsman in his experience, Sandeep. It came into middle here. A lot of time here for Sandeep to judge, because early entry for Sandeep is just getting some
commotion in the order, the batting order. Prameta bowls Sandeep nicely swept that one between the fielder down to deep backward square leg boundary behind the square, running down to deep square leg boundary and just inside the boundary line. Looks like the fielder able to stop the boundary and just a couple of runs here for Sandeep. Very good execution there from Sandeep. Played that one very fine. Down to short fine leg boundary for a couple of runs. The fielder is running towards the deep fine leg region and stopping the boundary just inside the boundary line. 20 for the loss of 3 wicket. And over number 2 which is completed. GFC Konchadi and against Kodikal Challengers. Sandeep is off the mark with a couple of runs. Is in non-strikers end because over completed. So new bowler is been introduced from the commentary box end. Leg spinner is in action. Lifted, lofted, but straight to the hands of the fielder at square leg. Second catch for that same fielder. Now he is stationed out in the deep square leg region. The jersey number 7 is a busy customer. Have a look at that one in replay. Not really having enough bat onto that. No power, no timing, nothing in that stroke. That's all happening when you try to hit the ball, the leg spinner. Needed some extra power to get the distance and a ball. Umpire batsman, new batsman need to be in strike. New batsman Sandeep very much aware of that. The new rules and regulation. So Dhanraj is going towards a striker and Sandeep may be saying that, oh, this is a leg spin. I want to deal with the leg spin again. 5 deliveries to spare in this over. So Ashish got wicket in the first ball, second time in this over. Dhanraj going for the reverse sweep and both are very good runner between the wicket, Dhanraj as well as Sandeep. Sandeep is a very senior most cricketer and still is very well fit enough to perform in the high levels. 21 for the loss of 4 wicket. Sandeep drives that one like a placement, chance of run out in the striker's end and Sandeep in that occasion maybe looks like he managed to drag his bat, but umpire Mohan Iyadi referring for the third umpire, and now third umpire will going to get the decision here. So third umpire have to see that whether the batsman is safe or not. Just to have a look at it when I replay. Sandeep wanted to drive that one right off the bowler, and the bowler quickly moving to his right. Dhanraj
So out is a call from third umpire. Sandeep is finding himself short of his crease. Unfortunately, Sandeep is looking for the run where there is no run at all. And because the bowler run is follow through, fields the ball, returns the ball quickly. The wicketkeeper behind the stump quickly completes the job. And that time Sandeep is just a little bit out of the crease and is back into pavilion. So 21 for the loss of 5 wickets. 21 for the loss of 5 wickets in the over number 3 is in progress. This is the right time for Konchadi to back into this game. GFC Konchadi, after they got a wicket, the 5 wickets which is back into pavilion after got a very good start. And the wickets are really tumbling here, just like a pack of cards. And Konchadi rightly back into this game. Over number 3 is in progress. Nothing much worried about the run rate for Kodikal, but they are only worried about the wickets in hand. The new batsman Sumit picked up a single by sweeping the ball down to short fine leg region. He's off the mark with the single score, but moves on to 22 for the loss of 5 wicket. Right, a over wicket leg spinner. Dhanraj went for the sweep shot, hitting his leg, going for the single in the form of leg bye. With that leg bye, scored numbers on to 23 for the loss of 5 wicket. The over number 3 in progress. Very good comeback here by the bowlers of Kodikal Challengers. The fielders also did a great job. They are contributed this time up and over, just over the top of that short extra cover fielder. They're coming back for the second chance of run out unnecessarily. Unnecessarily, Dhanraj is wanted a second run. This is not a good thinking from the batter point of view. The judgment is so bad for the second run. So 24 for the loss of 6 wicket, 3 overs which is completed and 8 runs per over, the run rate progressing. But problem for the team Kodikal litigation for Kodikal Challenger is that they lost 6 wickets for that 24. But still, sensible batting will take them into good score, and wait and see how well these two batters will go and get this good score in the remaining 3 overs. It's time to change in commentary box as well. It's so over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स. रन की गति काफी बेहतर, लेकिन सवाल है इस वक्त विकेटों का. द क्वेश्चन स्टैंड्स अबाउट विकेट्स. दे लॉस्ट द 6 टॉप एंडर्स विकेट्स और यहाँ पर सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. शॉर्ट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और अपनी अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा. तो अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए इस वक्त कोडिकल चैलेंजर्स, माफ कीजिए, जीएफसी कोंचाडी के गेंदबाज. और फिर से एक बार ये गेंद, इस बार हल्के से एक बार फिर से वाइड का इशारा. मिसिंग 2 फॉर साथ ऑफ स्टंप इन फैक्ट, एंड वन मोर वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शशि, इस बार रनआउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन. और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ा स्ट्राइकर की और कोई रिस्पांस नहीं स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा. देखिए, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था. गेंद को इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त नॉन स्ट्राइकर स्टंप्स पर टकराते हुए और इसी के साथ ये 7वां विकेट गिर चुका है. इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस.
तो इस वक्त संकट की स्थिति में नजर आते हुए कोडिकल चैलेंजर्स अपने 7 विकेटों को खो चुका है, सिर्फ 27 रनों के ऊपर। चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत इस श्रृंखला का दूसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, सर्वाग्नि उर्वा विल टेक्स ओवर दुर्गा कुंचाड़ी इन द नेक्स्ट मैच, एंड because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. इस बार गेंद कौन साइड पर उछाला, सीधे लंगोल पर। 1 more wicket fallen। विकेट के ऊपर विकेट गिरते हुए यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए और अपना विकेट यहाँ पर गंवाते हुए 8वां विकेट गिर चुका है 27 रनों के योग पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा कोडिकल चैलेंजर्स की पारी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई। तो अब उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि वो अपने बचे हुए ओवर्स को पूर्ण करें अपने बचे हुए 2 विकेटों की मदद से। कुल मिलाकर 15 गेंदें बाकी है, सिर्फ 2 विकेटें सुरक्षित, और 15 गेंदों में इन बचे हुए 2 विकेटों की मदद से जितना भी रन बनाते हैं वो उनके लिए इस वक्त बोनस कहलाएगा। तो सबसे पहले उन्हें बचे हुए ओवर्स को पूर्ण करना है बचे हुए 2 विकेटों की मदद से। दाहिने हाथ अराउंड द विकेट, ये गेंद हल्की से गेंद को पुश करना चाहा, बेहतर गेंदबाजी इस वक्त गेंद की फ्लाइट को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन से बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद लेग स्टंप पर हल्के से गेंद को मोड़ दिया शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। तो शशि इस वक्त गेंदबाजी करते हुए खासकर 38 फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक वो जाने जाते हैं। इस बीच लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड इस वक्त घोषित 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर। काफी अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन इस अब तक प्रदान कर चुके, कम से कम 8 से 10 रन वाइड के रूप में अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद को स्वीप कर दिया झाड़ पोंछ कर डीप मिड विकेट पर। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 32 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 4 overs completed, 32 runs on the board, 8 wickets down, and just 2 wickets they got in their hand. And still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining, 31 now for the loss of 8 wickets. तो सुबह का वक्त बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। सुबह के 10:50 यहाँ पर बच चुके हैं और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस मैदान पर करते हुए। कुल मिलाकर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय ने। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर वो धनराशि जमा करने के लिए यहाँ पर इस श्रृंखला को आयोजन किया गया है। ये गेंद इस वक्त बेहतर गेंद थी, गेंद को स्टंप्स करने के बाद ऑन साइड पर बोलना चाहा चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद ये गेंद स्वीप करना चाहा टॉप एज लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए विकेट कीपर। 2 डॉट गेंदे इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। आशीष स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला। इस वक्त 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद आशीष की ड्राइव किया, बेहतर एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए तो पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर माफ कीजिए गेंदबाज विकेट झटका है। बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद शॉट फाइन लेग पर विकेट कीपर द्वारा फील्ड होती हुई रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज आशीष और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद स्टीयर किया इस वक्त, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड एट द लास्ट मोमेंट, स्टीयरिंग इट अवे डाउन टू थर्ड मैन इनसाइड द 50-yard सर्कल। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 34 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 34 on the board, 8 wicket lost, and a good over in GFC Konchadi's point of view came to an end. Just 3 runs came from it, and now last over remaining in Kodikal Challengers innings. और देखते हैं इन बचे हुए अंतिम ओवर में
बल्लेबाज क्रिटिकल चैलेंजेस के और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं बचे हुए 2 विकेटों की मदद से। रमित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज इस वक्त तैयार। लेग स्टंप से बाहर, इस बार फ्लिक किया खूबसूरती के साथ कदमों के सहारे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वी तब 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, अंतिम एक्शन में गेंद को फ्लिक कर दिया था ऑफ द टोस। 2 रन बल्लेबाज यहां पर बटोरते हुए। 36 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। जस्ट 5 बॉल्स नाउ लेफ्ट इन द रिंग्स। 3-5 गेंदें बाकी और रमित की गेंद, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन का इजाफा। 37 for the loss of 8 wickets. This is the 6th and the last over in progress in their innings. 4 गेंदें बाकी। रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट। गेंद पहुंची मिड विकेट पर, फिर से 1 रन मिला। 38 रन 8 विकेट के नुकसान पर और 3 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में शेष। ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, स्ट्राइकर एंड पर खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहता, गेंद गई थी सीधे गेंदबाज की दिशा में और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद को थ्रो किया और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दी। इससे पहले कि स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अपना बल्ला लैंड कर सके। देखिए किस तरीके से होता है, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और नंबर विकेट गिर चुका। 38 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 2 balls left in their innings. Last wicket in their hand and number 11 and the last batsman is now comes out to the middle. तो अंतिम बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेग स्टंप पर आती हुई सही गेंद घोषित, रन नहीं मिलेंगे। स्कोर रुक चुका है 38 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, स्वीप किया इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, वाइड थ्रो, निशाना चूका। नंबर 3 रन तीसरा मिल सकता है और मिल चुका है। तो 3 रन यहां पर मिल चुके हैं अंतिम गेंद पर और इन 3 रनों के साथ दे स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड। दे फिनिश विद 41 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स फॉर KFC challengers, in fact Kodigal challengers in the stipulated 5 overs, and now they set a victory target of 42 for GFC Konchadi. So 42 runs GFC Konchadi have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, exactly 8.40 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 42 they have to score in the stipulated 5 overs with the help of 10 wickets, with the required run rate of exactly 8.40 runs per over. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी GFC कुंचाड़ी की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब GFC कुंचाड़ी की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Thank you very much, Gopi. And 42 going to be a target for team GFC Konchadi against Kodikal Challengers for the next match. Once again, I request all the players of Sarvagni Urwa as well as Durga Konchadi kindly request you to sign the official chart as soon as possible. ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ GFC Konchadi already they made their way to the middle of the pitch. It looks like it's going to be left and right combination for team GFC Konchadi, and on behalf of team Kodikal Challengers, and wait and see which bowler will go into start. Looks like Vishnu is the bowler, and a straight away signal came from umpire. Rakesh is the striker, left-hand batter. Rohit is the bowler. Right arm round the wicket bounce. This time lofted, high up in there. Will the fielder there in the position? Yes, he is in the right position. And he takes a comfortable catch. First ball itself is a wicket here for Rohit. And the batsman Rakesh looking for a huge stroke in that occasion. But he played it on very high. He played it on very high, so that ball which is landed straight to the hands of deep wideish long on region, and the first wicket is gone in the first ball of the over. That means Ashok Nagar, a little bit correction, Kodikal Challengers there got a good start in the first ball itself, first over itself. They got a start here, and Kodikal Challengers scored a very fighting total of 41 runs. 41 runs. It's a fighting, it's good total actually. 36 ball, 41 runs is always going to be a very good total. 42 to win the match. The Rohit has got a very good start from the first ball. He's got a wicket of Rakesh, and a new batsman replacing him, Ashish replacing Rakesh. Rohit will go into ball. Second delivery of this over. Right arm over the wicket, pass umpire Roland Pinto. Oh, that ball is balled him, cleaned him up. Rohit doesn't know anything about that ball. But I'm surprised because even in our commentary box we can see that ball hitting the stumps. But seeing that Rohit is putting his two hands to his head, I thought ball is missed the stumps. But the ball hits the stumps. Rohit doesn't know anything about that ball. But even the batsman Ashish doesn't know anything about that ball. Ball hitting the stump, wicket number 2, which is back into pavilion. It's a 0 for 2. Got unusual scoreboard for team GFC Konchadi. 2 ball, 2 wickets. That means he's on hat-trick. Needed some partnership here for Konchadi, GFC Konchadi, after they lost 2 valuable wickets in the first 2 delivery of the over of Rohit. That means Rohit is on hat-trick. Can he able to get the first hat-trick of this tournament? Of course, the opportunity is there. The new batsman is a little bit under pressure. It's not so easy. Damodar is the batter, and hat-trick delivery from Rohit. Right arm over the wicket to Damodar. Oh, lovely delivery, almost in the midline leg stump. And the batsman plays it back to bowler, and no chance at all for any run. On his follow through, Rohit fields the ball back to his bowling mark. 4th time in this over. Right arm over the wicket. Damodar! This time that ball very close to the stumps. This time also Rohit putting his 2 hands to his head. I thought he got 1 more wicket, but this time ball just misses the stumps. 0 for 2. Outstanding bowling performance from Rohit. Drives nicely down to deep long off region. Protection is there in the deep long off, so that he has to settle for the single. Damodar has got his first run and for his team. And one for the loss of 2 wickets in the over number first is in progress. 42 is going to be a target.
and already one run, but for that they lost two valuable wickets. Rohit, final time in this over, away from us, went for the reverse sweep, nicely executed, fielder behind the ball, but ball winning the race against the fieldsman. Little bit misjudgment by the fielder. Of course he runs well, chased well, but really fails to finish well, because he's just wrong line, he putting his hands, and it can prevent the boundary. Have a look at that one, a replay. Absolutely perfect execution by playing the switch it. And have a look at the fielder. Almost he got there and couldn't manage to put his hand, couldn't manage to pull the ball. And ball is in a different line. Ball which is a different line. Winning the race against the fieldsman. And a welcome boundary coming up here for GFC Konchadi in the last delivery of Rohit's over. But still it's a pretty good over from Rohit. The 2 overs, 1 over 5 runs and 2 valuable wickets they managed to get. And equation now, 30 balls remaining. They have to get another 37 runs to win this match. 30 ball, 37 required for the victory for GFC Konchadi against Kodikal Challengers. Rajesh looks like is the bowler, is introduced from the Rohan Corporation end. One of the very reputed organization as far as real estate is concerned. One of the sponsor for this cricket tournament, prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, Manglore, with the aim of helping for the students who are financially backward. So I think it's a good aim and good concept from Real Estate Group Bejai. With the game of cricket, they wanted to raise the funds for the needies, and absolutely is going to be a perfect example for organizers, getting some inspiration from real estate groups. Again, going for the drive, not quite getting that one from the middle of the bat, but no problem whatsoever as far as the single is concerned for Damodar. With that single score numbers on to 6 for the loss of 2 wickets. Bright sunny morning today, typical, it's a month of February, almost at the beginning of March, the 1st March. And from 1st March onwards, the temperatures will going to change here in Mangalore. And March, April, May, it's going to be a very horrible, hot condition. Nicely played. Oh, this time very good piece of fielding there by the fielder. Once it's a chance of catch, but the ball which is landed just in front of Ethan there in the short fine leg region, and he's taken that one in the off volley, returns the ball, but not quite enough to get the result. And Damodar completes in the nonsense from the striker's end, and batsman Ashish Zafar picked up his run. And scoreboard now 7 for the loss of 2 wicket. Right arm slower one, change of pace, but batsman waiting for that one. Down to deep long off boundary, and good fielding there by Sumit, I think so, there in the deep long off. Not Sumit, Sumit is in deep long on, and Vikil is a fielder there in the deep wideish long off. Fields the ball very well, just inside the boundary line. He managed to field the ball, but ample time for the batter to complete that couple of runs. Single hit correction. Single, Damodar picked up a single. 8 for the loss of 2 wicket. Rajesh round the wicket to Zafar. Oh, just spectra wide. And I think Dano couldn't manage to chase the ball, because ball really came in at such a pace that even Danu couldn't manage to chase the ball. The big wide, spectra wide, 1 plus 4, 5 gifted runs. Just like opposition, which is considered so many runs in the form of extras. Now, the same thing is happening here in the Kodikal team. Kodikal Challengers conceding some extras here. 13 for the loss of 2 wickets. That will give a lot of confidence for the team Challengers to back into this game. Konchadi, GFC Konchadi to back into this game. This time appeal for leg before wicket. Umpire not interested, and looks like the batsman going for the reverse sweep, and might be bats going towards outside the line of off stump, because bowler is bowling almost round the wicket, angling across. 13 for the loss of 2 wicket. No number 2nd in progress. Rajesh again
Bowling from the far end. Around the wicket passes umpire Mohan Iyadi. Again the big wide. Problem continues. They're going for the run. Damodar. Really unlucky batsman. Zafar is not interested, but Damodar wanted to capitalize that wide ball. Of course, if Damodar Zafar will going to run that one, it can be the safe, but already made his mind that he doesn't want any run. Already got an extra delivery, extra run. Why to take a risk? Maybe that Zafar's intention that he don't want that run, but Damodar unfortunately is back into pavilion in the form of run out. Once it looks like the partnership slowly is building up, then run out taken place. It's a 14 for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress. Pritesh is a new batter in his non-strikers and Zafar will going to take the strike. Rajesh inside out, lovely shot. Have a look at that placement. Magnificently played down to deep cow point boundary for 4 runs. It's a glorious shot there from Zafar. And you know exactly the playing the last over of the power play, and you know exactly where the fielder is. There is a deep long off and deep long on, and the way that is make that placement is so good. Inside out and lofted that one quite beautifully right in the gap down to deep cow point for 4 runs. And with that boundary score jumps into 18 for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress. Expensive over from Rajesh. Right arm round the wicket to Zafar. Zafar rise straight lines of it this time. This time Jafar making a mistake. But batsman looks like need to see which batsman is going to be out. They need to see which batsman going to be out. The batsman one who is close to the non-strikers stumps will going to be out. Might be a little bit of the strikers and might be the out. And wait to see. Need to see the time of the bails, which is looks like Pritesh is looks like they're going to be the batsman very close to the stumps. Zafar is a man who hits the ball down to fine leg and went for the run, but Pritesh little bit late to react to that one. That time the wicketkeeper behind the stump did the job, and that's why the Zafar is the one is very close to the strikers and stumps, so that umpire rightly so having some conversation, clarifying. And wicket number 4, which is back into pavilion. It's going to be a huge wicket for team Codical Challengers. The wicket of Zafar one looks like so confident after hitting a boundary, and unfortunate is back into pavilion. 2 gone. 18 for the loss of 4 wicket. Nothing much wrong with that run rate, but something wrong with that fall of wicket. Same thing is happening for even for Codical Challengers. The wickets are tumbling, runs are coming. Same thing has happened for team Codical Challengers when they bats passed. Runs came, wickets falling. Here is also wickets falling here. Wickets are falling in frequent intervals. At the same time, runs are coming. 18, which is the total score, and for that they lost 4 valuable wickets. Raghu is a new batsman in. He is in non-strikers and oh, beautiful leg cutter. Sumit is a master of doing that leg cutter. Now umpire referring for the third umpire for stump out, and it's going to be very interesting whether the batsman is safe or not. And the slight delivery from Sumit, a slight leg cutter just going outside the line of off stump. Batsman try to reach the pitch of the delivery. By doing that, I think it's all happening when you are playing the leg cutter, which is moving delivery outside the line of off stump. Batsman try to reach the pitch of the delivery. By doing that, might be wait and see whether the batsman's back foot I think is in trouble and is gone. His back foot is just lifting off. And the third umpire Arish Padil here signal it's out, and
It's 18 for the loss of 4 wicket. Fantastic work from Kiran behind the stumps. And just waiting for the batter to lift his leg. And then he completes the job. And wicket number 5, which is back into pavilion, is 18 for the loss of 5 wicket. Sumit got a breakthrough, very important breakthrough. And deep in trouble now, that team Konchadi, JFC Konchadi need to get some partnership. The badly required one partnership. Hitesh. One more good delivery. Hitesh is a striker. Sumit, the bowler, outside on the leg stump, tried to bring the ball around the legs of the batter, but by doing that, ball is not that getting that much of turn enough to avoid the wide from umpire. 19 for the loss of 5 wicket. Sumit. Again the leg cutter, but batsman wanted to play against the line. Chance of run out in the non-strikers, and that is gone. One more wicket is back into pavilion. Absolutely poor piece of running between the wicket. Just a jogging, isn't it? Hitesh is not really getting any speed behind that run. Almost is jogging in towards the non-strikers and pays the penalty for that. Wicket number 6 is back into pavilion. It's 19 for the loss of 6 wicket. And GFC Konchadi looks like they're in a deep trouble now. 6 wickets gone for just 19 runs. Still long way to go. 23 more runs required for the victory. 23 more runs required for the victory in a remaining 3.4 deliveries. And I think 22 balls remaining in the innings. They lost 6 wickets. That's a big problem for GFC Konchadi. Beautiful leg cutter. Beautiful leg cutter. Sumit using his height. Whenever having extra height, the extra benefit for the bowler to get some extra bounce and extra turn with the arm. And beautifully bowled. Batsman Raghu looking for the reverse stroke. But he just wanted to play that one on the onside region, just like the left-hand batsman pushing the ball. Sumit again, right arm over the wicket balls. Quicker one, faster one, not that much of turn in that ball. Good over completed by Sumit. Is a quiet over. 3 gone after completion of over number 3. Chasing 42 to win this match. Is 19 for the loss of 6 wicket. 3 overs remaining, 18 balls remaining, and another 23 more runs required for the victory. And nothing much worried about the run rate required. Might be a little bit more than the ball, but problem for the team GFC Konchadi is that they lost 6 wickets, and when I say remaining 4 wickets, how well they're going to get this 23 valuable runs to win this match. Change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो पहले गेंद पर 2 रन बाई के रूप में बना, वाइड 1 रन, और इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस वक्त गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त पॉइंट की दिशा में, और अंतिम कार 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर 21 रन और बनाने हैं विजय के लिए, जबकि 17 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया पॉइंट की दिशा में, और गेंद जब तक फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और फिर से एक बार चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिटिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद जब तक फील्ड और लिमिट ऑन पर रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो
रिक्वायर्ड रन रेट 6 से कुछ ऊपर जरूर रहा, लेकिन सवाल इस वक्त उठता है विकेटों का। 4-6 अपने बहुमूल्य विकेटों को इस वक्त खो चुका है। ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। धनराज है वहां पर फील्डर, जब तक धनु गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर हेड पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन न प्राप्त करने का। नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोकर। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। अगर विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान देते हैं तो निस्संदेह लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं इस वक्त बल्लेबाज। और इस बीच गेंदबाजी चेतन आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 25 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला। नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही स्कोर्ड अ single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 26 for the loss of 6 wicket, and 4 overs has been completed. 16 to get from remaining last 2 overs, और ठीक 8 रन प्रति ओवर के औसत से 16 रन बनाने हैं बचे हुए 2 ओवर में। 12 balls and 16 runs they have to score for victory. Number 3 match is now coming up right after this match between Sarvagni Urwa versus Durga Kunjari. Because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. And सो फिफ्थ ओवर स्टार्ट्स। 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। 12 गेंदों पर 16 रन इस वक्त बनाने हैं जीएफसी कुंचाड़ी को, और ओवर की पहली गेंद लेकर सुमित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद परफेक्ट लेग कटर गेंद थी इस वक्त। गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर। फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, ये बार टॉप एज फॉलो थ्रू में आसान सा कैच इस वक्त तक गेंदबाज लपकते हुए इस लेग कटर गेंद को ऑफसाइड पर मोड़ना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में टॉप पे टकराए। बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद गई, और फॉलो थ्रू में गेंद को लपक लिया गया फील्डर द्वारा, गेंदबाज द्वारा कहना पड़ेगा। और 7वां विकेट गिर चुका 26 रनों को योग पर। 16 रन और चाहिए 10 गेंदें बाकी। खुशहाल राज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार सुमित दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, एक और लेग कटर गेंद, डॉट गेंद थी इस वक्त, और अब 16 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 8। और फिर से एक बार सुमित दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, जस्ट वांटेड टू turns it away on the onside at the last moment, not connected that one, and the ball after being beating his bat, it struck to his middle leg stump. 26 for 8 now. They are looking deep in trouble. So in the next match, Durga Cricketers Kunchari, after won the toss, they elected to bat first against Sarvagni Urwa, and that match, number 3 of this tournament, is now coming up live and exclusively right in front of you right after this match. So back to this match. Struggling time continuing here for the batsmen of GFC Kunchari,
और गेंदबाज इस वक्त तैयार, एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ कटर गेंद थी, ऑन साइड पर उछालना चाहा चुके, मेडन विकेट इस वक्त सुमित का समाप्त हो चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक की बॉलिंग परफॉर्मेंस, और इस मेडन विकेट ओवर जो सुमित ने फेंकी इसकी बदौलत इस वक्त जीएफसी कुंचाडी काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। 16 रन चाहिए अंतिम ओवर में, 16 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री नाउ इन द लास्ट ओवर। 2 ओवर में एक मेडन, सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 3 विकेटें सुमित ने प्राप्त की है। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर सुमित ने दिया। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फिगर्स, 2 overs 1 maiden 1 run and he captured 3 wickets. This is a really magnificent spell came to an end from सुमित। और गेंदबाज रोहित पहली गेंद ड्राइव किया, स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर चॉन्चो लॉन्ग ऑफ, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर। 15 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, 15 रन टू गेट इन रिमाइनिंग 5 बॉल्स। और रोहित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 27 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को उछाला वाइड इस लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 14 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 3। अंतिम अवकाश इस वक्त जीएफसी कुंचाडी के बल्लेबाजों के सामने। इस बार कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट मिड विकेट पर मिसफील्ड, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 2 गेंदें बाकी है, 13 रन चाहिए। 2 छक्के अगर लगाते हैं अंतिम 2 गेंदों में तो मैच टाई होगा। यह गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर, सिर्फ 1 रन, 12 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल। तो 12 रन अंतिम गेंद पर बनाने हैं, और सिर्फ मिले 1 रन, 31 द स्कोर, एंड दे लॉस्ट द मैच बाय 10 रन्स। So 10 runs victory for Kodigal Challengers against GFC Konchadi, and with that 10 runs victory they are through to the next round of this competition. So man of the match, undoubtedly the man who bowled brilliantly in this match, conceded just a single run in his 2 overs quota and capturing 3 wickets. 2 overs 1 maiden 1 run he conceded and captured 3 wickets. Sumit of Kodigal Challengers backed the man of the match because of his backed the man of the match award because of his outstanding bowling performance. I request Mr. Sumit to please go to the stage and receive the man of the match award in the face of t-shirt, which is donated by Grihini Masala, a fantastic t-shirt in the face of man of the match. I request Mr. Sumit please receive the t-shirt in the face of man of the match, which is donated by Grihini Masala, and also request the losing team captain GFC Konchadi to please go on to the stage and receive the momentum for participating in this tournament from organizers. So the next match, Sarvagni Ulov will take over Durga Konchadi, and that match starts within just a short while, and we'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to start within just a short while. Thank you. Dhanyavad.
Thank you very much, Gopi, and welcome back for the match number 3 of this prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Manglore, and Sarvagni Urwa versus Durga Konchadi. So very interesting to see that. So Ajay will going to start the proceedings for Durga Konchadi, and in front of him the right-hand batter Shailesh. And first ball itself, Ajay trying for the quicker one, faster one, and wide outside the line of off stump. Might be Arish Padilla. The Ajay just came in front of umpires, so just clarifying. The first run comes up in the form of wide. Right arm over the wicket balls, quicker one, the faster one. Wicket keeper behind the stump. Just off stopped by the fielder, wicket keeper in fact behind the stump, and there is no chance at all for any run. Coming back to Ajay, Ajay is one of the best performer who represented for Hanuman cricketers and Sri Adimahesh cricketers. C1, the one season is represented for Sarvagni Urwa. Again driven that one and off stop by the fielder, and Santosh there in the short mid-on region. Then slightly moving towards his left to stop that stroke from the batsman Shailesh, and there is no chance at all for any run. Again Ajay bowling from the far and plumb in front of wicket. Shailesh gone. This is a quicker one and a faster one of the best weapon what Ajay always implementing in his bowling. Whenever the ball that a quicker one, faster one with a straight line, it's always going to be a difficult line for any batsman. Shailesh is a very good batsman, no doubt at all. Yesterday he's got a lot of runs from his bat in that trophy, in that BK Champions Trophy. But in this particular match against Ajay's quicker delivery, the faster delivery, he wanted to play against the line, tried to sweep that one, missing the line completely, and Ajay not missing the opportunity to hit the leg of Shailesh. Is finding himself right in front of middle stump. And Sarvagni Urwa have lost their first wicket, one for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So new batsman in for Sarvagni cricketers is Sachin. So it's very good to see that some players are sometimes playing for the same team, and now they're playing against each other. Durga Konchadi against Sarvagni Urwa. The last season, Sarvagni was lifted some prestigious titles in EC cricket ground, and that time the Ajay contributed very well for the success. Ajay, Vijay, some players now playing in the Konchadi, Durga Konchadi, and here is Ajay right arm over the wicket balls, nicely driven. Santosh just picks the ball, returns the ball, but wide throw. The opportunity which is created in that striker's end, in the striker's end for run out, but Santosh picks the ball but fails to return the ball, and not good enough to Pratish behind the stump. Praneeth is a wicket keeper behind the stump, and little bit wide throw coming from Santosh. So that batsman completed a single. With that single scored moves on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Ajay. Looks like the batsman wanted to change his bat, Sachin.
So new batsman, little correction, the left-hand batsman Shravan is on strike. Oh, lovely delivery again. Ajay, quicker one, the faster one, and Shravan in the delegation off the front footed. Tried to push the ball on the offside region, but not getting that ball from the bat, and there is no chance at all for any run. 2 for the loss of 1 wicket. Ajay bowls this time, beautifully bowled, and is gone. Ball hits the stumps, beaten by the pace. Once again, Ajay strikes. 2 wickets in that over for Ajay, and Sarvagni cricketers have lost 2 wickets, and they got a shackling start against Konchadi, Durga Konchadi. And have a look at that one and replay. The quicker one, isn't it? Little time for react for the delivery. The Shravan against the line. He wanted to drive the ball and missing it completely, and ball hitting the stump. Ajay is in a good form, and previous tournament which is held at Shakti Nagar, when he has represented for Adimeshwari cricketers, there also is bowled very well. And but unfortunately his team is lost match in a close encounter, and but he's really provided 2 very good overs for Adimeshwari cricketers. Now he's representing for Durga Konchadi. Got a very good start from the ball. 2 wickets for just 2 runs. And Bhagwan, I think so, is the bowler. He's been introduced by the captain of Durga Konchadi from the commentary box end. Pradeep is a new batter in, one more experienced campaigner for the side of Sarvagni Urwa with the jersey number 64. And wait and see how Pradeep and Sachin is really the good batter, no doubt at all. It's represented for Team Elegant in the 30-over format of the game. He really performed very well for Team Elegant. Now Sachin is representing for Sarvagni Urwa, and wait and see how Sachin will going to get some partnership along with Pradeep. Fastest one there from Bhagwan, full toss delivery, but well within the reach, almost in a good height. Sachin going for the slash, but missed it completely, beaten by the pace. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler Bhagwan. Again, Yorker line delivery, almost looks like it's going to be a off volley, but it's not a off volley, it's a Yorker line delivery which is outside the line of off stump. Low full toss, that just ball passing under the bat of Sachin. 2 dead dotted deliveries to start with, and 2 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Now I think a little bit of fielding change. Santosh, who stands at short extra cover, coming towards a short cover point region, and Bhagwan, this time ball is in the air, but not carried to the fielder at square leg. Once Sachin is placed at pedal sweep shot, not controlled in the delegation. Ball is in there for a while, and quite dangerously played by Sachin, but he managed to get the single. Sachin, of course, needed him for Sarvagni cricketers if they wanted to get good score here. So that this wicket is always going to be a key here. And for Sarvagni cricketers, they need to play responsible innings along with Pradeep. 3 for the loss of 2 wicket. Bhagwan, right arm over wicket, drives that one straight to the hands of fielder. Looks like Mansoor. Asif, little correction, is down at short extra cover. The experienced campaigner Asif, and he's just moving to his left and fields the ball, but fails to prevent the single, and Pradeep got his first run. 4 for the loss of 2 wicket. Oh, fantastic leg cutter, but Praneeth behind the stump fails to collect the ball. Frustration for Bhagwan, frustration for the captain of Konchadi. By call by umpire, magnificently bowled there by Bhagwan. Absolutely slow leg cutter in the delegation. Sachin completely beaten by the stern, beaten by the slowness of the delivery. 5 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Bhagwan. One more very quality bowler as far as the present cricket is concerned when you are representing for the local pools. Beautifully bowled. Kicker one again. The wicketkeeper not really up to the mark. Again the frustration for the bowler. What could be their 2 dotted deliveries because of wicketkeeper missed it from the hand, and a couple of runs in the form of bye in the over number 2, which is completed. And searching for the right track, team Sarvagni Urwa. 6 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 3 runs per over.
6 for the loss of 2 wicket. 3 runs per over. The run rate progressing for Sarvagni Urwa, and Ajay will going to continue after he got a good start from the ball. 2 wickets in the first over in 2 balls. 2 wickets in the first over by conceding 2 runs. Now he's bowling with some protection in the deep. Deep long off is there, long on is there, cover point is there, mid wicket is there, and a square leg in front, in behind the square. Ajay from the Rohan Corporation, and nicely, delicately played there by the batsman Pradeep by using the pace of the bowler, and just to play that horizontal bat nicely to get the single down to short third man vision. Brother of Ajay, Bejai fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. 7 for the loss of 2 wicket in the over number third is in progress. Ajay again back to his bowling mark with a short run up. Pass umpire Arish Padil. Right arm over wicket. Bowled him, cleaned him up. This is a huge wicket for Durga Konchadi. Just like you mentioned, Sachin is a key player for Sarvagni Urwa. If they wanted to get a good score, he need to bat till the end. And but this time he wanted to play that pedal shift shot. Have a look at that one. Nowhere is bat in that line, isn't it? When you wanted to play the sweep shot, your front foot need to be bent almost into the ground level. Even the bat, which is might be a little bit in the air, and that's the problem that Sachin didn't got that ball to his bat. Once he misses the bat from the ball will go into do the trick, because Ajay is bowled a quicker one, the faster one, and beaten by the pace. 3 wickets for Ajay, and is dismantling the batting department of Sarvagni Urwa. It's a 7 for the loss of 3 wicket. So being the player of Sarvagni Urwa in the last season, 2 season, he really performed very well. But so that he know exactly the kind of batsman he is bowling against. So that know exactly the weakness of the batters of Sarvagni. So that he picked up all 3 wickets. And the new batsman in is Chetan. Just like I mentioned, Chetan and now Pradeep really got a lot of responsibility for Sarvagni Urwa to anchor the innings, to consolidate the innings, and need to play sensibly if they wanted to get a good score against Durga Konchadi. Ajay again from the Rohan Corporation end, right arm over wicket, drives that one nicely down to deep long off region for a single, and good piece of fielding there by the fielder in the deep long off, so the batsmen have to settle for the single. With that single score numbers on to 8 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. So slow progress here for Sarvagni Urwa, the 3 runs, but still they got enough time to back in this game. This time again quicker one, the faster one. Again the Pranit is not up to the mark. So many runs which is conceded in behind the wicket. One more. It's not so easy, and compared to the other bowlers, keeping the wickets against the bowling of Ajay is not easy enough, because of sometime he bowls a quicker one and faster one, and very good quick handwork which is required behind the stump. 9 for lovely shot, beautiful hit one, straight down the ground. Good piece of fielding there by the fielder, and that was outstanding fielding. Absolutely fantastic, isn't it? The deep long on fielder, once it looks like when batsman hits the ball right in the gap, straight down the ground out deep long on, looks like it's going to be one bounce over the roof, but have a look at the fielder's effort. Absolutely fantastic there from the fielder. It's a 10 for the loss of 3 wicket. Again the dotted delivery from Ajay. 1 more over completed, 3 gones. After completion of over number 3, it's a 10 for the loss of 3 wicket. Have a look at the bowling figure of Ajay. 2 overs, no maiden, 5 runs, and picked up 3 valuable wickets. 2.5 economy rate, including 1 power play over. This is really a match winning performance bowling figure for Ajay there. So 10 for the loss of 3 wicket. Sarvagni cricketers still searching for the right track. Might be a little bit struggling as far as the run rate is concerned, as far as the partnership is concerned. 3 overs remaining, and wait and see how Sarvagni will going to bounce back in remaining 3 overs. Before the next over going to start, it's a time to change in commentary box. Then there is a change in bowling as well. And now I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
उर्वा सतीश। तो 3 ओवर के बाद द फर्स्ट 3 overs completely belongs to the bowlers of Durga Konchadi. They conceded just 10 runs on the first 3 overs and captured 3 wickets of Sarvagni Urwa, and the bowlers of Durga Konchadi are now dominating. Still the batsmen of still they have a chance for the batsmen of सर्वाग्नि उर्वा टू बाउंस बैक इन द लास्ट 3 overs, और बाउंस बैक करने का मौका जरूर इस वक्त है सर्वाग्नि उर्वा को बचे हुए 3 ओवर में, और देखते हैं इस वक्त किस तरह वो बचे हुए 3 ओवर में बाउंस बैक करते हैं। तो चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, भगवान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें ऊपर द विकेट लेकर गेंद स्विंग किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो जैसा कि मैंने इस गेंद से पहले कहा था, बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाजों को, और चौथे ओवर की पहली गेंद किस वक्त स्कूप कर दिया था, इस वक्त स्वीप कर दिया था, स्लॉग स्वीप गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बल्लेबाज चेतन ने। और निस्संदेह अगर बाउंस बैक करना है तो ऐसे स्ट्रोक्स और लगाने होंगे, यहाँ पर एक बेहतर स्कोर खड़ा करना होगा सर्वाग्नि उर्वा को बचे हुए 2.5 ओवर में। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ कटर, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 15 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज प्रदीप और चेतन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भगवान दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेग पर आते हुए इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका अंतिम क्षण में, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। विकेट कीपर ने निशाना दागा था इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन अंतिम क्षण में निशाना स्टंप से कुछ दूरी पर निकलता हुआ, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अगली गेंद लेकर इस वक्त भगवान तैयार, दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद बॉल आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी, एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, just gone for a mighty, not succeeded, and the ball stuck to his middle of stump, bills are disturbed, और चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बोल्ड आउट हुआ था, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ कटर गेंद, ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले और पैर के बीच में अंतर, और उस अंतर को चीरती हुई गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराई, गिलिया बिल्स इस वक्त डिस्टर्ब होते हुए 16 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है। सर्वाग्नि उर्वा काफी संकट की स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, फ्रेंड्स कुत्तार will takes over Deadly Kankaradi in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. तो भगवान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैच नंबर 3 यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, और दोपहर का वक्त लगभग 12 यहाँ पर बचते हुए, अगर ठीक तरह से कहा जाए तो 11:52 यहाँ पर बच चुके हैं, और धूप अपना कहर ढा चुका है मैदान पर। यह गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर नंबर 4 की समाप्ति, 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में किस तरह बल्लेबाज सर्वाग्नि उर्वा बंधनों को तोड़ पाते हैं। जस्ट ब्रेकिंग द शैकल्स जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 2 ओवर का खेल इस वक्त बाकी, और काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए इस वक्त दुर्गा कोंचाड़ी के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जा रहा है। गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए,
नवीन इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। शॉट फाइल लेगा बिडॉन थोड़ा सा वाइड नेक्स्ट कवर और शॉट थर्ड मैन इस वक्त तैनात ऊपर की पहली गेंद लेकर इस वक्त नवीन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए प्रदीप इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। नवीन की गेंदों का ओवर की पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इनफैक्ट फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को उछालना चाहा, रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहता, गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटी लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते हुए विकेटों पर निशाना दागा। इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर पहुंच सके और इसी के साथ ये विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। हालत काफी हद तक नाजुक से इस वक्त दिखाई देती हुई सर्वाग्नि उर्वा के लिए और निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज दुर्गा कुंचाड़ी के और टॉस जीतने के बाद दुर्गा कुंचाड़ी के कप्तान ने जो निर्धार लिया था फील्डिंग का, उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दुर्गा कुंचाड़ी के फलस्वरूप इस वक्त काफी हद तक समस्याएं खड़ी हो चुकी है सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाजों के लिए। सृजन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का। तो नवीन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद चिप गया लग ऑफ पर, एक और विकेट हो सकता है और एक और विकेट यहां पर खो चुका है इस वक्त। तो इस वक्त पहली गेंद को सृजन ने इस वक्त लॉफ्ट किया था लेकिन गेंद सीधे पहुंची थी लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में। पहली गेंद पर गोल्डन टक डिसमिसल और छठा विकेट गिर चुका है 17 रनों पर। काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा। नवीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज प्रसाद इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नवीन की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। अब बीमर गेंद इस वक्त काफी ऐसा कहना पड़ेगा गेंदबाज के हाथों से फिसल गई और काफी ऊंचाई पर निकलते हुए और इस बीच नो बॉल का इशारा। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और इस बीच गेंदबाज नवीन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फ्री हिट इस वक्त अंपायर इशारा करते हुए और बल्लेबाज फ्री हिट गेंद का सामना करने के लिए तैयार। नवीन दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद जमीन के सहारे ऑन साइड पर स्विंग किया 6 रनों के लिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट शॉट, बिल्कुल गेंद जमीन के सहारे आए थे। द बॉल केम अलोंग द कार्पेट लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे फेंकी थी। देखिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज वन। तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। परफेक्ट स्ट्रोक और एक बार फिर से गेंदबाज नवीन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन इस वक्त करना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेने में असफल और गेंद इससे पहले कि शॉट थर्ड बैट पर फील्ड हो 1 रन मिल चुका है। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸೊ 7th wicket down, 26 for the loss of 7 wicket. So 26 for the loss of 7 wickets, and this is the wicket number over number 5 in progress. Just 3 wickets they got in their hand, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in the innings right after this over, and just we have to wait and see next delivery from the So this time lofted that one, और इस बार again the लंगोन पर पहुंच चुकी है. ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. Just trying to loft that one, not succeeded, and Langon fielder finally made no mistake. That is the wicket number 8. It's 26 for the loss of 8 wicket in the over number 5 in progress. और जहाँ तक सवाल है, सिर्फ 2 विकेट इस वक्त सुरक्षित है, और इस वक्त 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 5 overs completed, 26 runs on the board, 8 wicket lost, and last over remaining in overall calculation in their innings. तो इस वक्त देखना यह है कि अंतिम ओवर कौन गेंदबाज यहाँ पर करते हैं. धनुष द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक, और धनुष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ. पावर प्ले इस वक्त पावर प्ले का इशारा इस वक्त करते हुए अंपायर, और जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम ओवर का, तो अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. मिड ऑन नेक्स्ट कवर, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग मौजूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार धनुष गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद. यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त स्विंग करना चाहा, चूंकि लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 27 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट. 6 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स. गेंदबाज ओवर की अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा. प्लम प्लम एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट. तो इस वक्त गेंद लाइन पर टिप्पा खाए थे. मिड स्टंप को कंसंट्रेट कर आते हुए थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूंकि और यहां पर लेग बी 4 विकेट घोषित होता हुआ. 9th विकेट फॉलोन इज 27 for 9 with just 5 balls to go in the innings. धनुष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. इंतजार है इस वक्त अंतिम बल्लेबाज का. द लास्ट बैट्समैन, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट बैट्समैन. Next match, Friends Kuttar will take over Deadly Kankanadi, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So number 11 and the last batsman is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज धनुष की ओवर की अगली गेंद का. तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के ओवर द विकेट. ये गेंद एब्सोल्यूट प्लम दिस टाइम, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट. अपील, और इस अपील को नकार दिया इस वक्त. कुछ हद तक गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और आखिरकार नजदीकी मामला जरूर था, लेकिन यहाँ पर नकार दिया अंपायर ने. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. It's 28 for the loss of 9 wickets with just 4 balls left in their innings. 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और इस बीच गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार this time he won't survive. In fact, it's a bowled. The ball after beating his leg is stuck to his middle leg stump. Bells are disturbed, and that's it. And Sarvagri Urwa are bundled out for 28 runs under their 6 overs quota. That means in exactly 5.3 overs, and now they set a victory target of 29 for Durga Konchadi.
And Durga Konchadi have to score 29 runs in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 4.85 runs per over with the help of 1 wickets. And let's see can they reach the target or not. 29 the target for them and their inning starts with registered ball. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब दुर्गा कुंजाड़ी की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. Welcome back once again for the innings of Durga Konchadi. So once again we are having very respected MLA of South Constituency, D. Vedivas Kamath sir, the MLA one who was responsible for a lot of development in the UCG ground, providing the floodlights and even spectators, the galleries. And so far I think he is the one who is lot of contribution in the field of sports and games, and we are looking for more work from our beloved MLA D. Vedivas Kamath. And once again we welcome him for this prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, Manglore, in this most beautiful UCG cricket ground. Signals straight away coming from umpire Mohan Iyadi to start off the innings. The Sharan will go into start the proceedings from the commentary box, and in front of him is Asif, one of the most very experienced campaigner for the side. So first ball, batsman plays it defensively. So second time in this over, right arm, left arm determination, right arm, left arm round the wicket. Asif went for the expansive drive. Again, he couldn't manage to get that one from the middle of the bat. The ball, which is little bit outside the line of off-stump batsman, wanted to hit the ball towards extra cover region, but fails to make any big timing in that stroke. So good start there by very young Sharan, and is a very talented bowler for the side. Left arm round the wicket. He tried to york the batsman in the relegation. Full toss delivery, low full toss, and batsman managed to pick the single here. With that single, scored Namuzan to first run comes up here. One without loss of any wicket in the over number first is in progress.
ಸೊ ಇದೀಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ contribution, especially for the field of sports and games. Thank you very much sir, for your big contribution, especially for this UCGK ground. And one way of organizer real estate group registered Bejai wanted to give special thanks for our MLA, beloved MLA Vedras Kama sir. Thank you very much sir for your important time. In your busy schedule you are given a time. Thank you. Rakshak bowling from the far end, right arm over the wicket. Balls far outside the run of off time, going to be a wide. One more addition with the form of extra score numbers on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Rakshak and again bowling from the far end, right arm over the wicket. Balls this time reverse stroke, magnificently played down to deep cow point, big backward point, Pigeon boundary for 4 runs. Glorious shot. And just breaking the shackle in the negation by Amit by playing that switch it. Have a look at that one in replay. Nothing much wrong with the line, isn't it? He just played that one quite beautifully, and playing that switch it is so beautiful. Absolutely fantastic stroke indeed. One bounce into the row for 4 runs. With that boundary, scored moves on to 7 on the board without loss of any wicket. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ this cricket tournament. You have spent your time, very important time with us in this particular cricket tournament. Thank you very much once again for our beloved MLA. Again the misfielder, the fielder unforced error, isn't it? The Sandy is there in the short third man, little bit shown that urgency, and he just pays the penalty for that, missing that the ball completely, and that's only because of he's just wanted to field the ball by charging into that one, but not really able to see the line of the ball, missing it completely, and couple of runs which is taken by both the batters. 9 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Again Rakshak, right arm over the wicket, ball swings at one, the straight to the fielder, chance of run out. Very good throw. Very good throw from the fielder at short mid wicket. Pradeep really got a fantastic throw. Not only fields the ball well, but have a look at that throw, that one absolutely perfect throw. And the batsman tried to swings that one. Amit's intention to clear that infield, and he couldn't manage to get the placement right. And mid wicket fielder managed to return the ball quickly to the hands of the bowler, and he is just short of his crease. 9 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. This is the kind of start what team Sarvagni cricketers need to get, because they are not depending a big total, just a 29 to win the match for the opposition. They can win the match if they bowl well and fields well. Santosh is the new batter, is in the walking towards the middle. Rakshak and try to put some break on the run rate, but already one boundary which is came in that over. That's really looks like it's going to be handy for the opposition team to get their required run rate. The new batsman in is Santosh is in non-striker zone, and Asif will go into face next delivery. Absolutely spectra wide, and second time in this over he bowled that line
Rakshak. And 10 for the loss of 1 wicket. Again, Rakshak bowls. Driven up and over, but didn't got enough timing in that stroke. Is it that at the same time, the against the wind that throw that stroke which is played, so that Asif got a couple of runs. With that couple of runs, Kobad moves on to 12 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. So Asif know exactly this is the last over of the power play. He wanted to take the advantage of that fielding restriction in the power play, so that he played a useful lofted stroke and he got a couple of runs for that. Rakshak again now from the far end. Right arm over the wicket. Bowls. Misses it completely, and wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. This time Asif wanted to play that one down to extra cover region. Protection is given for that stroke down at deep extra cover. And Rakshak again, right arm over the wicket bowls. This time reaching for the delivery, but misfield by the fielder, but one single there because the fielder from cover point region quickly moving to the direction of the ball. Karthik just moving towards the direction of the ball, so that the batsman got ample time to complete the single. 13 for the loss of 1 wicket, 2 gone. And 4 overs remaining, 24 deliveries remaining, and 24 deliveries needed to get another 16 runs to win this match. And required run rate is exactly 4 runs per over. 4 runs per over, which is going to be a run rate required. Srijan. Yesterday, Srijan got a very good tournament of BK Champions Trophy 2023. His teammates Shaktinagar yesterday, is unfortunately they lost the match with unbelievable loss, and when it's more than runs which is required, 3 balls 11 required, and batsman hitting a boundary and 6. And same that Rakshak is a bowler that time, bowls outside enough of stump, well within the reach of the batter, and nothing is happened in that delivery, the dotted delivery. And Srijan is a very quality bowler, and different bowling action, but a lot of pace in the bowling and the wrist work in the last moment. And again going for the try. Asif didn't got enough timing in that shot outside edge of the bat, which is running down the short third man region for a single. 15 for the loss of 1 wicket. Again one more inside edge of the bat, wicket keeper behind the stump, that the rest back to bowler. Srijan with a short run up, right arm over the wicket. Santosh again going for the drive, again wicket keeper. It's a bad miss, absolutely bad miss there from Sachin, isn't it? Because frustration for the bowler having that kind of line and length, and it's not so easy to defeat the bat of the batter like Santosh. And one wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. It will going to be the big miss. 15 for the loss of 1 wicket. 14 more runs required for the victory. Srijan is trying his level best in this over. So far, it's so good. Top edge, leading edge, ball is in there. Opportunity is there. No one there in the long on and long off. A little bit wider. So the batsman completed a couple of runs. Lucky escape here for Asif, isn't it? That ball, even though that got a leading edge of the bat, but when it's going straight means you're safe, and between long off and long on, and ball landed safely. It's a 17 for the loss of 1 wicket. 12 more runs required for the victory. Srijan again, right arm over the wicket bowls. Asif went for the drive, appeal for caught behind, just an excitement rather than the confidence. Good over there from Srijan, absolutely good over, and 17 on the board. Now very interesting because of that good over. And looks like now in our remaining 3 overs, 18 balls, they have to get another 12 runs to win this match.
18 ball 12 runs required for the victory, and wait and see how well the team Sarvagni will go into bounce back. So far I think in the last over they really got a bounce back, and before the next over going to start, it's a time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you. तीन ओवर के समाप्त, धन्यवाद सतीश। तीन ओवर की समाप्ति, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ, और बाई का इशारा इस बीच अंपायर का, और बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर शुरू हो चुका। प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, रन से चाहिए इस वक्त 12 विजय के लिए। ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 10 रन और चाहिए विजय के लिए। 10 to get for victory। स्विंग किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक फील्ड की जाए 1 रन का इजाफा हो चुका है। धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त दुर्गा क्रिकेटर्स को जारी। चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अगली गेंद, ओह ब्यूटी, दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटी दिस टाइम, बीटन कंप्लीटली बाय दैट फ्लाइट and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Fantastic piece of bowling performance continuing here from Pradeep again. Here he bowls right arm over the wicket, this time off the toes on to backward square leg. In fact they get a single, come back for the second and get it comfortably at last. So the scoreboard is moving up to 21 now, 22 now for the loss of 1 wicket in the over number 4th in progress, और सिर्फ 7 रन अब चाहिए विजय के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, नॉट स्ट्राइक पर थ्रो किया, और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओवर्स कंप्लीटेड। 4 ओवर की समाप्ति और 23 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल बाकी, सिर्फ 6 रन चाहिए विजय के। जस्ट 6 to get for victory in remaining 2 overs. Meantime, the next match, Friends Kuttalwell takes over Deadly Kankaradi in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please, players of these two teams to please get ready for the next match. और मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है 6 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी, और लक्ष्य बिल्कुल आसान इस वक्त दुर्गा कुंचाड़ी के लिए। 5th ओवर स्टार्ट्स, 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। मैच नंबर 3 यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर प्रगति पर, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर बेहतर फील्डिंग, रनआउट का खतरा, लेकिन यहां पर दूसरा रन लेना चाहते हैं। ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन वहां पर बैकअप होता हुआ, और सिर्फ 1 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 5 रन सिर्फ चाहिए, 11 गेंदें बाकी। लक्ष्य बिल्कुल आसान इस वक्त नजर आता हुआ दुर्गा कुंचाड़ी के लिए, और इस वक्त आसानी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त दुर्गा कुंचाड़ी। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सृजन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड। 25 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, और कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। 11 गेंदें बाकी अब उनके पारी में। अगली गेंद सृजन की, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पैरों पटक रहा है, प्लम इन फ्रंट, एंड दैट इज द विकेट नंबर 2 फॉर दुर्गा कुंचाड़ी. The batsman wanted to play a reverse shot at the last minute. The ball stuck to his top of his legs. In fact, the ball
And the ball came in the direction of the middle stump, and umpire Mohan have no hesitation to rule him absolutely plumb in front. Have a look at this in the replay. And this time he lost his wicket in the face of LBW. 25 for 2 now, 5th over in progress. तो नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अजय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और सृजन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। 10 गेंदें बाकी है और सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। सृजन अपनी ओर की अगली गेंद, बल्लेबाज अजय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है बल्लेबाजों को, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा, और फॉलो थ्रू में गेंद पर झपके जरूर गेंदबाज, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चुके, थर्ड मैन फील्डर चुके, और इसी के साथ ये मैच दुर्गा कुंचाड़ी जीत चुका है 8 विकेटों से सर्वाग्नि उर्वा के खिलाफ, और इस 8 विकेटों की विजय के साथ इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। तो मैच नंबर 3 यूनाइटेड ट्रॉफी 2030 का समाप्त हो चुका है। अब अगला मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स कुत्तार और डेडली कंकनाडी के बीच में, और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। So man of the match of this match award goes to the man who performed brilliantly with the ball. He bowled 2 overs, conceded just 5 runs and captured 3 wickets. Ajay of Durga Konchadi adjudged man of the match. I request Mr. Ajay of Durga Konchadi, please go on to the stage and receive the man of the match award in the face of t-shirt which is donated by Grahini Masala. And I also request the losing team captain, the captain of Sarvagni Urwa, please go on to the stage and receive the momentum from organizer to participating in this tournament. So match number 3 of this tournament ended just short while ago, and the match number 4 is now coming up within just short while between Friends Kuttar versus Deadly Kankaradi. We'll be back right after the short break with Satish in English, where the next match will going to commence within just short while. Thank you. Dhanyavad.
ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. Welcome back once again for this prestigious United Trophy, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Manglore. And here is the first ball of the match number 4. Outside line of half time, batsman going for the drive against the line. And Munna, one more very recognized bowler, one more represented for the teams like Mangalore Devi Cricketers, starts his first ball, which is a little bit out, first over, and first ball which is outside the line of off stump, and there is no chance at all for any run. Friends Kuttar came into this tournament as one of the favorite to enter into the finals of this prestigious cricket tournament, United Trophy 2023. But they need to play against Deadly Kankanadi. Yesterday, Deadly Kankanadi, they becomes a runner-up of a BK Champions Trophy, which is organized by Tucker's Friends Kudroli. Manglore slashed straight to the hands of short cow point region. This is a huge wicket here for Munna. Azim, the batsman, going for the big shot. Of course, he wanted to take the advantage of the fielding restriction, but couldn't manage to keep it over the top of the field. Ball went straight to the hands of short cow point. He's making no mistake at all. The first wicket is back into pavilion. It's 0 for 1. So new batsman in is came into middle for team Deadly Kankanadi, and first ball is off the mark with a single. First run comes up here for the team Deadly Kankanadi. Is there one for the loss of 1 wicket, and Rashid Baba, and a man who is in a terrific form from the bat, and yesterday he's got a man of the series, the same cricket ground, UCG cricket ground of the BK Champions Trophy. And Rashid Baba has got a huge individual prize, that is the man of the series, for his outstanding performance in that tournament. And now he's facing his first delivery.
Munna. This time, high, and it's going to be a chance for the field, and it's a 6. This is what Rashid Baba is for you. Once it looks like it's played it when very high. Sometime you are playing very high, it's very difficult to get the distance. But I think it's a bit that direction of the wind. I think the ball just traveling over and gone out of the park for a 6. So this is what all about Rashid Baba. When he is in arc, ball will going to disappear out of the park. Munna bowls slower one, change up pace, and Rashid Baba negotiated very well in the last moment, seeing that the slowness of the ball. Quite hardly he plays it down to short mid-on region for a single. With the single scored numbers on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Very good contest between these two very good teams. And here is Munna, right arm over the wicket. Flum, absolutely flum in front of wicket. No doubt at all. Mukhtar finding himself right in front of middle stump. Munna strikes second time in this over. The equal start for both the team. The equal start in the sense Prince Kuttar has got 2 valuable wickets. And team Deadly Kankanadi have got 8 valuable runs. That means both the teams are performing very well. And 2 wickets, Mukhtar's wickets definitely going to be a huge wicket. Mukhtar is a kind of batsman, is always going to be a very dangerous batsman. And he is just wanted to hit the ball against the line, which is the incoming delivery, and finding himself flum in front of wicket. Umpire Arish Padil has got no hesitation in his mind to raise his finger. Arish Padil and umpire Roland Pinto, the 2 umpires there in the field. As a field umpire, umpire Mohan Iyadi here in our commentary box as a 3rd umpire. 8 for the loss of 2 wicket. Daryl is a new bowler, is brought in attack. Daryl, I think his one is represented for Adimesh cricketers in JD Boys Trophy 2023. And when it's 8 runs required from the last over, and his one is produced a fantastic last over and responsible for Adimesh cricketers to clinch that JD Trophy 2023. This time, that ball almost close to the stump. Oh, directed, but I think the batsman looks like he's have made it. So very good throw from the fielder from the short fine leg region. And if Rashid Baba maybe is not really aware of that throw will going to coming to his hand, once quickly realizing that ball is coming to his hand, his managed to drag his bat. Otherwise, it's going to be a disaster finish for Rashid Baba. Just like in other day in the World Cup, T20 World Cup, Harmanpreet Kaur becomes a run out because of that the similar kind of laziness. Maybe that is not a kind of laziness, but sometimes which is stuck. But I think it's a slow running between the wicket. It's probably the second run there. And that's what the cricket is all about, isn't it? You cannot be lazy, because in the present cricket everyone is very quick. Everyone wanted to grab the opportunity for your laziness, and because of that run out, the India has really missed the opportunity to enter into the final of the World Cup, T20 Women's World Cup. So here is Baba drives powerfully, and bowler did a great job. Daryl on his follow through stops the ball. Opportunities created for the run out. Nikhil almost tried to reach that ball to make that run out from the behind the stump, but couldn't manage to stop the single from these 2 batters. 11 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Daryl, right arm over the wicket. Batsman drives that one. Mubarish picked up a single. Misfield there by the fielder. They're going for the second run. Baba, and looks like he's in a lot of improvement in his running between the wicket. I'm watching him. The last 2-3 years back, he's not that much of a good runner between the wicket. But in the present cricket, he's improving his running between the wicket. He's not missing any laziness, any misfield. He will going to grab the opportunity. 13 for the loss of 2 wicket. Outside of stump, and punishable from umpire Roland Pinto, sir. And with that single scored numbers under 14 for the loss of 2 wicket. White call by umpire, rightly so.
And here is again Daryl, right arm over the wicket, balls to Mubarish. Mubarish turns and 120 square leg region. Quick single taken by the both the batters. With that single score, but Namozan to 15 for the loss of 2 wickets. The power play over is going on. The last over of the power play. Rashid Baba already has got 1-6 in his name, and now he's facing next delivery, the last delivery of the over number second. Daryl outside of stump, beautifully bowled. Good finish for that over for Daryl. 2 overs gone after completion of over number 2. Searching for the right track. Team Deadly Kankanadi managed to score 15 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. And of course, everyone's eyes on the third test match, which is going between India versus Australia. But in this third test, looks like Australians wanted to bounce back. When the last reports came, India is in a very, very difficult condition. They have lost 8 wickets so far, it looks like. And I want to see the latest update. 108 for loss of 8 wickets. And looks like once again Akshar Patel wanted to rescue India from low score, but now Mohammad Siraj and Akshar Patel, the two batters out there in the middle, to get some respective total for India. But so far, I think it's not a good score for India. 108 for the loss of 9 wickets. 9 wickets which is gone, and that's the latest report which is came of the third test of bilateral series border Gavaskar trophy between Australia versus India. Munna to continue from here. Right arm over the wicket, drives it on chance of run out, and Mahesh, the fieldsman, fumble, and here is batsman is safe. Mubarish very lucky there, otherwise it's going to be a chance of run out. Both the end there is opportunity for Mahesh able to collect the ball properly. So Mubarish as safe in the non-strikers, and even it's a direct hit, it's too late. 16 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Munna just having the examination of the field set. Deep square leg, deep mid wicket, deep long on, deep long up, deep cover point. And again Munna balls right above the wicket. This is the line. This is the line always going to test the batsman's technique. The batsman like Rashid Baba, because Munna is a very experienced campaigner. You know exactly what is the strongest zone of the batter, so that is just bowling away from the bat of the batsman, and he's not bowling to his strong zone. This is a one more good line. Fantastic bowling performance here for Munna. This is not so easy when you are passing the ball just inside that line, wide line outside and above time. You need to be very accuracy that we wanted to bowl that line, because any little bit mistake it's going to be wide. But Munna bowling that good line so far. This is a better line. This is a better line, isn't it? After bowling 2 balls outside and off time, Rashid Baba thinking about one more ball which is coming to the outside and off time, and all in sudden the Munna balls the incoming delivery. So the Rashid Baba is not ready for that. Now Mubarish just having some word with Rashid Baba, maybe telling that of course the cricket is not all about hitting boundaries and sixes, but sometimes you need to look for some rotation of strike, and 16 for the loss of 2 wicket. Munna balls. Baba bowled him, cleaned him up. This is the result. This is the result of the frustration from the batsman after playing 3 back-to-back dotted deliveries, and Munna exactly knows that this is the right time for me to bowl one good delivery to defeat the bat of Rashid Baba. Have a look at that one in a replay. Magnificent off cutter, and Baba looking for the expansive drive, not really judging the turn of the delivery, deviation in that one, and he got a huge pitch in the net. Absolutely the man in the form. Rashid Baba is back into pavilion. It's a 16 for the loss of 3 wicket. Outstanding bowling performance here from Munna. Phenomenal, isn't it? After bowling 2 balls outside the line of off time, and defeats the bat of Rashid Baba. 1 ball which is sharp incoming delivery. At that time Rashid Baba little bit under pressure, and whenever the batsman under pressure, I think is always the good bowler will go into ball one good delivery which is enough for them to pick the wickets. And Baba is back into pavilion after scoring 9 runs with the help of 1-6. It's 16 for the loss of 3 wicket.
Asha is the new batter. One more very talented left-hand batter, Asha. Asha will go into face Munna. Oh, loose stroke. What kind of stroke that was? Asha wanted to guide that one in the third man region, but couldn't manage to keep it down. Loose stroke, pays the penalty for that. Back-to-back 2 wickets here for Munna. But just a single run he conceded. It's a good comeback here for Friends Kuttar through Munna. And Munna once again justifying that experience is so important in cricket, and he converting that experience into performance by picking up 2 valuable wickets. The 16 for the loss of 4 wicket, and I'm very interesting to see that very experienced legend player Santosh is sitting in the dugouts bringing water here. Maybe it's some reason behind that, but I doesn't want to see him out of the playing 11 of Friends Kuttar. But this is his love towards the cricket is very important, isn't it? Evan is number 13, number 12, but the love towards your team is always very important. And Evan, of course, is a key player for Friends Kuttar. And wait and see in 3 overs how well the team Deadly Kankanadi will go into bounce back. And Gopi, Deadly Kankanadi, yesterday they really played a good game of cricket, and they're runner-up of the prestigious BK Champions Trophy. But in this particular match against Friends Kuttar, the disciplined bowling performance looks like they're struggling a little bit. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, पिछले कल रनर्स अप का खिताब उन्होंने अर्जित किया था, जो टक्कर्स ने जो शक्ल का आयोजन किया था बीके चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में, और यहाँ पर डिसिप्लिन गेंदबाजी का प्रदर्शन न देते हुए फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाज है, तो यहाँ पर रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए, हालांकि एक छक्का रशीद पापा ने जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक कर चुके इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाज। और देखते हैं बचे हुए ओवर्स में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाता है। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला हुआ, इस लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और अपनी ओवर की अगली गेंद इस वक्त लेकर तैयार था। ना तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ वाइड इस लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है डेडली कंकनाडी को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और गेंदबाज की गेंद उछाला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ यहां पर कैच को लपकने में सफल, और इस बार विकेट से हटते हुए देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुके। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड दे आर नाउ स्ट्रगलिंग। 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज फ्रेंड्स कुत्तार के। दोपहर का वक्त लगभग 1 बजते हुए 12:50 बज चुके हैं अगर सही तरह से कहा जाए, और धूप अपना प्रकोप यहाँ पर बढ़ाता हुआ, और जहाँ तक सवाल है गर्मी का, तो भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस बीच अगली गेंदबाज की रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे निकला, विकेटों पर निशाना जागा नॉन स्ट्राइकर पर विकेट कीपर ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित बल्लेबाज गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है। स्कोर इस वक्त नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी दूर दूर तक पहला वक्त क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, मुन्ना गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ताइनात ओवर द विकेट स्वीप किया, इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 20 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। 4 ओवर पूर्ण हो चुके हैं और 4 रन इस ओवर में बने, एक बेहतर ओवर रहा यहाँ पर डेरिल का, और 4 ओवर के बाद 20 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर था 15 रन, लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में किया, और बाद के 2 ओवर में सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए, और अब 4 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, उनकी पारी में विश्वास
काफी विश्वास के साथ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनीस जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट इस वक्त ना ठीक सीमा रेखा के पास और विश्वास ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उठाया लॉन्ग ऑन पर लेकिन वहां पर फील्डर को प्राप्त करते हुए not quite get that one right from the middle of the bat and placement was too wrong and because of that he paid the penalty for that. Have a look at this in the replay. गेंद को देखिए किस तरीके से उछाला था लेकिन गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन नक्षत्र फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो एक विकेट के पतन के साथ स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर। 20 for the loss of 6 wicket at the start of the 5th over in fact. तो काफी संकट की स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ डीके यानी दुर्गा कुंचाड़ी और जहां तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है डेडली कंकनाडी इनफैक्ट और 11 गेंदें अब बाकी हैं। तो डीके वर्सेस डीके दुर्गा डीके वर्सेस एफके इनफैक्ट it's a deadly Kankaradi versus Friends Kuttar. The match is now progressing here. Match number 4 of this tournament. In fact, जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज विश्वास इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार विश्वास दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर विश्वास इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला ऑन साइड पर, मिड विकेट फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएगा। डीप मिड विकेट पर टिप के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। सो स्टिल द बैट्समैन ऑफ डेडली कंकनाडी सर्चिंग फॉर रन्स एट द सिचुएशन और विश्वास एक बार फिर से तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5th इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। विश्वास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, जस्ट अ सिंगल दे गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल सम फील्डिंग एडजस्टमेंट्स इज गोइंग ऑन देयर और कवर पॉइंट फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है। डीप कवर पॉइंट पर बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है गली क्षेत्र पर और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज विश्वास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट द बॉलर हिमसेल्फ आफ्टर इट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक सवाल है लंबे स्ट्रोक्स का चौके और छक्कों का तो कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है और विश्वास एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला लेकिन वहां पर फील्डर नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्रोक, he hit that one straight over the head of the bowler and he finds the gap very well between long off and long on and he's got a boundary for that. विश्वास कुछ हद तक मांसपेशियों की खिंचावट जिसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त महसूस करते हुए बार बार अपने जांघों को वो इस वक्त दबाते हुए कुछ हद तक उन्हें बाधा हो रही है इस वक्त गेंदबाजी में रन अप लेने में और इस वक्त स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका 29 रन पर। देखिए किस तरीके से अपने पैर को वो इस वक्त अपने जांघों को दबाते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस दर्द के बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉट स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा,
लेकिन यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। निशाना डायरेक्ट हिट इस वक्त टकरा चुका है। और देखने वाली बात यह है कि जब डायरेक्ट हिट लगा था तो यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो तृतीय अंपायर यहां पर परिशीलन करते हुए और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं। Meantime, the next match will be the match number 5 of this tournament is now coming up live exclusively right after this match between Kodikkal Challengers versus New Star Kunjatur, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Not out. The decision came from the third umpire and everything safe for the batsman. और यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है इस वक्त 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर. 31 for the loss of 6 wicket. 5 overs have been bowled in deadly Kankanadi's innings. और इस बीच नया ओवर हमसे दूर वाले छोर से रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाजी शुरू करते हुए और सिर्फ 6 गेंदें अब बाकी डेडली कंकनाडी की पारी में. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद हमसे दूर वाले छोर से अंतिम ओवर की पहली गेंद. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए कट किया. इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर और इससे पहले कि इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन डेडली कंकनाडीज इनिंग्स. और फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मुबारिश ये गेंद स्वीप करना चाहा चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी. बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. तो प्रदीप गेंदबाज हैं जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके. 2 बेहतर गेंदें अपने ओवर के वो अब तक फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट मुबारिश इस वक्त सामना करते हुए और प्रदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा. डीप इन विकेट पर गेंद पहुंचे. 1 रन मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. थ्रू पहुंच चुका विकेट कीपर के हाथों में और आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट. इट्स 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. तो गेंदबाज प्रदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार नौफल सामना करते हुए. कुल मिलाकर 3 गेंद बाकी अब उनकी पारी में और प्रदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद this time and I think it taken just inside the fence and comfortably held by the fielder and one more wicket fallen. गेंद को उछाला था लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके. लंग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे आसानी के साथ इस कैच को लपकते हुए सीमा रेखा के अंदर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स and just 2 balls left in their innings. सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में.
So fantastic tournament in the name of United Trophy 2023 is now progressing here, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore. और जहाँ तक इस श्रृंखला के विजेता का सवाल है तो प्रथम स्थानी यानी चैंपियन, इस श्रृंखला के चैंपियन को दिया जाएगा 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और यूनाइटेड ट्रॉफी, जबकि द्वितीय स्थानी यानी रनर्स अप को दिया जाएगा 25,000 रुपये और यूनाइटेड ट्रॉफी। और वैयक्तिक विभागों में कई इनाम दिए जाएंगे। और कल शाम को यहाँ पर इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच होगा। तो 2 दिनों तक ये क्रिकेट श्रृंखला चलेगी। और जहाँ तक अब तक का सवाल है तो अब तक ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति कर चुकी है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आगे भी ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करे। और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पैरों पर टकराई, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी इस वक्त गेंदबाज ने। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और मुबारिश जो कि एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, उनकी पारी की अंतिम गेंद का। और प्रदीप फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और अंतिम गेंद लेकर तैयार। 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर मुबारिश बल्लेबाजी करते हुए उनकी पारी का अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। प्रदीप मुबारिश के लिए अंतिम गेंद, ये गेंद स्वीप किया, टॉप फील्डर शायद वहां पर मौजूद है, गेंद सीमा रेखा से बाहर इस वक्त जा चुकी है 4 रनों के लिए। थोड़ा सा मिस जजमेंट, पहले सोचा कि गेंद को लपका जाए। एक्चुअली आई वांट टू सी इन द रिप्ले एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड देयर, जस्ट लुक एट दिस इन द रिप्ले। तो यहां पर गेंद को स्वीप किया था, टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वहां पर पहले कैच के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन अंतिम क्षण में भापा की कैच को नहीं लपक पाएगी, गेंद उनके आगे टिप्पा खाएगी, अपने दौड़ को रोका और गेंद को फील्ड करना चाहा, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद स्पिन होती हुई, टर्न लेती हुई उनको फील्डर को वंचित करते सीधे डीप एक्रोस को लेग सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के। तो इस चौके के साथ इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड और 6 निगदित ओवर समाप्त होने के बाद, 6 निर्धारित ओवर समाप्त होने के बाद डेडली कंकराड़ी इस वक्त जोड़ चुका है 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 38 रन स्कोर्ड बाय डेडली कंकराड़ी फॉर लूजिंग 7 विकेट्स इन आफ्टर देयर स्टिपुलेटेड 6 overs. And now they set a victory target of 39 for Friends Kuttar. 39 Friends Kuttar have to score with the required run rate of exactly 6.50 runs per over. They have to score for victory. That means they have to score 39 in their stipulated 30-60 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they read the target out. Meantime, their inning starts with just short ball. Till then, we are taking a short break. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब फ्रेंड्स कुत्तार की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर। धन्यवाद, थैंक यू।
So welcome back once again. It's a 39 going to be a target for team Friends Kutar, and wait and see how well they will going to get this 39. It's going to be a very interesting match, isn't it? Deadly Boys Kankanadi. Of course, they are not playing with yesterday's all playing 11. The big miss is their captain Atif, because Atif is represented for NM Cricketers Mangalore, and in the Mangalore pool and high seeded teams, and now his team is representing in the local pool, that is his home team, Deadly Boys Kankanadi. So that he's just missing his service, but still I think team Deadly Boys Kankanadi has got some good playing 11. They can give some kind of fight here for team Friends Kutar. It's going to be a very, very interesting match. Both the teams has got opportunity to win the match. First ball looks like the batter Tyagraj is not ready to play the ball. Even umpire is also not ready to here. And after observing all the field set, umpire signals here. It's going to be right arm over the wicket. Anis from the Rohan Corporation, and start with the beautiful delivery, which is little bit outside the line of off temp, and more than anything else in that particular delivery, the ball which is came along the carpet. And when balls coming along the carpet, it's difficult line outside line of off temp for the batter to hit the ball. Again, beautifully ball. The second delivery, which is in the same line, Tyagaraja might be little bit misjudging that one. He thought it might be the wide delivery, but still that ball is well within the reach. So that two back-to-back dotted deliveries. Tyagaraj is on strike. This time it's certainly going to be punishable from umpire Roland Pinto. Far outside line of off stump. And first run comes here for Friends Kutar. Coming back to Tyagaraj. In present cricket, is known as one of the dangerous opening batsmen. As far as his stroke making is concerned, is always going to be a very useful to having him in the power play overs. This time I wanted to get that one towards a deep long on region, but didn't got enough room to play the shot. Again, the bowler Anis is bowled a very tighty line. Even that ball is almost coming into the batsman, and Tyagaraj wanted to clear the infield, but didn't got enough timing, didn't got enough room to play the shot, and three dotted deliveries, one without loss of any wicket. Aziz balls that them outside. Tyagaraj wants a single, and if it's a direct hit, I think it's all over. That's why Rashid Baba a little bit frustrated himself. You know exactly Tyagaraj is a danger man and he's out of the crease. If it is a direct hit, I think it's all over. Absolutely all over for Tyagaraj, because he's out of the crease when the bad fielder trying for the run out in the striker's end. Lucky escape here for Tyagaraj. Tyagaraj once again tried to post that one. This time bowler misses that one, and stoppable one, and again mistimed stroke there from Tyagaraj. Tyagaraj maybe is a little bit trying hard, and especially wanted to post the ball. By doing that, he couldn't manage to get the timing proper, but at last he managed to got a single from his bat, and he's off the mark. Two without loss of any wicket. Last five deliveries, which is well bowled. The very good line and length which is maintained by the bowler Anis. And last delivery of this over is coming from the far end, from the Rohan Corporation end. Anis, final time in this over. To Nikhil. Nikhil lofted that one high, and it's going to be a catch. Anis got a huge wicket here. And this is definitely going to be a huge wicket. And the promising, talented Nikhil, the left-hand batter, he wanted to get over the top of that deep long off, but couldn't manage to get the timing and the placement right. And he's out for golden duck. This is a huge wicket for Deadly Kankanadi. And I think for Friends Kutar, it's a huge impact in the batting department. Nikhil is the man. Without disturbing the scoreboard, is back into pavilion. 2 for the loss of 1 wicket. Ashok travels ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಯಶೋಧರ್ ಜೈನ್ ಇವರ
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Manglore, and we are back into the second over. Imtiaz is experienced campaigner, did a great job yesterday for the victory for Deadly Ganganadi, and he gone. One more wicket is back into pavilion. Franz Kuttar now in a serious trouble. Almost he drags the ball into the stump, isn't it? Looks like it's going to be a half volley. The batsman going for the expansive drive on the offside region. Just like I mentioned earlier in the first over itself, Tyagras tried to force the ball, not really getting the timing in the stroke. Instead of timing the ball, he wanted to get some power behind the stroke. By doing that, he just drags the ball into the stumps. 2 wickets, which is back into pavilion of Franz Kuttar. The Franz Kuttar being the very experienced team, but I think they're playing like inexperienced players, isn't it? 36 balls, just 39 runs required, excluding wides and no balls. I don't know why the batsmen are not looking for the rotation of strikes, which is so important in cricket, isn't it? It's not about that in power play you need to play the big shot. You can rotate the strike, and you can keep in mind that the partnership, which is so important. But Imtiaz has got a very important breakthrough. The bowler, the experience, and he got a wicket for his experience bowling. This is a quicker one. This is experiment from Imtiaz. He's looking for the fastest delivery, quicker one. By doing that, he's balled far outside the line of off stump. Wide call by umpire with the addition of the singles covered numbers on to 3 for the loss of 2 wickets. Daryl is a new batter. He will go into face next delivery. Oh, what a shot! Beautiful extra cover drive down to deep cover point region, boundary for 4 runs. Magnificent stroke, imperious cover drive there from the batter Daryl. Have a look at that one in the replay. Little bit with his offered and up and over. Such a perfect cricketing stroke to play in the power play. And Imtiaz trying for the extra pace, but he's just lost his concentration over the line. Going over the top and down to deep cover point region for 4 runs. One of the best stroke of the day, number 1 of this prestigious United Trophy 2023, which is came from the bat of Daryl. Beautiful shot. This is really a glorious shot there from Daryl. And here is Imtiaz, the right arm over the wicket balls, beautifully bowled, good comeback, placing the ball. This is really a kind of pressure what Daryl wanted to implement. Good strategy, pushing the ball into the in front of fielder and asking for his partner for the quick single, and he take the single. Now Shad, the hero of yesterday's match, when his team Makyar, brothers Makyar become the champion yesterday. This man, he really changed the complexion of the game in the previous in the semi-final match, when it's 11 runs required from 3 balls. Is a man hitting a boundary and a 6 and finished the match. Is now came into bat for team Franz Kuttar. Experienced campaigner. Now Shad will go into face Imtiaz, bowling away from us. Right arm over the wicket, went for the reverse hip, and again he beats the infield. The fielder behind the ball, they're coming back for the second. Now Shad is so quick. But the throw, which is not that much of quick enough to stop the couple of runs here from these two batter. So have a look at that. Now Shad, age is, which is definitely going to be just a number, isn't it? The way that is running between the wicket, especially in this condition, it's not so easy. Very hot, 31 degrees Celsius temperatures, and it's perfect example for the youngster. 10 for the loss of 2 wicket. Imtiaz, right arm over wicket balls, going for the off drive, wicket keeper behind the stump. It's absolutely a bad miss. Frustration, there is no
I think it's from the bats. That's why the wicketkeeper fails to collect the ball. No signal coming from umpire in the sense it's got a bat onto that now shot. So wicketkeeper fails to collect the ball. One more addition to total addition of that single score numbers on to 11 for the loss of 2 wickets. It's a comeback over for the team Prince Kuttar. Even they lost the wicket of Tyagaraj. But this time, loose delivery, lofted that one. Oh my goodness, can you believe this? Ho 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 ho! The once it's a full toss delivery, Daryl really excited by hitting the ball down to deep backward square, but placement is not good. At the same time, shot selection is not good. You can't get the distance, especially in the afternoon when you're playing the stroke towards a square leg region. It was against the direction of the wind. Once it looks like the batsman hits that one, it's going to be a maximum. But ball is a little bit stopping because of the direction of the wind is opposite to that strokes. And ball which is landed safely to that mid-wicket fielder. Unfortunate dismissal here for Daryl, but fortunate dismissal for the bowler. Being the bowling the full toss delivery, he got the huge wicket of Daryl. So this is all about the cricket, isn't it? Sometime it's very difficult sometime, and the shot selection is going to be a key here. And Prince Kuttar now once again deep trouble after seeing the Daryl is in a terrific touch, and unfortunately is back into pavilion. 11 for the loss of 3 wicket. Two overs completed. Still this long way to go here for Prince Kuttar. 24 deliveries remaining. They have to get another 28 runs to win this match. The run rate required exactly 7 runs per over. It's not a big run rate, and if you play sensibly, Prince Kuttar. But partnership is so important for Prince Kuttar that they lost the 3 wickets. Partnership is very hard to combine. And Deadly Boys Kankanadi, they also realizing that if we allow the opposition team to get partnership of at least of the 15 to 20 runs, very hard for them to win this match. So what a match is going on here. Absolutely perfect match is in progress. Right arm over the wicket, looking for the safe shot. Appeal for leg before wicket, and umpire says it's not out because it's from the bat of Naushad. Rightly so. And again that one more red run is added to total 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3rd is in progress. Mahesh, one more experienced campaigner for Prince Kuttar. A lot of responsibilities required from Mahesh for his team after losing 3 valuable wickets. Sensible batting is very important. 13 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Again the bowler from the far end. Right arm over the wicket, looking for the sweep shot. Oh my goodness, they're going for the run. They're going for the run, and oh my goodness, absolutely disaster. He's bowled out. Hit wicket, my goodness. So never knows everyone. Of course, umpire maybe knows that, Harish Padil, and even umpire knows that. But I think Naushad is his partner, and the fielders doesn't know about that. Tried to swap the ball. By doing that, he hits the stumps. So wicket number 4 which is back into pavilion, and Prince Kuttar are looking in a serious trouble. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚೆರಿಯನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಚೆರಿಯನ್, the real estate industrialist, and warm welcome sir for this prestigious United Trophy 2023 which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Manglore. Meanwhile, I request 2 teams please report here immediately for the second round match. Kodikkal Challengers and New Star Kunjaturu. Kodikkal Challengers ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So meanwhile, the new batsman Naveen, one more experienced campaigner, came into bat.
appeal for leg before wicket, but again that looks like the batsman has got a bat onto that. Maybe the hand, the gloves, what you want to say, and cricketing language. Of course, in underarm cricket there is no gloves. The batsman not to have wearing the gloves, ball almost hitting the finger of the batter, so that umpire says it's not out. 14 for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. Mahesh as well as Naveen, two experienced campaigner for Friends Kutar, beautifully balled. This is one of the weapon of this man. Anish is so good in that line, isn't it? It always surprised the batsman, and because the line is so good, at the same time he got a lot of pace in the ball, so that very difficult for the batsman to get any kind of runs in that line and length. And this time change of pace, going for the quick single. Both the batsmen are very quick between the wicket. Looks like a little bit risky one, but both the batters are got a good understanding between the wickets. Over number 3 completed. After completion of over number 3, chasing 39 to win this match. Friends Kutar still they are searching for the right track, struggling in the middle. 15 for the loss of 4 wicket, and another 3 overs remaining. They have to get another 24 runs to win this match, and before the next over going to start, it's time for Gopi to take over the microphone in our national language India. And Gopi, once it looks like the 39 is going to be a not difficult task, isn't it? But seeing that seeing that the bowlers of Deadly Kankanadi, absolutely deadly performance from the bowlers of Deadly Kankanadi in the first 3 overs, which belongs to Deadly Kankanadi. Now Gopi, 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 24 runs to win this match. Asking run rate is almost is climbing up to exactly 8 runs per over. And but problem here is that the asking run is not a big problem for Friends Kutar, but they have lost 4 front order batsmen. Now all up to this to batter. The experienced campaigner Naveen and Mahesh have to anchor the innings. And I think the team Deadly Kankanadi, they're really galvanizing their level of confidence after they become the runner of yesterday's BK Champions Trophy. They're performing very well in this particular tournament. Altogether, Gopi, these 3 overs going to be very interesting in front of huge spectators. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 3 ओवर का खेल जो कि इक्वल बैटल, और 3 ओवर में हालांकि उनके बल्लेबाजों ने 38 रन जरूर बनाए, लेकिन यहां पर उनके गेंदबाज बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए इस वक्त फ्रेंच कुत्तार के बल्लेबाजों को सिर्फ 15 रन प्रदान कर चुके हैं। पहले 3 ओवर में 4 बहुमूल्य विकेटों को उखाड़ चुके हैं। और निस्संदेह जैसा कि आपने फरमाया, पिछले दिन बीके चैंपियंस ट्रॉफी में डेडली कंकनाडी ने रनर्स अप का खिताब प्राप्त किया था, तो यहां पर वो खिताब प्राप्त करने के बाद रनर्स अप का सहज रूप से उनका आत्मविश्वास यहां पर बढ़ चुका है, और उसका नतीजा यहां पर नजर आ रहा है। उनके गेंदबाज काफी आत्मविश्वास के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाज। लेकिन जहां तक फ्रेंड्स कुत्तार का सवाल है, क्रीज पर मौजूद दोनों अनुभवी बल्लेबाज महेश और नवीन जो कि इस वक्त मौजूद है, और जब तक वो यहाँ पर मौजूद है, निस्संदेह फ्रेंड्स कुत्तार के उम्मीदें आशाएं यहां पर बरकरार रहेगी। उन्हें इस वक्त निभानी है एक बेहतर साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, क्या निकलती हुई शॉट बैट्समैन फीडर की दिशा में पहुंची, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का। तो ऐसे रन निस्संदेह इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार के लिए बिग बूस्ट साबित हो सकते हैं इन क्षणों में। और यहाँ पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और गेंद फेंकी थी, 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप उनके खाते में जुड़ता, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। 18 गेंदें बाकी, 22 रन चाहिए। यह गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, हालांकि गेंद फेंकते गेंदबाज फिसल कर गिर गए थे, लेकिन एक सही गेंद उन्होंने फेंकी और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 18 रन बच चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, रन मिलेंगे 1 और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज नौफल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड बार की दिशा में, और इस बीच 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 16 रन डेडली कंकनाडी ने बनाए थे, जबकि फ्रेंड्स कुत्तार ने बनाए 15 रन। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस
एक रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फैंटास्टिक बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर बिटवीन दीस टू टीम्स। अगली गेंद, ये गेंद इस बार हल्के जगह खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। दे कंप्लीटेड वन, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंप्लीटेड लास्ट। delicate placement and because of that he's got couple of runs for that stroke और 2 रन इस वक्त बल्लेबाज और टीम प्राप्त करता हुआ 23 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 16 रन अब चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी हैं 13। सो और इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। गेंद इस वक्त सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और जब तक इनको रोका जाता सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन इस बीच प्राप्त करने का, 3 रन प्राप्त कर चुके हैं। खूबसूरती के साथ रिवर्स शॉट इस वक्त खेला था नवीन ने, खाली क्षेत्र चुनते हुए एनफील्ड क्लियर करते हुए और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंद में 5 रन बने और उन अंतिम 2 गेंदों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स कुत्तार इस मैच में वापस आ चुका है। 12 गेंदें बाकी, रन से चाहिए इस वक्त 13 विजय के लिए। 13 to get from 12 deliveries with the required run rate of exactly 6.5 runs per over and as far the victory of this match is concerned, still I must say the match is in balance और बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, जैसे कि ओवर द नेक्स्ट मैच कोडिकल चैलेंजर्स विल टेक्स ओवर न्यू स्टार कुंजतुर इन द नेक्स्ट मैच and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match। और 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ 12 चौके और 3 छक्के इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में अब तक लग चुके हैं इस यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के पहले दिन में और अब तक लग चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो माजिद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और फील्डिंग में जब अवट यहां पर चलते हुए और महेश और नवीन इस वक्त पारी के भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए एक बेहतर साझेदारी इस वक्त निभाते हुए और धीरे धीरे ये साझेदारी डडली बॉयज कंकनाडी के लिए इस वक्त खतरा पैदा करते हुए और कम बैक करना है डडली बॉयज कंकनाडी को, तो निस्संदेह इस साझेदारी को उन्हें तोड़ना होगा। और जहां तक फ्रेंड्स कुत्तार का सवाल है, इस साझेदारी को इन दोनों बल्लेबाजों को बढ़ाना होगा लक्ष्य तक पहुंचने तक। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। पहली गेंद इस बार गेंद को खेला इस वक्त हल्के से पुश कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए नवीन और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 26 for the loss of 4 wicket at the start of the 5th over. 11 balls to go, 12 runs required and स्टिल सम फील्डिंग एडजस्टमेंट्स इज गोइंग ऑन देयर। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को थोड़ा सा सीधे तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑन भी सीधा लगभग तैनात है। एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त जाते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और इस बीच गेंदबाज माजिद तैयार है अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। महेश इस वक्त सामना करते हैं ऑप्शन से बाहर, इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता लेकिन गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में। गेंद को स्वीप करना चाहता चूके लेकिन गेंद सीधे पहुंची इस वक्त गेंदबाज के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो माजिद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट ही गेट्स इन सिंगल फॉर दैट। जहां तक माजिद का सवाल है, कल जो श्रृंखला खेली गई थी बीके चैंपियंस ट्रॉफी, उस श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट माजिद प्राप्त कर चुके हैं और सहज रूप से उनका आत्मविश्वास इस वक्त बढ़ चुका है। और देखना यह है कि उस सफलता के सिलसिले को क्या इस श्रृंखला के इस मैच में भी वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। इस बीच तैयार रिवर्स शॉट खेला था, बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपिंग तेज लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, डॉट गेंद। स्कोर रुक चुका है 28 रनों पर। अब गेंदें बाकी है 8, रन चाहिए 11। कुछ हद तक इक्वेशन कठिन ना और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज माजिद गेंदबाजी करते हुए और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। महेश इस वक्त स्ट्राइकर एंड नवीन बल्लेबाज की ओर बढ़े और कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए गेम प्लान के बारे में, रणनीति के बारे में और इस वक्त अंपायर विकेटों को सही करते हुए। दोपहर का वक्त, काफी तेज धूप मैदान पर छा चुकी है
लगभग 1:30 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप की तीव्रता काफी हद तक इस मैदान पर बढ़ चुकी है। भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी अब यहाँ पर करते हुए और विकेटों को सही करने के बाद अंपायर हरीश पटेल अपने स्वस्थान पर इस वक्त जाते हुए और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। माजिद दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद नवीन के लिए आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर और क्लीन कलेक्शन और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5th in progress. Still a ball left in this over. 10 runs to get from 7 balls now. और महेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और मजीद इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर हैज बीन कैप्चर्ड एंड जस्ट 3 रन्स कंसीडर्ड बाय द बॉलर माजिद इन दिस ओवर। और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा डेडली कंकराडी का तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ 10 रन अंतिम ओवर में बनाने 9 फॉर टाई 10 फॉर विन इन द लास्ट ओवर। फ्रेंड्स को तरह हैव टू स्कोर और देखते हैं इस मैच निर्धारित ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। तो निस्संदेह बेहतरीन ओवर माजिद का समाप्त हो चुका है और मैच निर्धारित ओवर कमेंटेटर बॉक्स की ओर से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए रऊफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 10 रन अंतिम ओवर में चाहिए। नवीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और मैच निर्धारित ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और ओवर की पहली गेंद लेकर रऊफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट नवीन के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट फर्स्ट बॉल पहली गेंद ओह बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन much straighter line just wanted to drive that one missing the line completely and collected by wicket keeper behind this stumps and there is no possibility of any run. Dot ball fantastic start for Rauf और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद नवीन के लिए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लंबा की दिशा में गेंद पहुंच चुकी है क्लीन कलेक्शन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। अब गेंदे बाकी है 4 रन से चाहिए 9 runs they have to score for victory in remaining 4 deliveries। 8 रन बनाते हैं तो मैच टाई हो सकता है और टाई हुआ तो विकेट का कंपैरिजन देखा जाएगा। अगर विकेट का कंपैरिजन देखें तो 7 विकेटें डेडली ने खोए थे जबकि ये गेंद फुल टॉस गेंद को उछालना चाहा महेश ने झुका नवीन के लिए इस वक्त खतरा पैदा हो सकता है। तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त कॉल दी गई है तो देखना यह है कि जब विकेटों पर निशाना दागा था और निशाना टकराया बेल से डिस्टर्ब हुए तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं या फिर उनका बल्ला हवा में था। तो यहां पर क्रॉस एंगल पर देखा जा रहा है और गेंद को इस वक्त ड्राइव करके दौड़े थे विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया थ्रो करते हुए अंतिम क्षण में और यहां पर देखना यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं।
नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड इन दिस डिलीवरी। और यहां पर रन पूरा हो चुका है 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो विकेट कंपैरिजन देखा जाएगा, अगर मैच टाई होता तो विकेट कंपैरिजन अगर देखा जाए तो डेडली ने 7 विकेट खोए थे, जबकि फ्रेंच कुत्तार ने खोए सिर्फ 4 विकेट। तो 4 गेंदों में 3 गेंदों में अब चाहिए 8 रन। अगर 7 रन भी बिना किसी विकेट खोए यहां पर फ्रेंच कुत्तार के बल्लेबाज बनाते हैं तो निस्संदेह यहां पर विजयी कहलाएंगे। तो इस वक्त 3 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए, 7 फॉर टाई, 8 फॉर विन एंड 3 बॉल्स टू गो। और गेंदबाज रऊफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नवीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी दिलचस्प मैच इस वक्त प्रगति पर। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस वक्त नवीन के लिए, गेंद को ड्राइव करना चाहा, पैरों पर टकराई, इलेक्शन से बाहर की ओर निकलती हुई एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी। अपील को सही तरीके से अंपायर हरीश पटेल ने नकार दिया और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और एक फील्डर को इस वक्त आगे 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है, क्योंकि उनके निर्धारित समय स्टिपुलेटेड टाइम इस वक्त समाप्त हो चुका है। 2 गेंदें इस वक्त बाकी है और 2 गेंदों में इस वक्त रन से चाहिए 7। 6 फॉर टाई, 7 फॉर विन, 6 is enough for French Qatar if they have doesn't lost any wicket in this remaining 2 deliveries. 6 is enough for them. तो इस वक्त देखते हैं 7 रन चाहिए 2 गेंदों में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार महेश के लिए, ये गेंद चिपकी आसमानों पर विकेट है, लेकिन वहां पर गेंद कैप पर गई है या नहीं देखना पड़ेगा। विकेट यहां पर गिर चुका है। वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद को लपक लिया गया और अब अंतिम अवकाश फ्रेंड्स कुत्तार के सामने इस वक्त है। 6 रिक्वायर्ड फॉर टाई। अगर छक्का लगाते अंतिम गेंद पर तो निस्संदेह वो विजय रहेंगे, क्योंकि डेडली कंकराडी ने खोए थे 7 विकेट, जबकि फ्रेंड्स कुत्तार ने खोए 5 विकेट। 6 is enough for French Kuttar in the last delivery for victory in comparison of wicket, because Deadly Kankaradi lost 7 wickets, meantime French Kuttar lost 5 wickets. तो छक्के की जरूरत विजय के लिए अंतिम गेंद पर फ्रेंच कुत्तार को। और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, तो नए बल्लेबाज जिनका आगमन इस वक्त हो रहा है और देखना यह है कि वो अंतिम गेंद पर छक्का लगा पाते हैं या नहीं। रऊफ अब तक इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वो दे चुके हैं और देखना यह है कि अंतिम गेंद पर वो अपनी टीम को सही तट तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। 18 नंबर जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज प्रदीप का आगमन यहां पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। छक्के की जरूरत अंतिम गेंद पर फ्रेंच कुत्तार को। 6 नीडेड इन द लास्ट डिलीवरी फॉर फ्रेंच कुत्तार। और रऊफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट, मैच निर्धारित गेंद लेकर तैयार। हियर वी गो, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद उछाला, स्ट्राइक पे ग्राउंड एंड इट गॉट डाउन द फील्ड फॉर अ ह्यूज वन। थ्रिलिंग विक्ट्री फॉर फ्रेंच कुत्तार। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट for the back of Pradeep at this situation, and they did an outstanding start. Cue Satish. Absolutely, Gopi. Unbelievable struck, isn't it? It's unbelievable because number 7 batsman came into middle and he just little master, isn't it? And the great saying in cricket is don't judge the book by its cover. And he is don't judge by his size of that player. It's absolutely little master, but he's got a huge one. Absolutely straight down the ground, as straight as an arrow. And this is what you call cricket is an unpredictable game, and that's what the spectators loves to see. The finish, absolutely fantastic finish in this match. But I think the scores are leveled. By the fall of wickets. French Kuttar, they won the match. Scores are level, 38 and 38, equal battle. But this is what you call, Gopi, you can't throw the wicket. The cricket is always, the wicket always going to be a key here when it's going to be a fall of wicket comes into play. And I think the winning and losing is a part of cricket, but both the teams really won the heart of cricket lovers. Even Deadly Concord, they have lost the match, but they played a very good game of cricket. And unfortunately, they're losing the match by one delivery where the batsman Pradeep dispatches that one into the fence for a huge 6.
ಏ ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್. So now it's a time for the announcement of the man of the match, and man of the match is undoubtedly one who finished the match with a single ball, and Pradeep of team of Friends Kuttar who judged as a man of the match. It's a strike rate of 600 and he's just finished the match in a style. I request Mr. Pradeep to please come and collect your man of the match award, which is sponsored by Grahini Masala, and at the same time I request the captain of Deadly Kankanadi, please collect your representation memento from our organizers. ದಯಮಾಡಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ fantastic finish, and Pradeep will going to remember this match for a long time in his lifetime. And the way that he finished the match. Rauf is the bowler, very unlucky that he bowled very well the last over, and unfortunately the one ball which is quite enough for them to finish the match. For the next match, Kodikal Challengers won the toss against New Star Kunjathur, and Kodikal Challengers captain decided to ball first, and so that I request Kodikal Challengers please go for field immediately. At the same time I request New Star Kunjathur opening batsman please get ready.
So welcome back, and Kodikal Challengers versus New Star Kunjatturu. The two teams will go into clash in the second round of this prestigious Cricket Tournament United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore. Here is the first ball, right above the wicket. Oh, a lovely improvisation. First ball itself, batsman is so confident, and Sadakutta is a man who got that one right from the middle of the bat, plays it beautifully down to deep backward point position for 4 runs. It's a positive start here from Sadakutta. He's got that one right from the middle of the bat. Improvisation, a specialist in reverse stroke and one of the most popular stroke in the present cricket. And he got that one right from the middle of the bat. Always it's going to surprise. You can't set a field for that, such kind of unorthodox cricketing strokes. Sadakutta has got a boundary for that. And Rohit is a man who bought a very good start in the previous match for Kodikal Challengers. Now the first ball, it's a boundary. 13 boundaries and 4 sixes so far in this United Trophy. Misjudgment by Sadakutta. Of course, he can use that ball very anywhere in the final, isn't it? He just missed the golden opportunity to swing his bat. Misjudgment, and Rohit survives. Right arm over the wicket bounce to Sadakutta. Beautifully ball, perfect one. A good comeback here by Rohit after that boundary. Back to back 2 dotted deliveries, just like I mentioned about the players of Kasaragod district. They are only looking for the big shot. Again that ball is around the legs. Again the dotted deliveries. Misjudgment. Now back to back 3 balls, which is a dot. That means Sadakutta even got a boundary for that, but nothing much impact in that boundary because he played 3 dotted deliveries after that. 4 without loss of any wicket. Good comeback here by the bowler's point of view. Rohit bowling away from us. Right arm over the wicket to Sadakutta. Sadakutta drives that one nicely down to deep long on region. Protection is given in the deep wideish long on, so that batsmen have to settle for the single. With that single scored Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Last time in this over, Unnikrishnan is a batter, will go into face Rohit. This time slower one, change of pace, beautifully bowled, and Unnikrishnan fails to get the placement right as ball went to the hands of Sandeep at short extra cover, one of the best fielder in that region. Fields the ball. Good comeback here by Rohit. This is what you call the level of confidence of the bowler. It's not so easy when batsman hits the boundary very first ball. Then the bouncing back is so important for the bowler. But Rohit is a very young talented bowler and handling the pressure very well by bowling remaining deliveries with a good line and length. Just a 5 runs came from the first over. And New Star Kunjatturu, after they lost the toss, asked by the opposition Kodikal Challengers, it's a 5 for the loss of 1 wicket. Diresh. Viraj is the bowler. He's brought into attack. Again, that ball is outside the reflex stump, and Unnikrishnan very lucky that ball. Tanu is looking for the run out there, but misses the stumps, and batsman cross off for a single. 6 for the loss of without loss of any wicket in the over number first in progress. Mohan Iyadi and Roland Pinto, the field umpires, and here in our commentary box, Arish Padil as the third umpire. Short mid off, short cover point Sandeep, short third man, short fine leg Dhanraj, and short square leg, and short in front of square fielder, and short mid wicket. Oh, Dhanraj missed it completely. That will going to be a good stop by the fielder. Absolutely good stop. Rajesh chasing the ball and saving Dhanraj from firework from their teammates, because otherwise definitely it's going to be a boundary. And Rajesh saving Dhanraj, of course, after saving the boundary. Not only save the boundary, but saves Dhanraj from the blame from their teammates. 8 without loss of any wicket. Lovely ball again there from Viresh. Chance of run out in the non-strikers, and even Unnikrishnan has got a little bit heavy body weight, but he's a very good runner between the wicket.
That typical Unni Krishnan. We always very quick between the wicket. 9 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Viresh again. Right arm about wicket. Sadakutta tries that one down to deep long on for an easy single. With a single score to Muzan to double figure 10 without loss of any wicket in the over number second is in progress. Viraj bowling from the Rohan Corporation and looks like the sole which is came out from the shoes of Viresh. So looks like he will going to continue in that same, or will going to change the shoes or not. Wait and see. So sometime it's happening in cricket. Now he will going to continue in the same, which is sole which just came out from the shoes. It is just like a batsman's broken handles. This time, Unni Krishnan, even though he didn't time that one very well, he didn't time that one very well. Looks like the fielder is underneath it and he back into pavilion. Once Unni Krishnan looks like he's hoisting it over, looks like it's a bat and the ball, the bat which is hitting the ground, isn't it? Hits the ground hard in, hitting the bat hard into the ground, so that he didn't got enough timing in that shot. Even is a powerful striker of the ball. Soul, but it's become a little bit lucky for the bowler that he got a huge wicket of Unni Krishnan. Just we're talking about that broken shoal as same as when batsman losing a bat, sometime hitting the bat hard into the ground, and the handle which is almost we can sing that regular scenarios in crickets, the broken hands when the batsman hitting the bat hard into the ground. So Nazir Cherigoli is a new batsman in, one more very well popular name in cricket, even in Kasaragod district and South Kenda district. 11 for the loss of 1 wicket. Viraj to Nazir. Oh, both the batsmen is the same, but Nazir is a man. He looks like he went for the suicide single, absolutely suicidal single after hitting the ball straight into the ball in the hands of Ekshakawar. Sadakutta knows that is no run at all, but seeing that his partner almost coming to the non-striker's end, then unfortunately little bit correction, Nazir Cherigoli is back into pavilion, and it's always going to be a disappointment for any batsman. The very first ball is back into pavilion in the form of run out. The frustration for the batter, absolutely frustration. It's not a good judgment of the run, I want to say, because that ball hits very hard, isn't it? The ball went very quickly to the hands of the fielder. The fielder did a great job that returns the ball very quickly to the hands of Viraj. Good over there from Viraj, absolutely good over. After completion of over number 2, searching for the right track. It's 11 for the loss of 2 wicket. And it looks like as a Kodikal are looking in a commanding position. After winning the toss, selected to field first, everything is going in their favor. Sumit, the one who taken a catch of Unni Krishnan in the deep long on, is back into attack. The next match, 6th match, will be played between Red Wings versus Durga Konchadi. One more good match. I request both the teams players please complete the formalities of signatures as soon as possible. Red Wings ಹಾಗೂ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮೇತ ಲೆಕ್ಕಟರ್, absolutely a master of leckater. In the present cricket, I am saying this man is no one can turn the ball as much as this man as far as the leckater is concerned. Sumit, very difficult when he bowls that line. This I am Karthik, little master, and did be shuffled across the line of the day. You know exactly, this is right strategy from Karthik. You know exactly, Sumit is bowling leg cutter, so he's little bit shuffled across the line of the day so that he can reach that the turn of the delivery, and he plays it down to square leg region for a single. 12 for the loss of 2 wickets. Sumit bowls, beautiful ball. That was a very lucky that Sadakutta is just missing that leg stump. Almost it's very close to the leg stump of Sadakutta.
And here is Sumit bowling away from us. Right arm over the wicket. Quicker one. This time looks like the ball little bit, I think outside the line of off stump. The impact might be little bit outside the line of off stump, saving the batsman from the leg before wicket. 13 for the loss of 2 wicket. Perfect delivery, isn't it? It's not a huge leg cutter in that time from Sumit. He's bowled a straighter and faster one. Sometimes he mixing up the delivery very well. Oh, off cutter. And Karthik is managed very well, isn't it? It's very good to see that how well Karthik is adjusting that one, because Karthik thought it might be leg cutter, but quickly realizing that ball is coming into him with some extra bounce, and Karthik did a great job to adjusting his strokes to pick the single for that. Loose delivery, hits that one down to square leg, but protection has been given in the deep, so that batsman have to settle for the single. With that single, Skobana moves on to 15 for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. 3 which is completed. So good going here for Kodikal challengers. Of course, they're taking a challenge from Kunjaturu, New Star Kunjaturu. 15 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 5 runs per over. The 13 boundaries and 4 sixes so far in this tournament. That shows it's not an easy pitch to bat on, and even bowlers has got advantages. Even batters also got advantages. Altogether, it was a very competitive pitch today. Doesn't look like it's going to be dominated by the batters. Doesn't look like it is dominated by the bowler. So this is a very good competitive pitch which is made here for this particular tournament. More than the pitch, I think. Especially when you're coming to the underarm cricket, I think the ball which is going to be a factor, and of course the Dunlop stage 1, which is the ball which is used for this particular tournament, which is not pretty hard, but not pretty soft, but it is in a medium. This time it looks like it's going to be the bowler missing the ball completely from his hand. Going for the second, Sadakutta is in trouble. Sadakutta is in trouble and is back into pavilion. This is absolutely a disappointment dismissal here for Sadakutta. So once it looks like it's going to be a very important for team Kunjaturu to get the partnership going, but partnership once again broken because of total misjudgment of the second run. Karthik asking for the second run. Sadakutta responded for that one, but I think it's too late for Sadakutta to reach his home in the striker's end. All we can see that the wickets are tumbling here for New Star Kunjaturu. They lost the wicket number 3 at a score of 16. The run rate is not so good. Even the wickets are falling, but the Kodikal challengers are doing a fantastic job after winning the toss, selected to field first, everything going in their favour. Chetan is the bowler. Will go into bowl the second delivery of this over. So the time is exactly 2 o'clock in the afternoon, a bright sunny afternoon. There's a good number of crowds today in the morning itself. You can see some number of crowds enjoying the game of cricket here in UCG cricket ground. The left-hand batsman is on strike now. It's a new batter. Chetan. Balls a plum, absolutely plum. This is a Yorker line delivery. Unplayable delivery, and Latif has got no answer to that particular delivery. It's a huge wicket for challenge Kodikal. Have a look at that one replay. No way umpire to missing his decision to raise his finger. Absolutely flum. Have a look at it on a replay. One more action. The bowling action is so good from Chetan. Have a look at that delivery. Absolutely plum, isn't it? Unplayable Yorker line delivery. Very difficult in underarm cricket to bowl that kind of deliveries, Yorker line delivery. We can usually see you can see it in international cricket, no overarm cricket. There's regular Yorker line deliveries because high arm action, but the low arm action, it's an underarm action. It's not so easy to bowl the Yorker line delivery. You need to be very accurate, because any misjudgment of Yorker line delivery, line and length will going to produce the full toss delivery for the batters. So that considering all these factors, I think bowling Yorker line delivery is almost it's going to be very difficult in underarm cricket. 16 for the loss of 4 wicket. Chetan bowls this time. Suraj
missed it completely from his bat. By call by umpire. Wicketkeeper Kiran missed it. Jojo, the Suraj, the nickname of Jojo, is came into middle. 17 for the loss of 4 wicket. Lot of responsibility in the shoulder of Karthik and Suraj Jojo to anchor the innings to get some partnership. Nicely placed, beautiful shot. That was a really imperious cover right there from Karthik. The little mouth was so good in that shot. They're coming for the third, and they made it quite easily. Now they're going for the fourth. No, they're not going the fourth. Not going for the fourth. There is appealing for the run out now. Looks like might be it's a close one. So Karthik is wanted the 4th runs here, but Dhanraj is uprooted the stumps, but wait and see whether the batsman Karthik is safe or not, because he wanted the 4th run after completing 3 valuable runs. He looking for the 4th run. By going for the 4th run, I think as a throw which is coming from the fielder, it came to the hands of the bowler, and wait and see whether when bowler is completes the job, whether the Karthik is in or out. But we need to see that. We need to see that. Umpire Arish Padil, they need to give the addition here as a 3rd umpire. The batsman is safe. Karthik is not out call from umpire Arish Padil. And now it's the time for Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you very much. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 3rd अंपायर और इस बार गेंद को ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन बल्लेबाज मिल चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। न्यू स्टार कुंजतूर इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ कोडिकल चैलेंजर्स के खिलाफ। जहां तक सवाल है, कोडिकल चैलेंजर्स ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन सिर्फ 1 रन यहाँ पर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। कार्तिक और सूरज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। कार्तिक ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, सूरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और गेंदबाजी इस वक्त 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed, 22 for the loss of 4 wicket for New Star Kunjatur. And still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in the innings। 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में न्यू स्टार कुंजतूर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Meantime, the match number 6 is now coming up between Red Wings versus Durga Konchadi, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign of the official chart. तो इस बीच reverse shot perfectly struck this time by Karthik, finds the gap as well, he gets at least couple for that। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेला, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, फैंटास्टिक इम्प्रोवाइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट 3 runs फॉर दैट स्ट्रोक। छोटे कद के खिलाड़ी कार्तिक लेकिन काफी प्रतिभाशाली और यहाँ पर खूबसूरती के साथ इस गेंद को उन्होंने खेला था विद ट्विस्टेड बैट 3 रनों के लिए और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, प्लम इन फ्रंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लाइन पर टिप्पा खाई, मिड स्टंप को केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद, लेग कटर गेंद थी और आखिरकार इस गेंद पर थोड़ी सी सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई
एक विकेट यहाँ पर गिर चुका है 25 for 5. Have a look at this in the replay. Absolutely plumb in front. There is no doubt about that. और पांचवा विकेट यहाँ पर गिर चुका है 25 for 5 now. परवेज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए सुमित दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद की लाइन को भापते हुए और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. सुमित जिन्होंने पिछले मैच में एक घातक गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था. 2 ओवर में सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए 1 मीटर रखते हुए 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था और इस मैच में भी 1 विकेट अब तक वो प्राप्त कर चुके हैं. रिवर्स शॉट गेंद को खेला कार्तिक ने, लेकिन इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड. बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. कार्तिक काफी तेज और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. और सुमित एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से दूर की ओर निकली, दूरी पर निकली. भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई और आखिरकार इस गेंद पर कार्तिक बाल बचते हुए स्कोर रुक चुका है 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर. बेहतरीन गेंदबाजी सुमित द्वारा और तैयार इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक एक बार फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को नो पॉइंट मिड विकेट. इनफैक्ट गेट्स एन सिंगल फॉर द स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 29 for 5 overs have been bowled and now just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में न्यू स्टार कुंजोदुर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. So last over starts in their innings and the bowler brought into the attack is रोहित starts the fresh proceedings from that side end और कार्तिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और ओवर की पहली गेंद लेकर रोहित दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए पहली गेंद. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि अंतिम क्षण में लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे गेंद को फील्ड कर लिया. रन से नहीं मिलेगा. कार्तिक जो कि बार बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयत्न करते हैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर को तैनात किया गया है. इस बार इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 30 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद off the toe just wide of the bowler at the last moment and in fact they come back for the second and get it completed last. गेंद निकली थी फील्डर की गेंदबाज के बाईं ओर से अंतिम क्षण में अपने हाथ जरूर उड़ाए लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर रहा और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. रोहित एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए परवेज सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ कॉपी बुक स्ट्राइक स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स.
और यहाँ पर कार्तिक का कुछ हद तक थके हुए नजर आते हुए यहाँ पर, और इस वक्त कुछ हद तक राहत भरी सांसें इस वक्त लेते हुए और अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार सामना करने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया लेकिन मिड विकेट पर एक कैच छूट चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो स्ट्रेट गेंद सीधे पहुंची थी फ्लैटर वर्जन पर, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल, और जीवदान के साथ साथ कार्तिक यहां पर 2 रन और प्राप्त कर चुके हैं। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी का। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। कार्तिक का सामना करते हुए रोहित की गेंदों का। ये गेंद इस बार चूके और इस बार बैकअप नहीं, ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन, इसमें और तीसरा रन मिल सकता है। यहाँ पर फील्डर दौड़ बनाया, तीसरा रन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कार्तिक काफी थके मांदे गिर चुके हैं, लेकिन 2 रन जरूर मिले तोहफे के रूप में। आसान से स्टंप आउट का मौका था, विकेट कीपर ने गंवाई, और ओवर थ्रो के रूप में 2 रन यहाँ पर कार्तिक पूर्ण कर चुके हैं। और कार्तिक यहाँ पर मैदान पर लेटे हुए काफी थके मांदे। अंपायर और दूसरे टीम के अन्य टीम के खिलाड़ी उनका उपचार यहां पर करते हुए काफी थके हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर मैदान पर लेटे हुए, और उनकी शुश्रूषा इस वक्त करते हुए खिलाड़ी जो कि कोडिकल चैलेंजर्स के। तो the innings is up. They finished with 37 for the loss of 6 wickets for New Star Kunjotu. 38 the target for Kodigel Challengers in 6 overs. They have to score for victory with a run rate of exactly 6.33 runs per over. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them 38 they have to score, and let's see can they read the target or not. Meantime, their inning starts with just shot while और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब कोडिकल चैलेंजर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद। 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ। ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್। ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ। ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್। ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ। ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್। ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ। ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್। ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು तो इस वक्त पारी की शुरुआत होती है। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद पहुंची सिली मिडाउन पर, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के किरण अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं और गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं धर्मा, जबकि स्ट्राइक के इस वक्त लेने के लिए तैयार पृथ्वी। और पारी इस वक्त कोडिकल चैलेंजर्स की शुरू हो चुकी है। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार ऑफ साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल। ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट, इन फैक्ट चेस फॉर द फील्डर, he gets enough just inside defense and because of that the batsman got couple of runs for that stroke। और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ। 2 रन बल्लेबाज इस बीच बटोरने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार धर्मा, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, oh absolutely terrific, this is an outstanding delivery, just caught the lead of the batsman, the ball passed between his bat and leg and stuck to his off stump, bills are disturbed and this is an absolutely fantastic delivery from the bowler। have a look at this in the replay, बिल्कुल सही गेंद, देखिए किस तरीके से एक्स्ट्रा क्विकर पेस के साथ गेंद आई थी और बल्ले और पैर को वंचित करती हुई दोनों के बीच से निकल गई, सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर टकराते हुए गिल्लियां उड़कर गिरते हुए बिल्स। और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज पृथ्वी और 2 रन बनाकर और पहला विकेट यहां पर खो चुका है कोडिकल चैलेंजर्स 3 रनों के ऊपर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। Next match, Red Wings will take over Durga Kunchadi in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So back to this game, match number 5 of United Trophy 2023 is now going on here, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त धर्मा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और धनराज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट धनराज ने खेलना चाहा और नहीं खेल पाए, गेंद पहुंची सीधे
सीधे सीधे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धर्मा दाहिने हाथ ऊपर था विकेट। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज धनराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त जरूरत है कोडिकल चैलेंजर्स को अगर उन्हें 38 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया धनराज ने, गेंदबाज के सिर के ऊपर से रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर धर्मा इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिलेगा और इसी के साथ ओवर नंबर पहले के समाप्त हो चुके हैं। बेहतरीन ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका। 5 रन सिर्फ धर्मा ने प्रदान किए इस ओवर में और 38 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद कोडिकल चैलेंजर्स छोड़ चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Just chasing the victory target of 38 in 6 overs, Kodigal Challengers made a mixed start. In fact, 5 runs they managed to score after first over for losing a single wicket. I request the captain of Red Wings please to be reported here. Photos. So back to this game. Second over starts from परवेज और धनराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट चलती हुई, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। एक खिलाड़ी वाइड लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी इस वक्त डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के दरमियान तैनात इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास। और परवेज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए चिप किया, धनराज ने स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket at the start of this second over। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए परवेज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर रुक चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, एक बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त ज़रूरत है कोडिकल चैलेंजर्स को अगर उन्हें 38 रनों के लक्ष्य तक पहुँचना है तो। और परवेज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। उन्नी कृष्णन विकेट कीपर इस वक्त कीपिंग इस वक्त करते हुए विकेटों के पीछे। और इस बीच परवेज इस वक्त रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धनराज के लिए ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका है दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी और एक बार फिर से परवेज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, प्लम, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, उनके पैर पर गेंद टकराई, लाइन पर टिप्पा खाया और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है तो किरण आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए और 8 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है यहाँ पर कोडिकल चैलेंजर्स। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
एक प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट जिसे कहा जाता है यहाँ पर खेला जाता हुआ, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए, और रियल एस्टेट ग्रुप्स रजिस्टर्ड विजय मैंगलोर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है गरीब बच्चों को जो कि शिक्षा दिलाने के लिए धनराशि एकत्रित करने के लिए, और निस्संदेह एक बेहतरीन काम वो इस क्रिकेट प्रतियोगिता के जरिए यहाँ पर करते हुए काबिल तारीफ कहना पड़ेगा। और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार बेहतरीन गेंद थी, इस वक्त शॉटर्स को फाइन लेग की दिशा में एक रन मिलेगा, और इस बीच बाइक का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 9 runs on the board, 2 wicket loss, 29 to get in remaining 4 overs with a required rate of exactly 7.25 runs per over। मैच का जहां तक सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और बराबर का टक्कर यहां पर जारी है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। दोपहर के 2:30 यहां पर बज चुके हैं। धूप का प्रकोप अभी भी तीव्र, मैदान पर भीषण गर्मी का एहसास अभी भी दर्शक और खिलाड़ी करते हुए, और इस भीषण गर्मी तले इस वक्त इस बेहतरीन श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के नाम पर बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश, बादलों का नामो निशान नहीं, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए धर्मा, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर उन्नी कृष्णन। तो 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और 2 ओवर की खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। धर्मा ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है राजेश, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धर्मा की गेंदों का। कार्तिक इस वक्त लगभग काफ़ी थके मांदे होकर बल्लेबाजी करने के बाद जो वहाँ पर प्लेयर्स डगआउट पे गए थे, अब फील्ड पर उतरते हुए, अब तक उनके बदले में सब्स्टिट्यूट फील्डर ने क्षेत्र रक्षण किया था, अब यहाँ पर वो लौटते हुए फील्ड पर, और यहाँ पर खेल जो कि आगे बढ़ता हुआ। दोनों अंपायर्स इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के नियम के बारे में। और इस बीच दोनों अंपायर अपने स्वस्थान पर लौटते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर धर्मा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, जबकि सामना करने के लिए तैयार राजेश। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन मिलेगा, 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन चाहिए अब विजय के लिए, जबकि 23 गेंदें उनकी पारी में बाकी। 28 runs they have to score for victory in remaining 23 deliveries। और गेंदबाज धर्मा एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, स्कोर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर मौजूद डीप कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और कुल मिलाकर 22 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और 27 रन और चाहिए विजय के लिए। और इस बीच धर्मा अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। Again sweep किया खूबसूरती के साथ into the mid wicket area, in fact he gets in a single, in fact they come back for the second and get it comfortably at last। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 रनों की और दरकार, 21 गेंदें बाकी, और मैच अभी भी बराबरी पर गुजरता हुआ।
और गेंदबाज धर्मा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। राजेश एक बार फिर से सामना करते हुए धर्मा की गेंदों का, फील्डिंग का मुआयना यहां पर करते हुए, और अब तैयार राजेश की, माफ कीजिए, धर्मा की गेंदों का सामना करने के लिए राजेश। रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन किया, लेकिन सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा। दीपा बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती हुई, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। 2 गेंदें अब बाकी हैं, और धनराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धर्मा की गेंदों का। धर्मा दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार धनराज का स्ट्रोक स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े धनराज थोड़ी देरी से, और यहाँ पर थ्रो में ओवर थ्रो हो चुका है, और ओवर थ्रो के रूप में तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े धनराज। 3 रन मिलेगा जरूर रहा, तो 3 रन यहां पर पूर्ण करते हुए जैसे तैसे रन्स बने इतना काफी है उनके लिए, और यहां पर 3 रन बटोर चुके हैं, 3 बहुमूल्य रन कहना पड़ेगा, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बोर्ड अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट अ बॉल टू गो इन दिस ओवर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, 21 रन चाहिए। तो 19 गेंदें बाकी हैं और 21 रन और चाहिए विजय के लिए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राजेश, जबकि गेंदबाज धर्मा अपनी कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट विकेट कीपर उन्नी कृष्णन इस वक्त करते हुए, और राजेश इस वक्त एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद धर्मा की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, धर्मा की ये गेंद, इस बीच रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टंप मेड बाय द विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। जैसे रिवर्स शॉट खेलना चाहा, क्रीज से कुछ इंच बाहर निकले, और जैसे ही गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, विकेट कीपर उन्नी कृष्ण ने तेजी के साथ विकेट झटका दिया, तो तीसरा विकेट गिर चुका है, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद still the equal battle is now continued. 17 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs scored by Codical Challengers. 21 more runs now they have to score for victory in remaining 18 dealers, that means in 3 overs with a required rate of 7 runs per over. और जहां तक विजय का सवाल है, अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, struggle time continues here for Codical Challenger. Looks like once it's a 38 is a required run for the victory for Codical Challengers. It's going to be an easy task, but the bowlers of New Star Kunjat are making it hard for the opposition by bowling some good line and length. Not only they bowl some good line and length, but they're able to pick 3 valuable wickets of team Codical Challengers. Rajesh is the batsman just back into pivot in the previous over, the last delivery of the previous over. This time Raj bowlers back drive and 1 more wicket. 1 more wicket is back into pavilion. Sandeep, the experienced campaigner, is out of the crease. Bowlers back drive, hardly hit that one back to bowler. Have a look at that one replay. What the things which is went wrong in the non-striker's hand. Batsman out of the crease. Dhanraj drives that one straight to the hands of bowler, and bowler really has got a presence of mind, seeing that batsman Sandeep is out of the crease, and he just uprooted the stumps and got a wicket in the form of run out. 17 for the loss of 4 wicket. Sandeep on second disappointment finish for him. Sandeep is back into pavilion. It's definitely going to be a big blow for Codical Challengers, losing Sandeep, the experienced campaigner, who can be a little bit handy in this condition. Second run out actually. Sandeep in the previous match also is back into pavilion in the form of run out, and now in this match also he back into pavilion in the form of run out. New Star Kunjattur strongly back into this game. Right arm over the wicket, improvisation there from Danu down to backward point region. The fielder is in just outside the ring.
And before the fielder to pick that one, ample time for the batter to complete the single. And the scoreboard numbers on 18 for the loss of 4 wicket, 20 required, 16 ball remaining. Parvez bowling from the far end, right arm over the wicket. Have a look at that, the wicket keeping there from Krishnan. Still, he's been outstanding behind the wicket. Such a quick work behind the stump. Just in a blink of eyes, he completes the job and uprooted the stump. But no damage done. Rohit is safe in the crease, so that one more dotted delivery. 18 for the loss of 4 wicket. Parvez from the Rohan Corporation end, right arm over the wicket. Rohit got the placement right in that occasion by placing the ball down to backward point region, and with that single, scoreboard was on to 19 for the loss of 4 wicket. That means half of the job which is completed. They have to complete another half of the job. 19 to get from 14 balls. Parvez has bowled him too much across the line of the delivery, looking for the improvisation, but he missing the line completely, and ball hits the stump. Dhanraj back into pavilion. It's 19 for the loss of 5 wicket. Just I want to see it in a replay. What really went wrong? Looks like Dhanraj is too much across. Have a look at that one. He wanted to look for the improvisation, but ball just passing between his bat and the pad. Between that ball is passes, hitting the stumps. The wicket number 5 which is back into pavilion. It's 19 for the loss of 5 wicket. So next match, Durga Konchadi versus Red Wings. And captain of Durga Konchadi won the toss and elected to field first against Red Wings Kunjat Bail. Now it's new star Kunjaturu looking in a commanding position in this match against Kodikal Challengers. Parvez again bowling from the far end. Bowled him, one more wicket is gone. Unbelievable bowling performance here from Parvez. Have a look at that, the pace, the quickness of the ball. No chance at all for the batsman to survive. Absolutely beaten by the pace. What a fantastic bowling display here from Parvez. 2 wickets. The bowled out. Dhanraj went for the sweep shot, is gone. Now it's a batsman looking for the expansive drive. No time at all to react to that one. Absolutely fantastic bowling display from Parvez. So now looks like Kodikal Challengers little bit. Correction, Kodikal Challengers are looking in a deep trouble. "12 balls, 19 runs required for the victory." All looks like it's going to be a little bit difficult task, but not impossible in cricket. Having Rohit in other end, Chetan, the experienced campaigner in non-strikers end, and wait and see. Nikhil, little correction. Vikil is the batsman, is in non-strikers end. Chetan is back into pavilion in the previous over, last delivery. The bowling change from the commentary box end. Ajit brought into attack. Ajit right arm round the wicket. This time lofted. Didn't got enough timing. Long on fielder is in a position and he takes a catch. The wickets are tumbling like a pack of cards. It's a 19 for the loss of 7 wicket. I think the last 3 deliveries, the 3 wickets fallen. 2 bowled out, 1 catch out. The wickets are really tumbling in a hurry of team Kodikal Challengers against disciplined bowling performance by the bowlers of new star Kunjaturu. So new batsman in, is walking towards the middle. Sumit as a number 9 batsman. Sumit bowled well, but his team is in deep trouble. He need to bat well now. Beautifully bowled, angling across and round the wicket, so that ball is just going outside the line of off time with some extra pace and extra turn. And wicketkeeper behind the stump once again, Unikrishnan been outstanding today behind the stump. Driven nicely by Sumit as per the merit of that delivery. He plays it beautifully down to long off region for a single. And with the single, scoreboard moves on to 20 for the loss of 7 wicket in the over number 4. 5 is in progress.
So target is looking tougher and stiffer. Bowler's back drive. Ajit on his follow through fields the ball. Each and every dot ball will going to create the problem for team Codical Challengers to get that 38 runs. 18 more runs required for the victory, but they got only 8 deliveries to spare. One big shot which is badly required. Ajit bowls, lovely delivery, beautifully bowled. Again the pace and the line, it's so impressive here from Ajit. Even he bowling around the wicket, but his ball outside the line of off stump so well with the pace. And again 18 more runs required for the victory. Ajit driven, this time opportunity of run out, and it's too late. So quick run taken there, but one more good over is completed here by Ajit. Just like their partner did a great job, Dharma, Parvez, and now Ajit joining the party. And a fantastic bowling performance continues here from the bowlers of team New Star Kunjatur. Now last over remaining, 6 ball, 17 more runs required for the victory. It's a big ask but not impossible. Just have a look at the bowling figure of the bowler Dharma. 2 overs, 13 runs and 2 wicket. But the bowling figure of our Parvez is more impressive, isn't it? 2 overs, no maiden, 5 runs and 3 wickets. Absolutely, it's a match-winning performance, bowling performance from Parvez. Ajit, 1 over, 2 run, 1 wicket. That's why the problem for Codical Challengers now in the final over. They wanted to win the next round. They have to get another 17 runs to win this match. Uni Krishnan, he got a ball in his hand to bowl that last over. He's depending that 17 runs. And Sumit and Vikil are the batters out there in the middle. Vikil is in striker's hand. And for him, one at deep long on, one at deep long off. And the backward point fielder going back to deep backward point. Now backward point coming inside the ring. And cover point fielder going back to deep cover point. And cover point, short cover point coming towards a short extra cover. Short fine leg is there. One is deep square leg in behind the square. One at the deep mid wicket and deep long on. Again, driven that one right in the gap. They're running hard. Can they come back for the second? Yes, they're coming back for the second as well. Sadakutta is charging from the deep in the square leg, but not quite enough to stop the couple of runs here from these two batters. So with that couple of runs, Kobar Namuzan to 23. That means the 15 more runs required for the victory in remaining 5 balls. Uni Krishnan bowls. There is that one! That's going to be a catch! Oh my goodness. Once it looks like the batsman Nikhil hoisting it over Vikil. Looks like it's going to be a maximum. Unfortunately, that ball is landed safe to the hands of the fielder Karthik, who is almost standing right off Rowan Corporation, the flex. Almost that ball just missing that flex. And the fielder taken that comfortable catch. That stroke, if you're able to get the distance, it's going to be a more interesting game. But it's a catch. So that now equation looks to be a little bit difficult here. 4 balls remaining, 15 runs required for the victory. The now new batsman just walking towards the middle. Prajwal. Of course, Prajwal, you cannot underestimate the tail-ended batters in a present cricket. Each and every batsman that got a potential of dispatching the big shots. So the Uni Krishnan knows that he's an experienced campaigner. You cannot underestimate 15 to get from 4 balls. Coming down the track, missing it completely. Wicket keeper also missed it from his hand, so that both the batsmen crossed off for a single. With that single, Coburn was under 24 for the loss of 8 wicket in the over number. Last is in progress. Uni bowls, this time lofted. Again the opportunity for the mid-wicket fielder Suraj getting them some catching practice down at mid-wicket. And again the short pitch delivery. Uni Krishnan maybe is bowling for the tail-enders. If it's a top order batsman, it might be the opportunity for the dispatch that one out of the park. So 2 wickets in 2 deliveries for Uni Krishnan. That means he's on no, it's a broken the previous delivery, the dotted delivery. So 2 wickets totally in this over. Now 2 balls remaining, 14 runs required for the victory. 2 sixes also not going to help team Codical Challengers to win this match, unless bowler not to do any mistake by bowling wides and no balls. It's going to be the formalities left in this game for Nivastar Kunjatur to qualify for the next round. So as for the time,
there fails to complete the quotas, so that one fielder inside the ring. White call by umpire. Now 13 to get. 12 will go into tie the match. If the match will go into tie, that will go into win. Of course, Kunjattur. 13 is badly required. Top edge opportunity here for the fielder to run back and taken a good catch. 3 wickets in that over, and that's it. Bundle out. The first all out of this tournament. Second all out of this tournament, in fact. Sarvagni ನಮ್ hitters, ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ they're also bundled out. Now it's a time for to announce the man of the match award. So thank you very much. So now it's a time to announce the man of the match award of this prestigious United Trophy 2023 of this particular match. The man of the match which is goes to, it's a bowler's game, because of course the team New Star Kunjattur depended a small total. If you wanted to depend a small total, bowler need to contribute, and bowler one who really contributed very well from the bowling, it's none other than Farvez of New Star Kunjattur becomes the man of the match for his outstanding bowling figure of 2 overs, no maiden, 5 runs and 3 wickets, and he scored 4 valuable runs as well. I request Farvez to go and collect your man of the match. Of course, Karthik has also played a very good innings, but I think it's a bowler's game, and 3 wickets in just 5 runs, so that Farvez is judged as the man of the match. ಹಾಗೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ memento for the captain of Kodikal Challengers for this prestigious United Trophy. Thank you very much, Kodikal Challengers, for your representation for this tournament. ಕೋಡಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಫರ್ವೀಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಫರ್ವೀಸ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Dhanyawad Satish. So the match starts now between Durga Kunchadi versus Red Wings Kunjit Bail, and Red Wings Kunjit Bail is now going to bat first. And their openers are the crease, and the first ball of the match is now coming up from the hands of the bowler. So 6 overs per start to be played. Sixth match of United Trophy 2023 is now going to start, and the first power play over is now going to start by the bowler. Ajay starts the fresh proceedings from that side end, and the striker is Santosh. Meantime, the non-striker is Kishore. First ball, driven that one into the gap as well. Square of the wicket. He gets at least couple for that. Or यहाँ पर 2 run. Oh, that might be a disaster there if the throw was directed to the stumps at the last moment. But the throw went just wide of the stumps, and because of that, the batsman completed a couple run very safely in the end. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका, और 2 रन बिलाके से नुकसान के रेड विंग्स को जत पर जोड़ चुका है। और इस बीच गेंदबाज अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। अजय एक बार फिर से तैयार, इस बार इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और गेंद पैर से लगकर जब तक फील्ड ऑफ फॉरवर्ड शॉट लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त गेंदबाज अजय करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करते हुए। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। अजय दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता था, सबसे ऊपर निशाना टकरा था लेकिन निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है रेड विंग्स कुंजित बैल के लिए, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत, और गेंदबाज अजय एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। संतोष के लिए ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, अंतिम क्षण में चूके गेंद लगभग विकेटों पर गेंद टकरा चुकी है, बिल से डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन बल्लेबाज संतोष इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। अपील को नकार दिया अंपायर ने सही तरीके से, कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए, और स्कोर रुक चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। पहला पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा, और अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इस बार गेंद को खेल दिया इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, 1 रन मिलेगा, नो बॉल का भी इशारा, और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और 2 रन कुल मिलाकर उनके खाते में जुड़ जाएंगे। 1 रन बल्ले से, 1 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में, नो बॉल के रूप में, और 7 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। फ्री हिट इशारा करते हुए इस वक्त अंपायर, और फ्री हिट गेंद देकर इस वक्त अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच, और 1 रन दौड़कर पूर्ण करने में सफल। वाइड का भी इशारा हो चुका है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद को ठीक तरह से विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए, जब तक दोबारा फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे। 2 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाता है, यह गेंद उछाला एंड फील्ड क्लियर करते हुए लॉन्ग ऑन पर, और बेहतर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ स्टॉप मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर। अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को अंतिम क्षण में गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को इस वक्त रोका था, देखिए एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, just inside the fence to stop the ball, and this is an absolutely outstanding fielding performance came from the long on fielder। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ अमित जो फील्डर थे इस बार इलेक्शन से बाहर स्वीप किया। इस वक्त खूबसूरती के साथ मिड विकेट सीमा रेखा की दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। Swept well and because of that he's got a boundary for that, और इस चौके के साथ देखिए किस तरीके से गेंद को स्वीप किया था, और गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच खाली गैप चुनते हुए खेल दिया, और सीमा रेखा को के बाहर गेंद को भेजने में सफल।
4 रनों के लिए 15 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट मेड बाय द बैट्समैन ऑफ रेड विंग्स कुंजत बल 15 रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट ओवर एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 5 ओवर्स रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और पहले पावर प्ले ओवर में पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा चुके हैं यहाँ पर दोनों आरंभिक बल्लेबाज रेड विंग्स को बल के 15 रन बटोर चुके हैं। दूसरा ओवर राउंड की पारी का शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और भगवान इस वक्त सामना गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर के लिए एक फील्डर डीप बैकवर्ड स्कोर लेग ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद है और कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार भगवान दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर के लिए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ लेग बाय का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 16 विदाउट लॉस इन द फेस ऑफ this time leg by declared by umpire, a single run added to the total and with that single run the scoreboard moving up to 16 without loss at the start of the second over। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई, 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर रह रहा, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट गली शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन और ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट, ही वांटेड अ रन इन फैक्ट एंड एट द लास्ट मोमेंट ही इज बैक टू हिज क्रीज वेरी सेफली। हालांकि 2-3 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे रन लेने के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद वहां पर कवर पॉइंट पर फीड हो चुकी है, अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और इस वजह से बल्लेबाज के लिए कोई क्षति नहीं, स्कोर रुक चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाते हुए लंबन सीमा रेखा की और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब सीमा रेखा के अंदर जब तक रोकते और थ्रो करते फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, स्विंग किया था इस वक्त लॉन्ग और मिड विकेट के बीच खाली क्षेत्र चुनते हुए बल्लेबाज संतोष ने और 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका इन 2 रनों के साथ। अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, जस्ट अ सिंगल और उस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रन। सिर्फ 4 रन इस ओवर में अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज भगवान, एक बेहतर ओवर उनका साबित होता हुआ। 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में और तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट किशोर के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक पे ज्यादा रफ्तार नहीं, लेकिन वहां पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। वहां पर गेंद को रोक सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में स्लोपी फील्डिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ज्यादा उन्होंने प्रयत्न नहीं किया और गेंद उनके हाथों को वंचित करती हुई सीधे डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के सीढ़ियों पर जाकर टकराती हुई और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज 23 विदाउट लॉस, जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। भगवान एक बार फिर से तैयार, ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 24 runs on the board, yet to lose on a wicket. This is an absolutely fantastic progress here now for Red Wings Kunjat Bail. 24 runs they scored. First over cost 15 runs. Second over 9 runs came from second over. And after 2 overs they are looking in a commanding situation. It's 24 for none after completion of 2 overs. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में वो कितने रन और बटोर पाते हैं। Next match, Team Matrix will take over New Star Kunjatur. And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So back to this game, third over starts in the innings. तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त धनुष गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार किशोर, जो कि इस वक्त
एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी टर्न लेकर बाहर की ओर निकलती हुई अंतिम क्षण में गेंद को ड्राइव करना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 24 रन। अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिला। इससे पहले कि शॉर्ट मिड विकेट फील्डर गेंद को फील्ड करे और 1 रन के साथ द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 25 विदाउट लॉस। Slowly and steadily, this opening partnership is now building up here for Red Wings कुंजत बैल। और जहां तक सवाल है इस वक्त ये साझेदारी काफ़ी हद तक समस्याएं पैदा कर चुका है दुर्गा कोचाड़ी के कप्तान के लिए और इस आरंभिक जोड़ी को तोड़ना इस वक्त बेहद ज़रूरी बन चुका है उनके गेंदबाजों को, अगर उन्हें इस मैच में कम बैक करना है तो। फील्डिंग में जमावट चलते हुए और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और जहाँ तक सवाल है इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज का, तो संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी और इज गॉन दिस टाइम प्लम इन फ्रंट। द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, स्ट्रक टू हिज फ्रंट लेग और गेंद सीधे मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर आते हुए और अंपायर ने कुछ सोच विचार करने के बाद अपनी उंगली यहां पर उठा दी। पहला विकेट गिर चुका है, सो एट लास्ट द बाउलर्स ऑफ दुर्गा कोचाड़ी गॉट द ब्रेक थ्रू एंड द मैन संतोष डिपार्ट्स एंड नाउ रेड विंग्स कुंजत बैल lose their first wicket. It's 25 for 1. So number 3 batsman is now comes out to the middle for Red Wings कुंजत बैल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज धनुष की ओर की अगली गेंद का दाहिने हाथों पर द विकेट है। ये गेंद टॉप एज, मौका इस वक्त गेंदबाज के लिए है और एक और विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई और फॉलो थ्रू में अपनी दाईं ओर जाते हुए गेंदबाज धनुष ने इस कैच को लपका अपने फॉलो थ्रू में। दूसरा विकेट गिर चुका है, 0 पर आउट होकर बल्लेबाज पेलियल वापस लौटते हुए। जमशीर is out for golden duck in his very first delivery and a second wicket loss for Red Wings Kunjat Bail, and now they are 25 for 2. At one stage they were 25 without loss and they lost their 2 consecutive wickets in the last 2 consecutive deliveries, and because of that now they are 25 for 2 now. तो 2 गेंदों में 2 विकेट लगातार धनुष प्राप्त कर चुके हैं, हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार है और देखना यह है कि अपने अगली गेंद पर धनुष जो गेंदबाज है अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। तो नए बल्लेबाज इस वक्त हौले हौले अपने बैटिंग मार्क की ओर इस वक्त बढ़ते हुए और अश्विन और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धनुष की गेंदों का। तो धनुष रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी हैट्रिक गेंद लेकर तैयार और अश्विन इस वक्त सामना करते हुए देखना है कि अश्विन धनुष की हैट्रिक को इस गेंद पर रोक पाते हैं या नहीं। तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार ड्राइव किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट फॉर अ रन और यहां पर हैट्रिक का मौका जा चुका है और स्कोर रुक चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से धनुष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार पैडल स्वीप किया खूबसूरती के साथ, शॉर्ट फाइन लेग पर अपने पैरों के जरिए गेंद को जब तक रोकते बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सो फैंटास्टिक ओवर, the first fantastic over in Durga Konchadi's point of view came to an end. Just 2 runs came from it from Dhanush and after 3 overs the bowlers of Durga Konchadi come back a little bit after being conceding 24 in the first 2 overs. They come back very well in the third over. Just Dhanush conceded just 2 runs and now they are
26 for the loss of 2 wicket after the completion of 2 overs. 3 overs remaining in the innings. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आगे का अखोदेकार सुनाने के लिए सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So 26 for the loss of 2 wickets. It's good going actually for the Red Wings. Even they lost 2 wickets in the previous overs. Dhanush is the one who really put some break on the run rate of Red Wings. Otherwise, they're looking towards a huge total. And Dhanush, once again, being the young and very talented bowler, once again is justifying that is definitely going to be one of the future bowler for Red Wing, for Konchadi. The first ball, nicely placed it down to a short backward pointage and fumble from the fielder. And again, the fielding which is not up to the mark. This time, Bejai little bit fumbled where he was standing in the backward pointage and just quickly was going back, but not really able to collect the ball properly, and got opportunity for the batter to complete the couple of runs. Scoreboard was on to 28 for the loss of 2 wicket. Again, the bowler Bhagwan, second time in this over. Right arm over the wicket to Ashwin. Ashwin tries that one nicely down to deep, extra coverage and for a easy single. There is a fielder in the deep, Ajay. So that batsman have to settle for the single. It's not Ajay. Little bit correction. The extra cover fielder fields the ball and returns the ball to the hands of wicket keeper. Ample time for the batter to complete the single. 29 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. So Red Wings playing their first match against team Durga Konchadi. Durga Konchadi, they won their first match in their morning. So against Sarvagni Urwa. Bhagwan, oh, beautiful delivery, absolutely perfect one. Just defeating the defense of Kishore. Is going for the drive, but beaten by the turn of the delivery. Of course, he bowled a leg cutter, but it's incoming delivery for the left-hand batter. And Kishore left the gap between the bat and pad, and he best just pays a penalty for that. So 29 for the loss of 3 wicket. 1 more wicket is back into pavilion slowly and steadily. And the fielders of the bowlers of Konchadi, they are really back into this game by picking up wickets. Ashraf is a new batsman in. The Bhagwan bowled a beauty of delivery in the previous one, which is nipped back into the batsman. And Ashraf is going to be the batter now, will going to face next delivery. Bhagwan. This time leg cutter, but a little bit going down the leg stump, so that batsman umpire Mohan Iyadi, rightly so, no hesitation in his mind to signal the wide. With that wide, the scoreboard numbers on to 30 on the board. Bhagwan. Again going for the mighty stroke. Again the wicket keeper behind the stump. A little bit fumbled. No damage done. It's a good comeback here by Bhagwan and as well as Dhanush. Of course, after getting some inspiration from the bowling of Dhanush, Bhagwan continues the bowling performance very well in this over. Bhagwan. Beautiful leg cutter. Absolutely fantastic one. This is a really good one there from Bhagwan. What a delivery, what a leg cutter that one. Absolutely, the batsman Ashraf is going for the mighty stroke. Beaten by the turn of the delivery. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Bhagwan balls full toss delivery, going for the reverse stroke and didn't got enough bat onto that. Just a single for Ashraf. One more good over which is completed. Very good comeback here by the bowlers. Really good comeback, isn't it? At one stage, at the completion of 2 overs, they made 24 runs without losing in a wicket. Now, after that, in 2 overs, they managed to get only 7 runs, and for that, they lost 3 valuable wickets. This is really good comeback here by the bowlers of Durga Konchadi. And that's the main reason is this man, Dhanush, is bowled beautifully. The Dhanush now got a ball in his hand to bowl the second over.
And wait and see how Dhanush will go into ball this second over. So Ashraf is on strike now, and Red Wings all in a sudden just losing the momentum what they got in the first 2 overs. And after losing a wicket of Santosh, a little bit downfall starts, and run rate which is decreasing in each and every over. Dhanush in previous over he considers a couple of runs and picked up a wicket. Something is going on here. So Dhanush seeing that batsman going for the reverse reverse, all in sudden is just stopping his run up and back to his bowling mark. Dhanush. Wow, lovely improvisation there from Ashraf. It's a long chase here for the fielder behind the ball, and before the fielder from the square leg to run towards his move towards his right to field the ball down at deep fine leg region. Ample time for the batter Ashraf to complete the couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 33 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Dhanush again from the far end, right arm over the wicket again. Side to the answer fielder Ajay, taken a catch. Just against the turn, isn't it? Dhanush bowled a leg cutter, and the batsman wanted to play that one over the top of that infield. Have a look at that one. Helicopter shot, just a flick of the wrist. But ball went straight to the hands of Ajay at short mid wicket region. The wicket number 4 which is back into pavilion, and Dhanush once again strikes. What a fantastic bowling performance here from Dhanush. 2 wickets for him. Altogether just 4 runs conceded here. Just under 18 years, but Dhanush has been outstanding and handling the pressure. I'm really impressive. It's not so easy to come and bowl to the against some great batters. When great batters in front of you, always it was a little bit nervousness for any youngsters. But this man is not really feeling any nervousness. He's a fearless bowler, and so far he's handled the pressure very well. Ranjit is a new batsman in for Red Wings, and one more dotted delivery, the perfect delivery to ball to the new batsman, fresh leg, beautifully bowled there by Ranjit, and batsman completely missed it. Dhanush, he tried to york the batsman, last moment Ranjit has got a bat onto that, ample time for the batter to complete a single before Bejai to pick the ball down at back point. So far it's a very good over, quiet over. And 34 for the loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. Red Wings against Durga Kunchadi. Dhanush, final time in this over. Not final time, so the beautifully driven and misfield there by Bejai. Again a fumble and again going for the couple of runs. Still Dhanush, Bejai is just following the ball and couldn't manage to stop the runs here from Ashwin. Couple of runs, 36 for the loss of 4 wicket. And Dhanush now is a final time in this over from the Rohan Corporation end. Bowling, right arm over the wicket to the right hand batsman Ashwin. This time Ashwin reaching to the delivery and leaning into the drive towards extra coverage, but not more than a single there. And with that single score, moves on to 37 for the loss of 4 wicket. Fantastic over which is comes to an end. Have a look at the bowling figure of this man, young man. 2 overs, no maiden, conceded 9 runs, I think so. 8 runs, and he picked up 2 valuable wickets. Outstanding bowling figure. Just have a look at the economy of that bowler. 4 runs per over. It's been a really great one to see. It's a 37 for the loss of 4 wicket, and the last over remaining in their innings. They're appealing for something, but nothing has happened. If you want the LBW, ball need to pitch in the line. Ball pitched outside the non-leg stump. At the second time, maybe the ball which brushed the wicket, but the bills which is not uprooted might be there. Chances is there. Maybe the ball is just kissing the stumps, and really lucky here, Ashwin. That ball is just missed the stumps. Navin again. Right arm around the wicket balls. This time lofted straight off the ground into the commentary box for a U6. Flighted delivery there from Navin. When you're bowling in the last over, if you give too much flight in the delivery, just have a look at that one. Ashwin
taken that one on the slot and picking that line and then so quickly, and he played it very straight, and ball is just landing into our commentary box for a much required 6 for team Red Wings Kunjatbail. And with that 6, score jumps into 43 now for the loss of 4 wicket. What a fantastic innings Ashwin is playing here for his team. In a difficult time he came into bat and he's handled the pressure very well. Again try to yoke the batsman in the negation. Navin outside on the off time, and Ashwin drives the ball towards a deep long off region. Again the fielding which is not up to the mark. The batsman just grabbing the opportunity to come back for the second. With that couple of runs, Coburn moves on to 45 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. Navin round the wicket to Ashwin. Again appeal for leg before wicket, but nothing much in that delivery, which is pitched outside and line like reflection. They're going for the second, and looks like something is happening here. The Ranjit is a one. He is not really looking for the second run, and leg by. Looks like one more addition. So 46 for the loss of 5 wicket. One more wicket is back into pavilion in the form of run out, because Ashwin desperately wanted to be in the strikers end to deal with some remaining deliveries of final over. And Navin round the wicket to Ashwin. Ashwin went for the mighty stroke, but didn't got enough bat onto that, and just inside edge of the bat. One more addition to total addition of that single scope moves on to 47 for the loss of 5 wicket. Now the last ball, and Konchade have to bring their one fielder inside the ring as far as a penalty for not completing the overs in a stipulated time. The last ball of the innings is coming up of Red Wings. 47 for the loss of 5 wicket. The batsman Yadnesh is on strike. Yadnesh, the left-hand batter, the very good all-rounder. He will going to take the strike of the bowling of Navin. Final time in this over. Driven, not enough timing in that shot. Mistimed cricketing stroke, full toss outside and on the off stamp. 11 runs came from that last over, and at last Red Wings, they finished well. They starts well, but they did not got that much of progress in the middle. But they finished well because of Ashwin. He really taken initiative of accelerating the run rate. Being the experienced campaigner, Ashwin batted very well in the middle and contributed some runs from his bat, and he remains unbeaten. Altogether, it's a good score anyway. 48 is a very, very good score. 49, which is the target for Konchadi to win the match. And we will see how Durga Konchadi will going to get this total and to win this match. Of course, Durga Konchadi, you cannot underestimate the batting department for Durga Konchadi. They got some good batting department, outstanding batting department. Just like some danger batsmen like Ajay can bat, even Santosh can bat, and Vijay is also useful, the batter. And considering all this, the batting department, Sachin is also one more good batsman, and Praneeth is also can contribute from the bat. So that considering all this fact, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಯ್ಯೋಣ. And it's going to be a very interesting match. And before the innings we're going to start off, Rohan Corporation, I request Mr. Gopi to take over the microphone. ನಂದ ಗೋಕುಲ In our ನಮ್ಮ national language. ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋ ದರದಲ್ಲಿ. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. 49 ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. यहाँ पर होती हुई 49 the target in 5 overs, 6 overs in fact they have to score for victory. And as far as the required rate is concerned, exactly 8.17 runs per hour they have to score for victory. 49 they have to score in 6 overs and their innings now going to start. Their openers are the crease और आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद अमित और सचिन और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए यज्ञेश। तो अंपायर मोहन ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार यज्ञेश। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो 1+1 2 runs now added to the total in the account of Durga Konchadi and the runs account begin for them. It's 2 without loss in the over number first in progress। और जहां तक 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, दुर्गा कोंचाडी के लिए चाहिए एक बेहतर शुरुआत यहां पर। और देखते हैं क्रीज पर मौजूद ये दोनों सलामी बल्लेबाज अमित और सचिन किस तरीके की शुरुआत यहां पर देते हैं दुर्गा कोंचाडी को। तो गेंदबाज यज्ञेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त पंच करना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद इस वक्त पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर। ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच नीडेड located delivery with extra pace and the ball went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run। तो पहला गेंद वाइड फेंकने के बाद 2 बेहतर गेंदें इस वक्त यज्ञेश इस वक्त फेंक चुके हैं अपनी ओर की अगली गेंद। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, एक बार फिर से वाइड और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और यज्ञेश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट लगा पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट नंबर 1 गिर चुका है दुर्गा कोंचाडी के लिए। सचिन ने गेंद को उछाला था जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और लंगा ऊपर आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है दुर्गा कोंचाडी का 3 रनों के ऊपर। नाउ दे आर 3 for the loss of 1 wicket in the first over। Next match, Team Matrix will takes over New Star Kunjatur. Team Matrix will takes over New Star Kunjatur and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस मैच का 3 रनों पर पहला विकेट इस वक्त खो चुका है और नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त बाएं हाथ के गेंदबाज यज्ञेश गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज संतोष के लिए। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज यज्ञेश और
इस गेंद पर बल्लेबाज को रन नहीं मिला। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज यज्ञेश की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Absolutely perfect strike this time. Just shuffling across the line. He turns it away fine at the last moment. Just reading the pace of that ball at the last moment and swept it away well with an exquisite footwork. And this is an absolutely outstanding strike came from the bat of the batsman Santosh. And with that boundary, the scoreboard moving up to 7 for the loss of 1 wicket. And so last ball remaining in this over. In fact, 1 ball remaining in this over. That means 5 balls gone. So 43. In fact, 31 balls left and 42 runs more. Now they have to score for victory. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त संतोष के बल्ले से लगता हुआ और इस ओवर में अंतिम बार यज्ञेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संतोष यहाँ पर चौका झड़ने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं और इस बीच यज्ञेश की ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और यज्ञेश अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर। बाएं हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन बिना किसी नुकसान के, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए पहले ओवर की समाप्ति के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 8 रन्स ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस। मिक्स स्टार्ट फॉर Durga Kunjadi chasing the victory target of 49 in 6 overs. 41 more runs now they have to score for victory in remaining 30 deliveries with a required run rate of exactly 8.20 runs per over. So 41 runs more now they have to score for victory in remaining 5 overs and the second over starts in the rings from that side and that means Rohan Corporation and और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए अजीज और रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त नया ओवर शुरू होता हुआ सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज संतोष। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ तो अजीज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ये गेंद पहली गेंद स्वीप किया इस वक्त स्क्वायर की दिशा में, रन नहीं मिलेंगे इस बीच गेंद को वहाँ पर फील्ड कर लिया गया और रन से नहीं मिलेगा। तो अजीज़ एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए कल हुए बीके चैंपियंस ट्रॉफी में भी अजीज़ ने बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था और देखना यह है कि उस सफलता के सिलसिले को गेंदबाजी में इस श्रृंखला में भी वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। तो इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर अजीज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चेक किया लगोल पर 6 रनों के लिए। He just picked that one right from the spot and lofted that one in a flatter version. Absolutely fantastic struck came from the bat of the batsman. और जहां तक छक्के का सवाल है संतोष के बल्ले से ये छक्का लग चुका है। Have a look at this in the replay. He just picked that one right from the spot and this is an absolutely effortlessly played by the batsman. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक संतोष के बल्ले से लगता है और इस छक्के के साथ संतोष अपने इरादों को और बुलंद यहां पर कर चुके हैं और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 35 रन चाहिए, 28 गेंदें बाकी, 35 to get in remaining 28 deliveries. Aziz straight away the bowler is now under pressure और देखना यह है कि अंतिम अगली गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी वो अपनाते हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट अजीज दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला एक बार फिर से into the gap as well. He gets a boundary for that. 6 and a boundary and Santosh intentions is pretty clear, just go over the top and he is doing the right thing in power play. और 10 रन अंतिम 2 गेंदों में यहाँ पर बटोर चुके हैं संतोष और यहाँ पर चौका प्राप्त करते हुए 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और दुर्गा कोंचाड़ी अब ऐसा कहना पड़ेगा दे आर लुकिंग इन ए गुड सिचुएशन। सिर्फ दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और अजीज इस वक्त महंगे साबित होते हुए इस ओवर में अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। इस बार स्टंप्स एक्सपोज करके ठहरते हुए, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर अजीज ने फेंकी और आखिरकार वाइड का इशारा यहाँ पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 30 रन चाहिए 27 के दे बाकी। 30 runs more, now they have to score for victory in remaining 27 deliveries। और अपनी अगली गेंद लेकर अजीज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एक बार फिर से स्टंप्स एक्सपोज करते हुए ठहरते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, पैरों पर टकराई गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है लेग बाय के रूप में, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। 12 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, और एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ दुर्गा कुंचाड़े की पारी में। और अजीज ये गेंद इस बार ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, बेहतर गेंद थी अजीज की, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 for 1। Just a second over in progress for Durga Konchadi, they are progressing along nicely at this situation। और फिर से एक बार अजीज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, इस ओवर में अंतिम बार दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला, काफी ऊंचा गेंद को उछाला है, लेकिन लंबी सीमा रेखा के फील्डर कैच छोड़ चुके हैं, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था तीसरा रन चुराने का, थोड़ा सा मिस जजमेंट है, और शायद यहाँ पर गेंद के नीचे आ गए थे, अश्विन फील्डर थे, लेकिन थोड़ा सा मिस जजमेंट अंतिम क्षण में उन्होंने किया, फलस्वरूप गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई, और जब तक पहले टिप्पे के बाद वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का, और जीवदान के साथ 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। 24 रन, कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 overs had been bowled and they are looking in a commanding situation now। 26 they are to score in remaining 24 deliveries, and straight away the required run rate is now coming down to 6.5 runs per over at this situation। और 2 बेहतर ओवर है, खासकर पिछला ओवर काफी बेहतर रहा अजीज का, जिसमें 15 रन बने, 15 रन scored in the last over from Aziz, and with that over Durga Kunjadi are now back in the game। तो इस वक्त 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति, और 26 रन चाहिए 24 के 2 में, और गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए यज्ञेश अपना दूसरा ओवर, और ओवर की पहली गेंद इस वक्त तैयार। जहां तक सवाल है रेड विंग्स कुंजत बेल का, इस वक्त उन्हें चाहिए चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेट इस मैच में कमबैक करने के लिए। तख्ता इस वक्त दुर्गा कुंचाड़ी का भारी लगता हुआ, और इस बीच फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, और पावर प्ले का अंत हो चुका है, फील्डर्स मैदान पर छा चुके हैं, और यज्ञेश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है। गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन, जस्ट वांटेड टू हीव द बॉल ओवर द लॉन्ग ऑन एरिया, नॉट सक्सीडेड, और गेंद इस वक्त फील्ड की जा चुकी है, विकेट कीपर द्वारा रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 23 रनों पर, 26 रन और चाहिए 23 के दे बाकी। यज्ञेश इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव किया, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन, 2 consecutive डॉट बॉल्स, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बैट्समैन नाउ, और इस वक्त 2 लगातार डॉट गेंदे बल्लेबाज यहां पर खेल चुके हैं, और एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुके गेंदबाजी के जरिए यज्ञेश इस दूसरे ओवर में। अमित इस वक्त संतोष से कुछ बातचीत करते हुए, संतोष ने हालांकि अमित को बुलाया और कुछ कहा उन्होंने, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त यज्ञेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर इस वक्त बदल दिए गए हैं, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची सीली मिड ऑफ पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 21 गेंदें बाकी हैं, 25 रन और चाहिए विजय के लिए। और बाएं हाथ के गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ही फाइंड्स द गैप एज वेल, जस्ट वी हैव टू वेट, लेकिन वहां पर स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं था,
तो इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला और वहां पर जो पड़ा हुआ है वहां पर गेंद टकराने के बाद अपने रफ्तार को खोकर थोड़ी सी उछली और यहाँ पर एक रन मात्र इस गेंद पर बल्लेबाज को मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। यह गेंद ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडल गेट, स्लिप ऑफ के फील्डर के हाथों में गेंद, ओवर थ्रो, लेकिन बल्लेबाज को दूसरा रन नहीं मिलेगा। बैकअप वहां पर होता हुआ और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन, बराबर का टक्कर इस वक्त जारी है। 26 रन एक विकेट के नुकसान पर, 23 to get from 19 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. Yajnesh, last time in this over, by हाथ round the wicket. Is back, not quite mid wicket. He gets a single for that stroke. Fielder standing just a little bit of a deep on the onside. In fact, the batsmen are finally satisfied with the single. 3 overs completed. 27 runs on the board, and 1 wicket lost. 3 overs left. 22 to get. The present run rate is 9 runs per over. The required run rate now for them is exactly 7.34 runs per over. They have to score for victory. 22 to get from remaining 3 overs. That means 18 balls. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi, and what an outstanding reply from Durga Konchadi. At 27 for the loss of 1 wicket, and the man is responsible for the position here is Santosh, is still there in the middle, and wait and see how he'll going to get remaining 22 runs in 18 balls. The first ball going for the drive, not really getting that much of timing behind the ball. A little bit of footwork there from the fielder to get the run out, but ball misses the stumps, and Santosh is out of the strike. And 28 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. 21 required from 17 balls. Kiran from the far end, from the Rohan Corporation end. Right arm over the wicket, lovely reverse stroke, plays it down to deep backward point region before the cow point fielder to run across his left. Ample for time for the batter to complete that couple of runs. So Amit is playing a right role here by rotating the strike and getting some placement. 30 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. 19 more runs required for the victory in the over number 4th is in progress. Again the Kiran bowling from the far end, right arm over the wicket across the line. This is not a good shot selection because Kiran wanted to bowl that one outside the line of off stump. Batsman wanted to play that one in the onside region, wanted to drag that one from outside the line of off stump, missed it completely. It's going to be a very important dotted delivery from Kiran. Again they're going for the mighty stroke. Again the miss, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump, little bit fumble. Good comeback here by Kiran. The kind of over which is badly required for Red Wings Kunjat Bail. Kiran is producing that over, and so far he is looking so good. 14 ball 19 runs required for the victory. Kiran again balls, went for the reverse sweep again. Wicketkeeper missed it. Chance of run out in the non-strikers end, but throw which is not good enough. The batsman close off for a single in the negation. Little bit bat involved as the batsman wanted to reverse sweep that ball. It's going to be a good over, and 18 runs which is required from 13 balls, and Santosh is back on strike. Can Santosh able to get one big shot in this over? Wait and see. This time up and over, chance here for the fielder. Ball landed safely. Ajit is just running back to take the catch. Bowler Aziz running back to try to take the catch, but ball just landed safely between Aziz and cow point. So fantastic over from Kiran. This over really brought Kunjat Bail into this match very strongly. Now equation Red Wings Kunjat Bail. So Santosh is still there in the middle, the man who really brought his team in a right track of winning this match. And now it's going to be a great competition. One experienced Santosh against one talented Santosh. 32 for the loss of 1 wicket. So Santosh Kodekal against Sai Santu.
17 to get from 12 balls. So far, with the help of 2 boundaries and 6s, looks like Santosh is in a great nick. He's batting on 21, and especially in the second over, he looks so destructive. And wait and see how he'll going to face Santosh. This time he lofted, but straight to the hands of Wadis long on. This is a huge wicket. This is a huge wicket here for Red Wings Kunjat Bail. Santosh just choosing a wrong direction to get the distance, isn't it? In the afternoon, getting a distance and against the wind, when you are trying to hit the ball towards the commentary box, right of our commentary box, that is a deep mid wicket. It's a very difficult area to get the distance. The Santosh is back into pavilion, but he's played a magnificent innings for his team. Outstanding innings. The once it looks like when they're going to chase the 49 runs, I've already mentioned the Santosh is a man, is a danger man as far as chasing this total runs is concerned. But nothing much worried about that, losing a Santosh. One more destructive batsman just having a place here in the striker's end. It's none other than Ajay. He's a very good striker of the ball. 17 to get from 11 balls. Still match is in balance. I'm not saying that his match is totally in the hands of Red Wings, because Ajay can deliver some big shot. And here is again Santosh after getting the huge wicket of Santosh. He looks very confident. Right arm over the wicket, slashes that very well. I think Ajay is not impressed with that run, because he know exactly which is a wit is offered there by Santosh. He going for his favorite extra cover drive. Didn't got enough bat onto that. Got a single for that. With that single, cover numbers on to 33 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. So 10 balls remaining. They need to get 16 runs to win this match. Santosh bowls. This time Lakatar, the batsman, really not doing a good job here. Amit so far played some dotted deliveries, especially in the previous over also. It's not good to see that he's playing the dotted deliveries, put some pressure onto the incoming batsmen. Again Santosh, right arm over the wicket bowls. Again not really getting that one from the middle of the bat, edging it down to third man region. One more single. With that singles covered moves on to 34. That means 15 more runs required for the victory, and remaining 14 deliveries. 8 deliveries remaining, and 15 runs required for the victory. Santosh balls, spectre wide. Oh, good collection there by Kishore. Otherwise, it's going to be 1+1. The Kishore did a great job to having just collected that one. Maybe this is a very difficult one for the wicket keeper, but he's collected very well to stop extra runs. 14 to get in 8 balls. Santosh. Ajay just forcing that one. Again, not really getting that much of enough timing in that stroke. Santosh doing a good job in this over. Last delivery remaining in this over. 14 runs required for the victory. The match is still, it looks like it's more interesting. But Santosh and Kiran, both the bowlers did a great job so far for Red Wings in this particular match. Santosh bowling away from us. Right arm over the wicket to Amit. Amit again. That's a dotted delivery. How many dotted deliveries playing here as Amit? One more dotted delivery. Fantastic over there from Santosh. One more good over coming in favor of Red Wings Kunjat Bail. Now, last over remaining. 13 runs required for the victory. So just looks like the match is really favoring towards team Durga Konchadi. The last 2 overs, Red Wings Kunjat Bail strongly back into this game through Kiran, through Santosh, and because of that, that now is certainly target looking little bit tougher, but not impossible. Ajay is a danger batsman as far as opposition Red Wings is concerned. This man can deliver some big shots, and wait and see how well Ajay will going to take his team into safe to the target. Kiran done a great job in a previous over. Now is depending that one. There's a lovely shot after by the fielder. Opportunity for the batsman to come back for the second, and they completed that one. That was powerfully driven by the batter.
Looks like Aziz is something lost from his pocket. Looks like it's specs. He's wearing a specs, so that while trying to field the ball, looks like the specs, which is it's very interesting to see that is missing something. It's a 38 for the loss of 2 wicket. 11 more runs required for the victory. 10 for the tie. If the match will go into tie, then the fall of wickets comes into play. 5 balls, 11 runs required for the victory. 2 runs in the first ball for Ajay. Kiran bowling from the far end, from the Rohan Corporation end. Right arm over the wicket. This time Ajay lost it, but I don't think we'll go the distance. Yes, he got the distance. That was the power of Ajay. He's the muscles that one down to deep longer for a huge 6. Now equation. 4 balls remaining and 5 runs needed for the victory. This is what I'm talking about, this man Ajay. He is a powerful striker. He's just muscles that one. It's one of the difficult area I want to say to get the distance. No one can get the distance in the afternoon in that long off region. And what a magnificent struck. 5 runs required from 4 balls. Little bit outside the run flex them going down. A fumble from the field and they will come back for the second. Ajay going back the second. Amit is not interested. They're going for the third. And it looks like even they're looking for the 4th one. Leg by call by umpire. All in sudden, the fielder started to feel the pressure of Red Wings. This is what Ajay is all about. 47 for the loss of a 2 wicket. Now 2 runs required for the victory in 3 balls. Can you believe this? Now the interesting to see that Amit is back on strike. Amit is back on second. Ajay is out of the strike. 2 runs required for the victory. 3 balls remaining. 3 balls remaining. 2 runs required for the victory. Kiran, can he be able to do the magic here? Closing fielder there to wanted to prevent the single. Kiran, right arm over the wicket. Amit looking for the reverse save. Ball is in the air, but I think it's going. Oh, that's it. That's it. The ball is running towards the boundary line and the boundary conceded. Leg by call by umpire. Durga Konchadi won the match dramatically. And Ajay finishes the match. The leg by 5 runs is given is a disaster. Red Wings maybe they lost the match by their own mistakes. The fielding which is not up to the mark in a crucial moment. The crucial moment they are missing some opportunities and they pays the penalty for that. But Durga Konchadi, they won the match dramatically. Absolutely dramatical win here for team Durga Konchadi. Even Amit is need to say thanks to Ajay, otherwise he's definitely going to be a villain in this match because of so many dotted deliveries he faced. But he standed strongly in the other end. It's very important for any partnership. And but Ajay is just like I mentioned earlier, he's a danger man. He's a danger man as far as a powerful hitting is concerned. He just got a 6 in a right moment for his team, and they got 51 runs, which is winning score for the team Durga Konchadi.
So it's a time to announce the man of the match, but a little bit difficult one to judge the man of the match because the contribution is there from three people. Of course, Ajay one who finished the match, Dhanush who is restrict the runs for the opposition by picking up 3 wickets. But while chasing a big total of 49 to win the match, one has to open the gate, and the man who has opened the gate and scored a important 21 valuable runs is a Santosh of Durga Konchadi, who is judged as a man of the match. May I request Mr. Santosh to go and collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. At the same time, I request Red Wings Kunjat Bail captain, please collect your representation memento from our chief guest. Thank you very much, and fantastic tournament is in progress of United Trophy 2023, which is proudly and systematically organized by Real Estate Group registered Bejai, Manglore. Now it's a time for presentation here. I request the Bedra Media cameraman, please collect that beautiful memento out there in the stage. The man of the match, which is collected by the batsman Santosh for his outstanding performance. Absolutely great performance there from Santosh, and one who has opened the gate by hitting some big shots, and he's collecting the t-shirt. I think it's one of the very good concept from Real Estate Group, the presenting the t-shirt, and which will definitely going to be useful for the cricketers. And thank you very much, Santosh, and thank you very much for our chief guest for presentation of man of the match. At the same time, I request the captain of Red Wings Kunjat Bail, please collect your memento for the representation. Now time to change in commentary box as well. It's over to Gopi. Thank you. Dhanyawad Satish. So what a fantastic match ended, which won by Durga Konchadi against Red Wings Kunjat Bail. Now the next match starts. First ball of the match is now coming up. Outside the off stump. Driven, and this time it's taken at mid wicket. First ball, golden dismissal for the batsman. और अगेन को उस वक्त स्वीप किया था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत. हैव अ लुक एट दिस इन द replay. Flatter version and brilliantly taken just inside the 20-yard circle by the fielder. और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. बेहतरीन कैच मिड विकेट पर फील्डर लेते हुए, और धर्मा की गेंद पर यह पहला विकेट गिर चुका है मैच की पहली गेंद पर. द बैट्समैन डिपार्ट्स एंड टीम मैट्रिक्स आर नाउ लूज देयर फर्स्ट विकेट. इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर. तो मैच इस वक्त शुरू हो चुका है टीम मैट्रिक्स और न्यू स्टार कुंजतुर के बीच. तो न्यू स्टार कुंजतुर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था, और पहली गेंद पर टीम मैट्रिक्स का विकेट यहां पर गिर चुका है 0 पर. अब देखते हैं, पहला विकेट गिर जाने के बाद नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. सादिक आउट होकर पेविलियन वापस. रिजवान नॉन स्ट्राइक पर मौजूद. नौशद का आगमन यहां पर होता हुआ. गेंदबाज धर्मा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद चिप किया. This time has got the distance. It's a biggie. A
beautifully played and he finds the gap as well. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था. Just stand and delivered. And this time he finds the gap as well in a flatter Roshan. 6 runs और इस छक्के के साथ इस वक्त रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बेहतर स्ट्रोक के साथ इस वक्त छक्के के साथ शुरुआत कर चुके हैं नौशाद और गेंदबाज इस वक्त धर्मा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, एक बार फिर से उसी तरीके का स्ट्रोक दोहराना चाहता, लेकिन इस बार गेंद लगभग जमीन के साथ आए थे. एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो धर्मा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिजवान इस वक्त बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. धर्मा की गेंद, ये गेंद इस बार हल्के से स्ट्रोक को चेक किया और गेंद कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में. अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, चेक किया था और आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका. हाफ माइंडेड स्ट्रोक और कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में सीधे गेंद पहुंची. दूसरा विकेट गिर चुका है 7 रनों के योग पर. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. देखिए किस तरीके से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद गई थी. हल्के से गेंद को इस वक्त अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, चेक किया था और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में. हाफ माइंडेड स्ट्रोक की बदौलत ये विकेट गिर चुका. विकेट नंबर 2 और दोनों बल्लेबाज सिद्दीक और रिजवान गोल्डन डक के रूप में पेविलियन वापस लौट चुके हैं और दोनों विकेट धर्मा के खाते में जा चुके हैं. और 0 पर दोनों बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके हैं. आरंभिक बल्लेबाज और नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. तो 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, 7 रन. और जहां तक सवाल है न्यू स्टार कुंजतुर का तो निस्संदेह केरला की जो ये टीम है यहां पर एक बेहतर प्रदर्शन देते हुए और इस वक्त खासकर उन्नी कृष्णन जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी उनके गोरियंग बॉयज की ओर से प्रतिनिधित्व किया करते हैं आमतौर पर. यहां पर वो न्यू स्टार कुंजतुर का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके मार्गदर्शन में यहां पर यह टीम इस वक्त इस श्रृंखला के क्वार्टर फाइनल तक इस वक्त पहुंच चुकी है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धर्मा दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया. गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते हुए इस वक्त 1 रन और इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. शायद वहां पर कोई फील्डर जरूर थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. तो रन से जैसे भी हो इस वक्त मिल चुके हैं और इस बार देखिए गेंद को उछाला था, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गई थी और आखिरकार गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को रोकने में असफल और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए. 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति. 2 विकेटों को खोने के बावजूद टीम मैट्रिक्स एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है. 12 for the loss of 2 wicket after completion of first over scored by team Matrix made a perfect start, made a good start in fact after except they lost their 2 wickets. यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 इस मेगा श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय मैंगलोर ने गरीब बच्चों के शिक्षण अभियान में हाथ जुटाने के लिए और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन प्रयत्न वो करते हुए सोशल वर्क और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट उद्देश्य के साथ वो यहाँ पर ये श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन कर रहे हैं. काबिल तारीफ इस वक्त काम करते हुए रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड विजय बैंगलोर के सर्व सदस्य. और इस बीच जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का सफवान का आगमन हो चुका है तो नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए परवेज. दूसरा ओवर उनकी पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ. ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दूसरा पावर प्ले ओवर और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर उन्नी कृष्णन ने अपने बाईं ओर जाकर फील्ड कर लिया. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इज बॉल्ड आउट मच स्ट्रेट लाइन एंड ही जस्ट कॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. इस बार गेंद को खेलना चाहता
लेकिन गेंद बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई इस वक्त ऑफ स्टंप पर, और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस द रिप्ले। किस तरीके से देखिए गेंद इस वक्त आई थी, थोड़ी सी इन कटर गेंद थी अंदर की ओर आती हुई और बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे स्टंप्स पर जा टकराई, और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। टीम मैट्रिक्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। और सफान आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए उनका स्थान ग्रहण करते हुए एज ए नंबर 5 बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस्माइल, और वो इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए, और 3 विकेट इस वक्त खोने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त टीम मैट्रिक्स के ऊपर जरूर दिखाई देता हुआ, लेकिन इस वक्त मौका जरूर है उन्हें इस दबाव को हटाने का और कम बैक करने का। और इस बीच परवेज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाते हुए इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ रन से बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। पहला और माफ कीजिए दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी। केवल 2 मात्र खिलाड़ी बीच के दायरे के बाहर तैनात, ठीक सीमा रेखा के पास। वाइड इज लॉन्ग ऑफ और वाइड इज लॉन्ग ऑन, और गेंदबाज इस बीच परवेज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंचे, गेंद पहुंची लेकिन वहां पर गेंद को फील्ड करने में असफल ठीक तरह से फील्डर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और परवेज अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव किया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट, प्लेड दैट वन दिस टाइम इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर कार्तिक। जब तक गेंद तक झपके हैं, गेंद पर झपके बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, फलस्वरूप कोई दिक्कत ही उन्हें इस वक्त महसूस नहीं हुई 1 रन न प्राप्त करने में। 15 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए परवेज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट खेलना था, बॉल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। He just wanted to play the shot with a twisted bat, not succeeded. लेकिन सीधे उनके बल्ले को वंचित करती हुई जा टकराई ऑफ स्टंप पर, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, और 4 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम मैट्रिक्स खो चुका। रन की गति अच्छी खासी, 15 रन जोड़ चुका। 15 runs they scored in their first 2 overs with a run rate of exactly 7.5 runs per over in the first 2 overs, except they lost their 4 wickets। और जहाँ तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है तो 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। तो इस वक्त मैच इस वक्त खेला जाता है टीम मैट्रिक्स और न्यू स्टार कुंजत बेल के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मैच, और इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, द सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच विल बी प्लेड राइट आफ्टर दिस मैच बिटवीन दुर्गा कुंचारी वर्सेस फ्रेंड्स कुत्तार। And because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, धर्मा अपना ओवर शुरू करते हुए 12 रन अपने पहले ओवर में उन्होंने प्रदान जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद उनके कप्तान ने उन पर विश्वास रखते हुए दूसरा ओवर उनको सौंपा है। और देखना यह है कि धर्मा अपने कप्तान के विश्वास को किस हद तक बरकरार रख पाते हैं इस ओवर में। नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई। गलत जजमेंट इस वक्त बल्लेबाज द्वारा, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अपनी अगली गेंद लेकर धर्मा इस वक्त तैयार। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद लेकर तैयार। गेंद को इस वक्त हल्के से पुश कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद डीप बैक थर्ड मैन की दिशा में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और धर्मा इस बीच गेंदबाजी करेंगे अब नए बल्लेबाज निजाम, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम के लिए ये गेंद स्वीप करना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग पर कार्तिक गेंद पर लपके, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और पहले दूसरे
पहले ओवर में 12 रन प्रदान करने के बाद एक कुछ हद तक बेहतर कमबैक कर चुके इस वक्त गेंदबाज न्यू स्टार कुंजतुर के। धर्मा की गेंद ड्राइव किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद इस वक्त पहुंची लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, एंड दिस इज 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। धर्मा कम्स टू निजाम, कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली इस वक्त करते हुए मिड डाउन के फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है लॉन्ग ऑन पर, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को आगे बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर मिड ऑफ पर। और धर्मा एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज निजाम इस वक्त सामना करते हुए धर्मा की गेंदों का। ये गेंद इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन पर, ही जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद तक पहुंचे थे, और अंतिम क्षण में गेंद जब तक डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप पॉइंट के बीच फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 19 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम बार इस ओवर में धर्मा गेंदबाजी करते हुए, और सामना इस वक्त करते हुए इस्माइल एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज धर्मा अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, 20 गज के दायरे के कुछ बाहर गेंद को रोका गया फील्डर द्वारा गेंद को बेहतर तरीके से। एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिलता हुआ 20 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुके हैं। 3 overs completed, 20 runs on the board, and still the batsmen of team metrics are now searching for the right track, and 3 overs remaining in overall calculation in their innings, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और यहां पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ, और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल, 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. And 3 overs which is completed, and Team Matrix scored 20 valuable runs by losing 4 wickets. The equal battle is on. Runs are coming and wickets are tumbling, and altogether the equal battle is on between two very good teams. New Star Kunjatur versus Team Matrix. First ball in the over number 2nd, right arm over the wicket, and Karthik little bit fumble from the short mid wicket region, so that batter completed single. With that single, scoreboard moves on to 21 for the loss of 4 wicket. Nizam and Ismail are the 2 batters in the middle. Try to get some acceleration. Nizam is on strike now. Ajit is on attack. Right arm round the wicket. Went for the reverse sweep. Missed it completely. Wicketkeeper Unnikrishnan behind the stump. It's outstanding as always. Again, that's not an easy one to collect the ball. Whenever the ball is a batsman going across to swing the bat by playing the reverse sweep. It's one of the difficult line for the wicketkeeper behind the stump to collect the ball. And again, Unnikrishnan is looking so confident and so brilliant behind the stump. It's a 21 for the loss of 4 wicket. Yesterday only we are talking about some heavy body weight cricketer in Underarm cricket. Just we are talking about G1 when he is bowling in that previous day. He is a heavy body weight player in Underarm cricket. Having that much of weight, he is bowling very well. Here is the next one, right arm over the wicket, going for the big swing of the bat. Again, that ball not really getting that one from the middle of the bat. The batsman got a little bit bat onto that occasion, so that batsman completed single. 22 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Just like it is very difficult for the bowler, heavy body weight bowler to bowl the ball, and even is a very difficult for the wicket keeper when you're having a heavy body behind the stumps. But Unnikrishnan has been outstanding, and even having maybe it's 100 plus the heavy weight. He has got bowled him, clean him up. Ajit has got the huge wicket here. The batsman once looks so confident in the middle. Is back into pavilion with the beauty of the delivery from
Ajit there. A little bit across the line. The batsman shuffled and he wanted to swing that one ball, missing his bat, hitting the stumps. Good line from Ajit. And wicket number 3, which is back into pavilion. It's 22 for the loss of 5 wicket. And huge wicket. Ismail is back into pavilion. And the new batsman walking towards the middle for team Matrix. It looks like so one more experienced campaigner is walking towards the middle for team Matrix, and just number 10, Nasir. Nasir will going to take the strike of the bowling of Ajit. Is looking so good in this particular over. Right arm round the wicket balls. Again, nicely bowled around the legs of the batsman. Batsman going for the flick of the wrist, but missed it completely from the bat. One more batted delivery. So good comeback here by new star Kunjat Bail through Ajit in this particular over. Kunjatur, red correction, and team Kunjat Bail, which is out of the tournament. One more wicket here for Ajit. Nasir this time nowhere near the pitch of the ball. We wanted to swing that one against the line, and he just pays the penalty for that. And one more wicket of Team Matrix is up back into pavilion. Now they are in a deep trouble. What a fantastic over there from Ajit. Just a couple of runs he conceded in that over, and he got 2 valuable wickets. And that means he's really got a good start from Ajit in this 4th over for new star Kunjaturu. There's a wicket number 6, which is back into pavilion. Team Matrix, once they're looking so good, and they're getting some runs. The first over they got 12 valuable runs, and Farvez once again came in and put some break on the run rate. And afterwards the second over might be a little bit expensive from Dharma, but in this over Ajit bowled really very well, and Parvez now back into attack. The man who picked up 2 valuable wickets in his first over by conceding 3 runs, now he's back into attack. Parvez bowling away from us. Item over the wicket balls. This time nicely driven there by Nizam down to cover point region for an easy single. With that single, Skoban moves on to 23 for the loss of 6 wicket. Jojo, the fielder in the deep cover point region. And the batsman got ample time to complete the single. 23 for the loss of 6 wicket in the over number 5 is in progress. Parvez bowling away from us. Right arm over the wicket looking for the improvisation. Oh, that is a certain single there. Absolutely there is a certain single. But Nizam not interested. And Shaz starts his run. But surprising seeing that Nizam is not responded for that run. Nazir Chirugoli, the fielder there in the short man, fields the ball, and there is no chance at all for any run. This time ball is in there, opportunity for the Jojo to take the catch, and he completes the catch as well. So wicket number 7 is back into pavilion. Team Matrix are looking in a serious trouble. So never looks like the same Team Matrix team they played their earlier match. Really struggling there. When they played against the first match, the inaugural match, when they played against Team Bail Ashok Nagar, the performance which is so good from Team Matrix. But here, after getting a good start in the first over, the wickets which are really tumbling here. 7 wickets back into pavilion. When there is in the tournament, there will be the wicket over, the fall of wickets which comes into play. Throwing the wicket means it's going to be dangerous. If the scores are level, then winner will be going to be decided by the fall of wickets. So that need to be so serious, each and every team, when they're throwing the wickets. 7 wickets back into pavilion. New star Kunjaturu wanted to bundle out their opposition quickly. And Farvez, what a fantastic bowling figure from him, which is continuous. 3 wickets already. The second over is in progress of his quota. Again nicely bowled. The batsman drives that one down to square leg region for a single. Not convincing cricketing stroke there from new batsman Mustafa. With that single, Skoban moves on to 24 for the loss of 7 wicket. The 5th over is in progress. Parvez bowling away from us.
Right arm over the wicket to Nizam. Nizam lofted and in the vacant area down to deep mid wicket. One bounce, two bounce collected by the fielder, but here is a bowler batter running hard between the wicket, going for the third. Oh, directed and is gone. No need to go ask for the third umpire, and Harish Patil is in such a good position to signal the out in a naked eye, because the batsman is really struggling to reach his home. Whenever there is a direct hit, I think the bowler did a great job. Parvez, it's not so easy in that angle to hit the stumps, isn't it? The throw which is not quick enough, and quickly Parvez realizing that he is just charging to that throw, collects the ball, and it's a stumps in a cross angle where you can see only single wicket in that angle, and it's going to be a very good hit there from Parvez to got the result here. 26 for the loss of 8 wicket. Team Matrix are looking in a deep trouble. Maybe umpire having some discussion about the boundary. Yes, they're asking for the third umpire. Maybe someone is claiming there in that stroke whether the fielder is saved that or not. That's what umpire wanted to check here, and is asking for the third umpire to see the ball, whether the ball which is crossed the boundary line or not. Saved. So saved by the fielder, so that the batsman have to go back to the pavilion. And very good piece of fielding there by the fielder in the mid-wicket region. Controlling his body balance. It's not so easy when you are in edge of the boundary line. You need to see the ball and his foot simultaneously, and only the good fielder can do that job. The team Matrix are looking in a deep trouble now. 26 on the board. 26 for the loss of 8 wickets. Parvez is looking so good in this over and the previous over also. And 7 runs which is conceded so far, and it picked up 3 valuable wickets. Parvez right over the wicket, nicely driven down to deep long on revision. A sweet sound coming from the bat of the batter, indicating that Mustafa drives the ball very nicely from the middle of the bat. Very good over which is completed. Absolutely good over there from Parvez. I want to see his bowling figure. He bowled 2 overs, no maiden, and conceded 8 runs and picked up 3 valuable wickets. Absolutely good one from Parvez. In the previous match also is very impressive in his bowling, and in this particular match also is done a great job for New Star Kunjatturu. And 27 for the loss of 8 wickets. Last over remaining in their innings, and Unnikrishnan is being introduced himself for the last over. Wait and see how Unnikrishnan will going to bowl that last over. And batsman is on strike is Mustafa. Taslim is in non-strikers end, and Mustafa is in strikers end. Unnikrishnan. Just I'm looking for the reverse stroke, and I think it's a premeditated switch. It is attempted. That's why bowler bowls that an outside the leg stump.
So just like left-hand batsman tapping the ball in the offside region to pick the single, and 28 for the loss of 8 wicket. The 5 balls remaining in the innings of Team Matrix. At least one big shot in this over is required badly for Team Matrix if they wanted to get the competitive total. Unikrishnan, right, over wicket balls. Wicketkeeper fails to collect the ball. Fumble opportunity. Oh, direct it! And it's gone. This is a second direct hit. I think Team New Star Kunjatur have got so many sharp shooters. They have got so many sharp shooters. One can hit the stumps. This is a second direct hit. After that, Farway hitting the stump. Now wicketkeeper behind the stump. He is hitting the stumps. Ajit behind the stump, not missing the stumps in the non-strike end. So 28 for the loss of 9 wicket. Last wicket which is remaining for New Star Kunjaturu to bundle out. Nicely driven down to deep wideish long on region for a single. With that single, scored Mozanton 29 on the board. This same team faced each other in the JD Boys Trophy in Bantwal in a quarter final of that tournament, and that match Team Matrix defeated. What a magnificent effort. Looks like it's going to be a fantastic catch if he manages to complete the catch. Have a look at that one. This is what I'm talking about. Having a heavy body weight. Have a look at the gymnastic attempt there from the fielder. All body which is floating in the air. If he manages to complete the catch, it's been one of the best catch of the tournament. This is all Unikrishnan is all about. Athletic, gymnastic, everything. Again, wicketkeeper behind the stump, little bit fumble, but couldn't manage to collect ball properly. So it's a quarter final here, also quarter final of this United Trophy. Both the teams now umpire just signaling that you are reached your time, so that you need to bring your one fielder inside the ring. As far as the penalty is concerned, 30 for the loss of 9 wicket. Last 2 deliveries, 1 delivery remaining. And here is Unikrishnan, right arm over wicket ball. Slower one, driven that one down to deep cover point region. Fielder behind the ball. In comes a throw from the deep. And looks like it's going to be a disaster. And again, the best fielder missing it. The opportunity of 4th run there. 3 valuable runs in the last ball. And that's it. 33 is the total score of Team Matrix, and they set a target of 34 to win this match for Team New Star Kunjaturu to qualify for the next round of this prestigious cricket tournament, semi-final of this cricket tournament. It's going to be very interesting, and looks like it's going to be a very easy total to chase down. But Team Matrix, they got some good bowling department. The Team Matrix is the one team which is qualified for the finals of JD Trophy 2023 because of their bowling department. So that I think the batsmen of New Star Kunjaturu have to work hard, and can they able to take the revenge here after defeat which is they faced in JD Trophy 2023. It's going to be more interesting. So 33 Gopi, 34 to win this match. It looks like a New Star Kunjaturu. The bowlers did a great job, isn't it? The one stage when the first over completed, it's a 12 runs on the board. Everyone thought it might be a high scoring game, but afterwards the bowlers, the Farwez, Ajit and Unikrishnan, the 3 bowlers did a great job. Even Dharma bowled second over very well, and because of their contribution, they restricted the opposition for just 33 runs by losing 9 wickets. And very interesting to see that, Gopi, there is no single extras. That's why they restricted them for the little runs. But coming back these two teams, and still remember, we are witnessing that the same match in JD Boys Trophy 2023, when these two teams are met each other in the quarter final, and Team Matrix defeated
New Star Kunjaturu. Now same team again each other. What do you think? Will it going to be enough run here for Team Matrix to defend against Kunjaturu? But one thing is sure that Gopi, just like what Kunjaturu has got some fantastic bowling department, even Team Matrix, they're also very good bowling department, because they're the one, they came into that tournament in the final because of bowlers did a great job. Now once again, testing time for the bowlers of Team Matrix to justify they got really one good bowling department, but sensible batting which is really required for Team Kunjaturu to win the match. Altogether, Gopi, this match seems to be a very interesting and very good match for these cricket lovers. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, और कुछ दिन पहले जेडी बॉयज बंटवाल श्रृंखला में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, जिसमें टीम मैट्रिक्स ने न्यू स्टार कुंजतुर को पराभव किया था। तो निस्संदेह यहाँ पर टीम मैट्रिक्स के खिलाफ न्यू स्टार कुंजतुर बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दे चुका है और उस हार का बदला लेना चाहेगी। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया, न सिर्फ न्यू स्टार कुंजतुर के पास जैसे सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है, उसी तरह की सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप यहाँ पर टीम मैट्रिक्स के पास भी है। तो वहाँ पर यहाँ पर उनके गेंदबाज अपनी क्षमता के अनुसार पहली ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, तो निस्संदेह न्यू स्टार कुंजतुर के बल्लेबाजों पर दबाव आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 34 रनों का लक्ष्य अंडर दिस कंडीशन कुछ ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की बेहतर प्रदर्शन, टीम मैट्रिक्स के गेंदबाज अगर बेहतर प्रदर्शन देते हैं तो निस्संदेह ये लक्ष्य न्यू स्टार कुंजतुर के लिए कठिन साबित हो सकता है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और इस वक्त उन्नी कृष्णन और सदाकुट्टा इस वक्त क्रीज पर मौजूद। तस्लीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। जहां तक तस्लीम का सवाल है, जेडी बॉयज ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था और अपने उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी, रनर्स अप कहलाए थे। आदि महेश्वर के खिलाफ फाइनल मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ता, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने उस टूर्नामेंट में दिया था जेडी बॉयज ट्रॉफी में। और यहाँ पर देखते हैं इस मैच में उनके गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। दाहिने हाथों पर था विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पर 2 कदम आगे जरूर बढ़ाया सदाकुट्टा ने, लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 34 रन लक्ष्य इस वक्त, और दूसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त तैयार। तस्लीम दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट की दिशा में, गेंद निकलती हुई इस वक्त कवर पॉइंट पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन 90 इलाके से नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। 34 रन उन्हें बनाने, 34 दे हैव टू स्कोर इन देयर स्टिपुलेटेड 6 ओवर्स एंड देयर इनिंग स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो। उन्नी कृष्णन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार उन्नी कृष्णन जो कि सामना करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को हल्के से खेलना चाहा, गेंद पहुंचे इस वक्त शॉर्ट कवर पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, निशाना इस वक्त टकरा चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना से नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज तस्लीम गेंदबाजी करते हुए 2 विदाउट लॉस। और इन द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, 34 द टारगेट फॉर देम इन 6 ओवर्स। तो इस बीच कुछ बातचीत जारी है यहाँ पर और खेल है जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। शायद तीसरे अंपायर के लिए दिया गया है इस वक्त। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर
not out. The decision came from the third umpire. Everything perfect for the right-handed batsman, and now once again he is now going to face तस्लीम. गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार तस्लीम. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. सदाकुट्टा इस वक्त सामना करते हुए तस्लीम की गेंदों का. इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद फाइन निकल चुकी है इस वक्त. थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. नो वन इज बैकिंग अप, और गेंद जो फील्डर जो खड़े हुए थे शॉर्ट फॉल लेगा और शॉर्ट थर्ड मैन के थोड़ा सा स्क्वायर गेंद उनके बीच से निकली इस वक्त फाइन, और डीप थर्ड मैन सीमा रेखा की दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. तो यहां पर 4 रन मिल चुके हैं बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में, और जहां तक सवाल है 4 तोहफे के रूप में रन मिल चुके हैं इस वक्त. रन से चाहिए इस वक्त न्यू स्टार कुंजतपुर के लिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है. और इस बीच तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सदाकुट्टा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तस्लीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा. इस बीच स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. उन्नी कृष्णन अपने जूते के फीते को बांधने के बाद इस वक्त तैयार नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और सदाकुट्टा सामना करते हुए तस्लीम की गेंद का. यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट मिडली गेट, और जब तक गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया, गेंदबाज तस्लीम द्वारा रन से नहीं मिलेगा. ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के. बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है न्यू स्टार कुंजतपुर. 8 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. 8 रन स्कोर्ड बाय न्यू स्टार कुंजतपुर, chasing the victory target of 34 in 6 overs. They were a pretty good start. In fact, 8 runs they managed to score after first over. 26 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 5.20 runs per over. और गेंदबाजी पर देखते हैं हमसे दूर वाले छोर से, यानी रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से कौन से गेंदबाज गेंदबाजी पर उतरते हैं. तो इस वक्त गेंदबाजी सौंपी गई है दाहिने हाथ के गेंदबाज के हाथों में. निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ न्यू स्टार कुंजतपुर की पारी में. दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा इस वक्त शुरू होता हुआ उनकी पारी में, और निजाम अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन इस वक्त सामना करते हुए. उन्नी कृष्णन जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. यहां पर देखना यह है कि पावर प्ले का फायदा वो किस तरह से उठाते हैं. केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर उन्नी कृष्णन के लिए, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में. उन्नी कृष्णन ने 1 रन मिलेगा. इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है. तो इस वक्त सदाकुट्टा सामना करने के लिए तैयार निजाम की गेंदों का. यह गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में. दोनों फील्डर इस वक्त टकरा गए, कोल्यूशन, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. उन्नी कृष्णन सामना करने के लिए तैयार. दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. बॉल ऑफ हिज लेग्स, extra quicker delivery came along the carpet, stuck to his leg stump, and that is the end of उन्नी कृष्णन. तो यहां पर उन्नी कृष्णन का बेशकीमती विकेट गिर चुका है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. गेंद देखिए किस तरीके से आई थी, अलोंग द कार्पेट, एक्स्ट्रा पेस के साथ. गेंद को खेलने के प्रयास में चूंकि जगह नहीं बना पाए, और आखिरकार गेंद लेग स्टंप पर टकराते हुए बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 10 रनों के ऊपर. सो न्यू स्टार कुंजतपुर लूज देयर फर्स्ट विकेट. उन्नी कृष्णन डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट.
तो उनका स्थान इस वक्त ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में नजीर, ही इज कमिंग एज अ नंबर 3 बैट्समैन फॉर न्यू स्टार कुंजतूर। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है न्यू स्टार कुंजतूर को अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए। और जहां तक सवाल है टीम मैट्रिक्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए 1 या 2 और विकेटें कम अंतराल में और चंद डॉट गेंदे इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। फिलहाल बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद स्वीप करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त हो चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर बेद्रा मीडिया द्वारा। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, तो ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता, ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर निजाम इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कलेक्शन बिहाइंड द स्टंप्स, डाइविंग लगाते हुए अपने एक हाथ से गेंद को फील्ड कर लिया, क्लिंक बैकअप विकेट कीपर द्वारा, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से अंदर की ओर आते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में नकेला, रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच विकेट उखाड़े गए और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ पॉइंट फील्डर का और विकेट थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया और बल्लेबाज अपने क्रीज से कुछ इंच इस वक्त बाहर रह गए। दूसरा विकेट गिर चुका है और आउट होने वाले बल्लेबाज यहां पर नजीर चिरगोली आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट खो चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक दबाव इस वक्त न्यू स्टार कुंजतूर के ऊपर दिखाई देता हुआ। एक वक्त स्कोर था 10 रन बिना किसी नुकसान के, अब स्कोर है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर और यहां पर एक साझेदारी इस वक्त निभानी है बल्लेबाजों को। तो नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एज नंबर 4 बैट्समैन कार्तिक का इस वक्त तैयार, एक और प्रमुख बल्लेबाज। और जहां तक सवाल है कार्तिक का, तो पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और देख रही है कि उस सफलता के सिलसिले को बल्लेबाजी में क्या वो इस मैच में भी आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। फिलहाल सदाकुट्टा सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप करना चाहा, विकेट गेंद पहुंचे पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा, बाई का इशारा, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए विकेटों के पीछे। 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 overs completed, 4 runs came from this over. Good over came to an end from Nizam. And after 2 overs, still the equal battle is now on. 22 more runs now they have to score for victory. And 24 balls remaining in overall calculation in their innings. Exactly, the required run rate is 5.5 runs per over at this situation for them. और जहां तक सवाल है नए ओवर का, तो देखते हैं नया ओवर कौन सा गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से तस्लीम को इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर से सौंपा गया है। जहां तक तस्लीम का सवाल, अपने पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे, लेकिन कमबैक करने की क्षमता वो रखते हैं। इससे पहले भी कई उदाहरण हमने देखे हैं कई मैचेस में, पहले ओवर में काफी रन प्रदान करने के बाद दूसरे ओवर में तस्लीम ने कमबैक किया है। पिछले कई मैचेस में इसका उदाहरण हमें देखने को मिला है और यहाँ पर देखते हैं इस ओवर में क्या वो कमबैक कर पाते हैं या नहीं। और सदाकुट्टा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 22 नीडेड इन रिमेनिंग 24 बॉल्स, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। कुल मिलाकर मैच नंबर 7 यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रियल स्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजाई मैंगलोर ने। और इस बीच ओवर की पहली गेंद तस्लीम की दाहिने हाथ ओवर द विकेट, हल्के से गेंद को पुश किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़, निशाना इस वक्त चूक चुका है अंतिम क्षण में, निशाना स्टंप्स पर टकरा था तो निश्चित रूप से यहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन द थ्रो वेंट जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट और बल्लेबाज इस बीच 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। अब सदाकुट्टा ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, कार्तिक का सामना करने के लिए तैयार और तस्लीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए
ये गेंद इस बीच गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, वारिस लॉन्ग पर एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पहले कार्तिक के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो काफी धीमा, और जब तक थ्रो को फील्ड करे विकेट कीपर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को छोड़ा था खूबसूरती के साथ, वारिस लॉन्ग पर एक्स्ट्रा कवर के दरमियान जगह बनाते हुए 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल बल्लेबाज कार्तिक और सदाकोटा, और स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 मोर रन्स, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री, 22 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कार्तिक के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, जस्ट सिंगल, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड दिस इज द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। शाम के 4:45 यहां पर बच चुके हैं, धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर कम होती हुई इस मैदान पर, और तस्लीम की गेंद, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए लंबा फील्डर थोड़े से पीछे, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर। ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 6 से नीचे है, अगर हर गेंद पर सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं, कम से कम सिंगल भी बटोरते हैं, तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और अपने इस योजना को वो कार्य रूप में लाते हुए हर गेंद पर, और 17 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। और तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद कार्तिक के लिए ड्राइव किया, सेंसेबल, एब्सोल्युटली सेंसेबल, और गेंद पहुंची इस वक्त वारिस लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 more to get, 19 balls to go in the innings। इस ओवर में अंतिम बार तस्लीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट सदाकुट्टा के लिए, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची गली की दिशा में, 1 रन मिला, और 1 रन के साथ द ओवर हैज बीन केम टू 7 runs came from this over, quite good over in New Star Kunjatu's point of view came to an end, and 15 runs required in remaining 3 overs, 18 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए, 15 needed in last 3 overs, that means in 18 balls, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में कमबैक करने के लिए टीम मैट्रिक्स के गेंदबाज कौन सी रणनीति टैक्टिक्स से गेंदबाजी में अपनाते हैं। तो चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अब सतीश को बुलाना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. The equal battle is on here for the victory in this prestigious United Trophy, the quarter-final. 19 for the loss of 2 wicket, and over number 4 will going to start from the far end. Nizam is the bowler who bowled very well in the previous over, this first over from the far end, from the Rohan Corporation, and needed one more good over for his team. This time going for the reverse, wicket keeper missed it. Absolutely, it's a bad miss. The disappointment for Team Matrix whenever the batsman missing the ball from the bat and the wicketkeeper fails to collect the ball. Of course, it is a little bit difficult one whenever the batsman going for the reverse stroke. Very difficult for the wicketkeeper to judge the line of the ball, and that's why the wicketkeeper misses that completely. Then batsman got a single for that. 20 for the loss of 2 wicket. 14 more runs required for the victory in remaining 17 deliveries. From the far end, Nizam, right arm over the wicket to Karthik. Karthik this time inside. The batter going for the single, chance of run out, but the direction of the throw is not a good end. It's not a good end. They're going for the second as well. This is definitely going to be a disaster. Have a look at that running between the wicket. Doesn't look like the 2 batsmen are running between the wicket. It looks like the 2 deers are running between the wicket. Absolutely unbelievable. This is what you call the grabbing the opportunity, isn't it? This is what you call the grabbing the opportunity of the laziness of the field span of the opposition. 3 valuables are unbelievable. And what could be a certain chance of run out converted into 3 valuable runs. 22 for the loss of 2 wicket.
16 deliveries remaining now. 12 more runs required for the victory. Karthik is a key man. Here is the bowler. Nizam, right arm over wicket to Karthik. This is intelligent, absolutely intelligent. This is a little master. This is a little master looking so good in this particular match. Have a look at that one from him. The diving effort. Even Roland Pinto sir is surprising to see this man. It looks like he's so fine as he wanted to save his wicket from the run out. He's diving to his crease. And have a look at that one jump. Absolutely fantastic. 100% dedication. And what we are watching from Karthik and his partner. 23 for the loss of 2 wickets from the far end. Nizam bowls again. Sensible batting here from the batsman, his partner as well. Looks like Karthik and Sadakutta are doing a great job here for the team. 24 for the loss of 2 wickets. Another 10 more runs required for the victory. 14 balls remaining. Nizam, right arm over the wicket to Karthik. Karthik has again plays it quite nicely down to deep third man region by playing the reverse sweep. Reverse sweep in the sense it's just pedaling that one nicely by playing a horizontal bat. With that single score, moves on to 25 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Again, Nizam. Right above the wicket to Sadakutta. Sadakutta, lovely shot. Beautiful lower of the wrist in dedication. Placement is so good. Karthik is good enough to complete that couple of runs in the non-striker's end. And 2 more to the total. With that, a couple of runs covered. Moves on to 27 for the loss of 2 wicket. Last 2 overs remaining. And new star Kunjaturu required another 7 runs to win this match. Both the batsmen, Karthik and Sadakutta, after losing a wicket of Unni Krishnan, then wicket of Nazir Cherigoli very cheaply. Looks like it's going to be a little bit difficult chance. But after that, these 2 batters really batted as per the condition required. And both are actually played a sensible batting in the middle. Not in the sense of boundaries and sixes, but intelligent bowling by placing the ball here and there, and running between the wicket is one of the impressive part of this particular partnership between these two. They lost a wicket of 2 at the score of 11. Now score is 27. That means a 16 runs partnership between Sadakutta and Karthik is very handy. One more Nizam came into attack from the commentary box end. Nizam Junior, right arm over the wicket. Leg spinner is on action. They're going for the single this time. Opportunity of run out and missed out. The first time seeing that Karthik is not interested for the run. Sadakutta is thought it might be Karthik responding for that run. The Karthik wanted to play the sweep shot against the spin, and luckily that ball just missing the line. Again Nizam balls, beautifully bowled. This is a wrong one, absolutely different ball. The first ball is bowled a leg spin delivery, and Karthik almost made his mind that next ball I want to play some different stroke for the leg spin. All in sudden he bowled a half cutter, fastest one, and Karthik once again missed it completely. Wicket keeper missed it by call by umpire. 28 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. 6 runs required for the victory and 10 balls remaining. Nizam, again the leg spin, beautifully bowled. This is a cunning, absolutely cunning, isn't it? 1 ball leg spin, 1 ball fast ball, another one is excellent leg spin. Very difficult for the batsman to judge when the bowler is bowling the leg spin, when the bowler is bowling the fastest one. The 3 balls, excellent bowling from Nizam. Sadakutta now getting some suggestion from Karthik, and wait and see. The 6 runs still required. 9 balls remaining. Team matrix not really given up this match. Full toss. This is all sometime happening in cricket, isn't it? The premeditated sweep shot he wanted to implement, but that full toss surprised Sadakutta, so that he couldn't manage to take the advantage of that delivery. 5 required, 8 remaining. Nizam, right arm over the wicket bounce. When he bowls that ball, Karthik is so good in it. They're coming back for the second, and this time Karthik will not going to survive. Now again umpire Roland Pinto asking for the third umpire, but one shot.
One shot, that means it's going to be disaster. If it is a run out, for short it's a run out. For short is a third umpire. Yes. The run out which is taken place, already given umpire given the run out. But umpire have to see that the batsman has made the ground. That's is that is a fair run or not? The batsman is reached or not? The batsman is short, then no run will be considered. If the batsman is short, no run will be considered in that particular delivery. The Karthik is the batsman is out. It's a naked eye. Umpire given him out. The third umpire only for checking that the batsman is made his home or not. That's what umpire want to see.
So one run added, one run out which is taken place when they're trying for the second run. So that now 4 runs required for the victory. 4 runs required. Seven balls remaining. Nizam. Parvez is the striker. 7 balls and 4 runs required for the victory. Here is again the bowler bowling away from us. Right arm over the wicket to Parvez. Left leg spin delivery. Nicely driven down to right in the gap towards the mid wicket region. A couple of runs quite easily the batsman will going to get. Excellent placement there from Parvez. This time as a gentle leg spin delivery and Parvez quite nicely plays it down to mid wicket for a couple of runs. Now 2 runs required from the last over. 2 runs required from the last over. And so next match, Durga Konchadi versus Prince Kuttar. So one more good match is coming up. Both the teams really won the match in a close encounter in their first round match. And wait and see how well these two teams will go into fight here for the place in the semi-final. So now it's the last over remaining. Do or die situation for the bowler of Team Matrix. The last over. The ball is in the hands of Mustafa. Can Mustafa will going to do the magic here to restrict the batsman not to get a couple of runs. First ball outside now. They're going for the single, chance of run out and it's gone. Sadakota little bit urgency is shown to get the single here. By doing that he couldn't manage to get the placement right, but point fielder is so quick to react to that run out. It's a stump. Sadakota is back into pavilion. 5 balls, 2 runs required for the victory. 5 balls, 2 runs required for the victory. E1, they managed to get 1 run. They will be the winner as far the fall of wicket is concerned. Because Team Matrix, they lost 9 wickets, but here Team Kunjaturu have lost 4 wickets. They lost 4 wickets. So Mustafa have to bowl all the dotted deliveries if they wanted to win the match. You need to bowl all the deliveries as a dotted delivery. This time match is finished in a style. 100 stroke down to deep square leg in front of square for a boundary by Ajit, and victory here for New Star Kunjaturu defeated their opposition by 6 wickets. So victory for here for New Star Kunjaturu. Congratulations on getting a place in the semi-final of this prestigious United Trophy 2023. 3D Theatre House, Swimming Pool, Gym. So Kunjaturu has got a place in the semi-final, and that semi-final, that is means the first semi-final, will be played tomorrow, the 5th match of the day number 2. Please note, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಮಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ಸಮಯ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಕೇವಲ 30,000 ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಂತ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now it's the time for the man of the match. So the man of the match of this quarter final.
So time to announce the man of the match, and once again, man who put the brake on the run rate of their opposition when it's a first over, which is a costly 12 runs. Then the bowler, one who bowled a second over with the 2 wickets and 3 runs, and second over also bowled brilliantly. It's once again Parvez of New Star Kunjaturu, who was judged as a man of the match for his bowling figure. 2 overs, no maiden, 8 runs, and 3 valuable wickets. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫರ್ವೇಜ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗೌರವದ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಸೊ T-shirt and a cap for the man of the match winner, which is sponsored by Grahini Masala. Thank you very much, Grahini Masala. So we are into the second quarter final of this prestigious cricket tournament. Durga Konchadi versus Prince Kuttar, and both the teams are a very balanced team, and we are expecting some good competition between these two teams. And before the match will go into start, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the match number 8 and last of the day, number 1 of United Trophy 2023, will proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore, is now going to start. And so Durga Kunchadi will take over Prince Kuttar, and the first ball of the match is now coming up. So Durga Kunchadi is now going to bat, and first ball bowled 2 for the leg stump and collected by short fine leg feeder. And there is no possibility of any run. So the bowler Munna continuing the proceedings, and Amit is now going to face once again Munna. और पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है, और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, much straighter line, and he just got the rid of the batsman. Amit departs. Fantastic delivery from Munna, and now Durga Konchadi loses their first wicket. It's not for 1 in the first over. The second quarter-final match of this tournament, United Trophy 2023, is now going to begin. It's just begun, just short while ago, in fact, and first wicket gone in this match. और पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है, 0 पर पहला विकेट खो चुका है दुर्गा कुंचाडी, और अमित आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए एक बेहतरीन गेंद के जरिए मुन्ना ने विकेट प्राप्त किया. और यहाँ तक का सवाल है नए बल्लेबाज का, तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, तो दुर्गा कुंचाडी ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी पर दुर्गा कुंचाडी उतरा था, वो अपना पहला विकेट खो चुका. और प्रिंस कुत्तार ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था. दोनों टीमों ने पिछले मैचेस में संघर्षपूर्ण
तरीके से खेलकर विजय उन्होंने दर्ज किया था और संघर्षपूर्ण जीत उन्होंने हासिल की थी। और यहाँ पर इस मैच में देखना है कि इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल्स के रूप में कौन सी टीम प्रवेश करती है सेमीफाइनल में न्यू स्टार कुंजतुर का सामना करने के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड मिड ऑन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज संतोष का आगमन हो चुका है, स्ट्राइक लेते हुए सचिन और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मुन्ना और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर सचिन ने। जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक बार फिर से गेंदबाज अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुन्ना दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, नॉट फॉर अ रन और गेंद इस वक्त फॉलो थ्रू में फील्ड कर ली गई है। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है दुर्गा कुंचाड़े का, तो एक बेहतर शुरुआत की उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत। पाली की दूसरी गेंद पर विकेट खो जाने के बाद कुछ हद तक दबाव उनके बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देता है और एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में फर्मली स्ट्राइक और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। बेहतरीन ओवर मुन्ना का समाप्त हो चुका। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड and after first over Durga Kunchadi after being losing the toss and put it to bat by Friends Kuttar in the match number 8 of United Trophy 2023. They made a mixed start. In fact, they managed to score 3 runs on the board for losing 1 wicket. Still, in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज डरिल और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और डरिल अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में गेंद निकली, 1 रन मिलेगा। इस बीच तेजी के साथ विकेट जरूर चटका विकेट कीपर ने, लेकिन 1 रन बल्लेबाज से पूर्ण कर चुके थे। 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर और इस बीच अंपायर विकेटों को सही करते हुए और गेंदबाज डरिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। शाम का वक्त 5:15 यहाँ पर बच चुके हैं। दर्शकों की तादाद इस वक्त बढ़ चुकी है। मैदान के चारों ओर जहां कहीं भी नजर फिराए जाए दर्शक इस वक्त नजर आते हुए खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। यह गेंद उछालना चाहा, प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ सचिन की पारी यहां पर समाप्त। Just called for a Marty heave this time and the ball stuck to his back leg and umpire have no hesitation to ruled him absolutely plumb in front. This is an the ball pitched right on the line. In fact, at the last moment just concentrated to middle stump and at the last moment umpire ruled him absolutely plumb in front. Second wicket gone. They are looking in trouble for Durga Kunchadi. 5 for the loss of 2 wickets. So Umesh, the new batsman, the number 4 batsman, is now comes out to the middle for Durga Kunchadi in these critical circumstances, and he is now going to face the right-handed bowler Daryl. Here he comes. अगली गेंद लेकर डेरिल इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, गेंद जाती हुई वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress.
कुल मिलाकर एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए फ्रेंड्स कुत्तार की गेंदबाज इस वक्त कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट, ये गेंद उछालना चाहा लेग स्टंप से बाहर, पॉइंट पर रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो इस वक्त काफी ऊंचा और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं और इस एक रन के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का तो कोशिश जरूर कर रहे हैं दुर्गा कुंचाड़ी के बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। और डेरिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के से गेंद को पुश किया, इस वक्त गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को हल्के से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 8 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार डेरिल, ये गेंद बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ wicketkeeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 8 for the loss of 2 wickets for Durga Kunchadi। और जहां तक सवाल है डेरिल का तो गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर बेहतरीन गेंद थी। ओवर के समाप्ति, 1 more good over in friends Kutta's point of view captain and 2 overs completed. After 2 overs still the batsmen of Durga Kunchadi are now searching for the right track. They managed to score only 8 runs on the board after completion of 2 overs and a fantastic start made by the bowlers of Friends Kuttar in the first 2 overs. और 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो कम से कम 30 का आंकड़ा उन्हें यहाँ पर पार करना होगा, 40 का आंकड़ा उन्हें यहाँ पर पार करना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मुन्ना ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज उमेश इस वक्त सामना करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर मुन्ना इस वक्त तैयार। अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार 4 खिलाड़ी। और जहां तक सवाल है इस वक्त सीमा रेखा के पास के फील्डिंग का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात है और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मुन्ना तैयार, फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज उमेश सामना करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ दुर्गा कुंचाड़ी की पारी में। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद उछाला स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है। शायद गेंद अंतिम क्षण पर थोड़ी सी दीजी रही थी और इससे पहले की गेंद जमीन पर टिप्पा खाए, गेंद को लपक लिया गया इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा और तीसरा विकेट गिर चुका और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियां और बढ़ चुकी हैं दुर्गा कुंचाड़ी के लिए। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर दुर्गा कुंचाड़ी। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। So number 5 batsman is now comes out to the middle for Durga Kunchadi, अजय। जहां तक अजय का सवाल है, पिछले मैच में अंतिम ओवर में छक्का झटकर उन्होंने अपनी टीम को विजय दिलाई थी और यहां पर देखना यह है कि वो अपने टीम के लिए उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पर इस मैच में दोहरा पाते हैं या नहीं। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अजय का खाता यहां पर खुल चुका है और
एक बार फिर से गेंदबाज मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष सामना करते हुए ये गेंद इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड दिस इज अ क्लीन हिट इट्स गॉन ओवर द फेंस इट्स अ ह्यूज वन just caught up right from the middle of the bat and dispatched it in a style on the wall of commentator box. So huge one came from the bat of संतोष और इस छक्के के साथ कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज दुर्गा कुंचाड़ी के और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंच चुका. परफेक्ट स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ संतोष नाउ और इस वक्त गेंदबाज मुन्ना तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया. कोई फील्डर वहां पर नहीं गेंद तक पहुंचना चाहा इस वक्त लेकिन नहीं पहुंच पाए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऑन साइड पर गेंद को उछाला था. वारिस लंगोन और डीप इन विकेट के बीच जो लंबा गैप है वहां पर और चंद टिपों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसर्स जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है. 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड फिफ्थ टाइम इन दिस ओवर मुन्ना कम्स दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ये गेंद इस बार उछाला इस वक्त अजय ने मिड विकेट पर लेकिन रन इस बीच नहीं मिलेगा. संतोष ने उछाला था और रन इस बीच नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में अंतिम बार मुन्ना तैयार संतोष के लिए. कुछ हद तक आक्रामक नजर आते हुए इस वक्त संतोष छक्का जड़ने के बाद और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार चिप किया डाउन टू लॉन्ग ऑन ही गेट्स अ सिंगल एंड कीप्स अ स्ट्राइक और 3 ओवर की समाप्ति 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर. एक बेहतर ओवर रहा दुर्गा कुंचाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू में. पहला बेहतर ओवर जिसमें 10 रन बने. 10 रन केम फ्रॉम दिस ओवर और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को. आइए सतीश. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. So, after being a slow start from the batters of Durga Kunchadi, then Ajay and Santosh came into middle and Santosh started to open up a little bit in this previous over. And first ball of the over number 4, this time against Santosh wanted to get a big stroke against the bowling of Daryl. Daryl is a good bowler so far in the previous match. Also, he's bowled a very good line and then for Friends Kuttar. Once again, he's got a responsibility to restrict the runs after that little bit expensive last over, which is bowled by Munna. 10 runs which just came from that last over. And here is Daryl. Right, over the wicket going for the mighty stroke, but again, not really get that one from the middle of the bat. Ball is in there for a while, but safely landed. No man lands down to deep long off region. Ample time for Santosh to complete the single. With the single, score numbers on to 19 for the loss of 3 wicket in the over number 4th in progress. Outstanding cricket tournament is progressing here. The real estate group registered Bejai organizing this fantastic cricket tournament, and look at the crowd here. It doesn't look like it's going to be a weekdays. It's all we can see. There's some good number of spectators enjoying the game of cricket here, and Ajay this time wanted to hit a big shot in the occasion. Of course, putting all his muscle power for that stroke, but didn't got enough bat onto that. He got a single for that. With that single, score was on to 20 for the loss of 3 wicket. Here is again Daryl, right arm over the wicket against the line. Wanted to swing that one on the onside region, but it's a difficult line. Of course, Santosh is a very good striker of the ball, especially the onside region is concerned. Sometimes it's a line which seems to be difficult to play that kind of cricketing stroke. Daryl knows that he can't ball that line around the middle and off leg stump, so he bowled outside and off stump. This time again, Santosh wanted to get that one on the onside region, but again, Daryl is looking so good in this particular over. Leg by call by umpire. Again, this is just following the batsman, seeing the batsman disturbing him by moving here and there. Wanted to disturb the concentration of the bowler, Santosh. But Daryl is almost stick with this line, isn't it? You know exactly what the batsman will going to do here. So he bowled a very tighty line. 21 for the loss of 3 wicket. Daryl.
Right arm over the wicket. This time again Ajay leaning into the drive, square driving that one point beautifully down to backward point. They go with the second. Yes and no's, and at last they managed to complete that couple of runs. Santosh is looks like once Ajay is hesitated for the second run. That's where Santosh a little bit stopped, and Ajay once again realizing that yes I can complete that second run. That's only because of the throw which is not really up to the mark from the fielder. Otherwise, opportunity of run out. It's going to be a disaster if Ajay or Santosh, one of them, will going to be out in the form of run out. Going to be difficult for Durga Konchari to get some good score. Now 23 for the loss of 3 wicket. Still, it's a run rate under 6 runs per over. 5.75 runs per over is the run rate progressing here, and 2 overs remaining. And Durga Konchari have to get some good score in the remaining 2 overs. Of course, having these two destructive batsmen in the middle. And I think they can get another 15 runs. So wait and see. The French Kutar so 23 for the loss of 3 wicket, 4 overs completed. Vishwas, the captain of Friends Kuttar, very confidently gave the ball to the Vishwas, and wait and see how Vishwas will going to justify the Vishwas of their captain. And here is Vishwas bowling away from us. This is a good bowler for Friends Kuttar, Vishwas, and from the commentary box, and right over the wicket bounce this time again. Oh, opportunity of caught behind. Here is Vishwas is lost his balance after delivering the ball. Looks like maybe a little bit slippery out there in the bowling stride, and might be a little bit problem for him to get the right grip in the negation because of the reaper, which is the finest part of the reaper. It's very difficult for a bowler to grip when you're putting the steps into that reaper. 23 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Vishwas balls to Santosh. Santosh going for one more expansive drive. He got a little bit bat onto that, and before the square leg fielder will go to run to front to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. 24 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Ajay, the one of the very destructive batsmen, came into bat, now came into strike in fact, and bowler Vishwas will go into bowl third time in this over, bowling away from us. Right arm over the wicket to Ajay. Ajay this time balls just going down the legs, and they wanted to get the single there. Oh, directed, I think is gone. Santosh, as absolutely a laziness there from the batter in the negation. And Naushad once again is there in the deep fine leg. Have a look at the throw from Naushad. This is what you call the presence of mind, isn't it? Even Santosh is not really thinking about that. That fielder will going to throw the ball into the striker's end, non-striker's end. But Naushad has been outstanding, and again picks the ball quite beautifully. But presence of mind is that from Naushad. It's not so easy when you are seeing the opportunity in the non-striker's end. You know exactly the Santosh wicket is so important. So he returns the ball. Not only returns the ball, but he is shying at the stumps. Excellent throw from Naushad. And Santosh is back onto pavilion after scoring 13 valuable runs out of 14 balls. He's back into pavilion. So far, it's a good over for Vishwas. Bowling away from us. Right arm over the wicket, Ajay. Again, that's going down the leg stump. It's going to be a disaster, isn't it? Consecutive 2 wide deliveries again. It's a 26 for the loss of 4 wicket. And Praneeth is the new batsman in, just came into middle. And the Ajay is still there in the middle, just waiting for one good delivery which he wanted to dispatch. And Vishwas is not really giving any opportunity. So far, I think he bowled. This time, what you're talking about is waiting for the one delivery where you can dispatch that one mighty cricketing stroke. Absolutely the muscle power. This is a one more cricketing stroke I want to say in the evening. Very difficult to get the distance. You never find the sixes in the evening in that region. That's only because of the muscle power of what Ajay has got. Absolutely terrific shot. This is once again Ajay for you when he is in a great rhythm. 32 for the loss of 4 wicket. Vishwas.
Right arm over the wicket. Again opening the face of the bat, guiding it down the third man region. They're running out looking for the second, and they can manage to get a couple of runs quite easily. Excellent batting there from Ajay. They quickly realizing that ball which is not in his hitting zone. So he cleverly, delicately played it down to third man region for a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 34 for the loss of 4 wicket. Vishwas back to his bowling mark. 11 runs already conceded in that over. Vishwas with a short run up. Right arm over the wicket. Bounced Ajay. Ajay going for the square drive. One of his favorite shot, but missed it completely because of last minute. That ball has got extra bounce. And looks like it's from the bat, means it's opportunity for Nikhil behind the stump. And he missed the catch. It's a catch opportunity caught behind the wicket. And Nikhil just missed that opportunity. And batsman Ajay survives. That brings Praneeth into strike now. 35 for the loss of 4 wicket. Slowly, Durga Konchadi the back into this game. Went for the reverse stroke, but the line is so good here from Vishwas. Didn't allow the batsman settle for the big reverse stroke, but got a bat onto that, Praneeth, so that he able to retain the strike for the next over. So over number 5 completed. It's expensive over. 13 runs which is came from that over. That's only because of the 6 which is came from the bat of Ajay, and then 2 extra deliveries evolved in that over. Altogether 13 valuable runs which is came for Durga Konchadi against Friends Kuttar. 36 for the loss of 4 wicket. Now last over remaining, and if these two batters able to get at least 8 to 10 runs in this last over, then the 45 plus is definitely going to be a good total to depend in this condition, especially in the evening condition. So very, very carefully our Friends Kuttar, that in the last over they desperately wanted to restrict the runs. They desperately wanted to restrict the runs of the opposition, from the opposition. Pradeep brought into attack. Pradeep is a man who finishes the match for his team. The previous match with the 6. Now wait and see how Pradeep will going to contribute from the ball. Right arm round the wicket. Praneeth going for the drive. This is not a good thinking, I want to say, from Praneeth. Seeing that Ajay is there in the non-striker's end, he himself wanted to go for the big shot, misses the line completely. Then wicketkeeper behind the stump collects the ball back to bowler. Good start there from Pradeep. Starts with a very, very tidy line, angling across around the wicket. The ball which is angling across away from the right-hander batsman. There's a very good line to ball when you're bowling round the wicket. Pradeep bowls to Praneeth this time off the toes, plays it down to short mid-wicket region for a single. With that single, scoreboard numbers on to 37 for the loss of 4 wicket. Now Ajay back on strike. For Ajay, 1 at deep long off, 1 at wide-ish long on, 1 at deep mid-wicket, 1 at square leg in front of square, 1 fielder down at deep cover point. That is a fielder is in the deep. And short backward point, short extra cover, short mid-wicket, short fine leg. The fielders inside the ring saving the singles. But Ajay is not a kind of batsman who can happy with the singles, but certainly is dealing with the final over. He will look for some big shot. 37 for the loss of 4 wicket. Pradeep third time in this over. Right arm over the wicket. This time Ajay not agree with my point. He wanted to slap the ball down to fine leg region for a delicate boundary. Maybe the intention of Ajay that he wanted to play that one very fine, because fine leg inside the ring, so that he can get the single for that. Seeing that Pradeep is bowling a very strong line along the carpet and with the pace, so that is missed it completely. 38 for the loss of 4 wicket. Pradeep bows. Praneeth inside edge of the bat. Ball very good. Direct it now. Umpire says not out. And Ajay is safe in the negation, so that rightly so. Umpire not interested to call for the third umpire. Rightly so. Ajay already is came into the striker's end very easily. So with that single run, score numbers on to 39 for the loss of 4 wicket. Now last 2 deliveries remaining. So far Pradeep handled the pressure very well. Just like I mentioned earlier, Friends Kuttar needed 1 very good over here, because any score 40 to 45 plus is going to be a very difficult target to chase down in the evening. And so far Pradeep did a great job. 4 deliveries, just 3 runs. Pradeep from the far end. Pass umpire Mohan Ayadi. Right arm over the wicket. 1-handed cricketing stroke. But then Ajay is definitely coming for the second. This time the throw coming from the deep, and Nikhil missed it. Will it go into be a big miss?
Definitely it's going to be a big miss if Ajay will going to finish this innings with the big shots. If Ajay will going to hit the big shot in the last ball of the over, it's going to be a big mix from Nikhil, because Ajay always going to be a danger one to any bowler. So 41 for the loss of 4 wicket. Last ball remaining. Pradeep back to his bowling mark. So far he did a great job. Really need to appreciate Pradeep in this final over, handling the pressure very well. But job which is not yet over. One ball he need to bowl very good line. But Ajay wanted to finish the innings winner style. Right arm round the wicket bounce. Good delivery outside edge of the bat. They're running hard, looking for the second. But this time definitely going to be a run out. Fantastic over there from Pradeep. Really good over. Rohan Corporation. 6 runs came from that over, and at last Durga Konchadi managed to score a 42 valuable runs at the rate of exactly 7 runs per over, and this is a target of 47 to win the match for team Friends Kutta to qualify for the semi-final. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 is the total score. 43 to win this match. The target is which is 43. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, and 42 which is the total score. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ And ಕ್ಲಬ್. it's going to be very interesting to see how Friends Kutta will going to get this ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ in their ಬನ್ನಿ. when they are going to bat here. But a very good session for each and every spectators. Just I mentioned about today, even it's a Wednesday working day. Have a look at that crowd here. Absolutely a good crowd, very good number of crowds enjoying the game of cricket. Even it's a local poll, but today each and every team has played a very good game of cricket with the true spirit of the game, and all the matches really very exciting. And the last match of the day number 1, it's more excited, so that we wait and see how these two teams will going to fight for the victory in the place in the semi-final. And before the innings will going to start here for Friends Kutta, time to change in commentary box as well. And Gopi is coming back to this match. It's a semi-final, and both the teams well deserved. Quarter-final, correction. This is the quarter-final, second quarter-final of this day number 1, and winning team will going to get the place in the semi-final. And altogether, Gopi, these two teams, Durga Konchadi and even Friends Kutta, both the teams came into the quarter-final with some thrilling victories, especially I want to mention about Friends Kutta last ball victory in the previous match, when it's 6 required for the victory. The batsman Pradeep finishes the match in a style. And coming back to Durga Konchadi, when the match is completely out of the hands, Ajay came into bat and he finished the match in a style. And here also they started very slowly, and even progress was very slowly, but in the end they finished very rapidly, and especially because of Ajay once again rescuing Durga Konchadi from the low score. And 42, I think it's a very good score to depend in this last session. But I think Gopi, Friends Kutta, you cannot underestimate their potential in the batting department, isn't it? Because all we can see that they got some talented players like the left-hand batsman Nikhil to start with. They got some players like Naveen, Mahesh. All are the quality players, and more than anything else, Gopi, Tyagraj is a little bit in this particular tournament, looks like he's not in that much of a good form, but he's also very danger man. Once he gets his rhythm, he will going to be the difficult batsman for any opposition. So that considering all this fact, Gopi, looks like this match is going to be more interesting, and the match still now I think it's going to be anybody's game. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर दोनों टीमें रोमांचक जीत के साथ इस श्रृंखला के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है, फ्रेंड्स कुत्ता और दुर्गा कोंचाड़ी। और यहाँ पर भी दुर्गा कोंचाड़ी ने काफ़ी धीमी शुरुआत की थी, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बनाते, लेकिन उसके बाद अजय की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत एक इस वक्त चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है।
यहाँ पर दुर्गा कोंचाडी अब 43 रनों का लक्ष्य वो प्रदान कर चुका है, चुनौती भरा लक्ष्य। और देखना यह कि फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है 7.17 रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम, 43 दे हैव टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 6 ओवर्स विद हेल्प ऑफ 10 विकेट्स, दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और देखते हैं यहाँ पर उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और खासकर त्यागराज के बारे में आपने फरमाया, त्यागराज कुछ खास अपना असर नहीं दिखा पाए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनके पास वो क्षमता एबिलिटी है कि वो एक लंबी पारी यहाँ पर खेल सकते हैं। और दूसरे 2-3 क्रमांक के जो बल्लेबाज है उनमें भी वो एबिलिटी क्षमता है, अगर वो अपनी क्षमता के अनुसार खेलते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर फ्रेंड्स को अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है इसमें। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच गेंद को छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है बिना किसी रन के, बिना किसी विकेट के पहले ओवर में। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार भगवान न गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे थ्रो सीधा पर रोलैंड पिंटो को इस वक्त टकराता हुआ। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस बीच मिलेंगे एक, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर शुरू हो चुका है और भगवान ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निखिल सामना करने के लिए तैयार रहा। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए भगवान और कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और इस बीच भगवान दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निकल के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए पैरों पर टकराए। ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे, नहीं कर पाए और इस बीच लेग बाय के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए त्यागराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच भगवान अपनी ओर की अगली गेंद लेग कटर गेंद परिवर्तन के तौर पर लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और गेंद हालांकि घुमावली जरूर है लेकिन कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर भी निकलती हुई। और जहां तक सवाल है लाइन के बाहर टिप्पा खाने के बाद लाइन के बाहर जो कि टिप्पा खाई, और जहां तक सवाल है इस वक्त सही तरीके से अंपायर ने इस वक्त उन्हें नॉट आउट घोषित किया। तो इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बाहर, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर और भगवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट। और 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज भगवान न कर चुके हैं 4 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद। जहां तक कंपैरिजन देखा जाए तो 3 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर दुर्गा कुंचाड़ी ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद, और 4 रन यहां पर जोड़ चुका। तो सतीश इक्वेशन रिमेंस द सेम, लेकिन 2 ओवर के बाद एक्सेलरेशन हुआ था उनकी पारी में दुर्गा कुंचाड़ी के बारे में। यहाँ पर 4 रन जोड़ चुका है, अब 39 रन बनाने हैं। अब कुछ हद तक बल्लेबाजी में तेजी यहाँ पर जरूर लानी होगी उनके बल्लेबाजों को। Absolutely, Gopal. The kind of shot which is required for Durga Konchadi, Bhagwan really bowled a very tidy line, isn't it? Keeping this 2 batsmen quiet is not easy, isn't it? 2 batsmen, the recognized batsman, and Nikhil is a promising left-hand batsman, and Bhagwan, a little bit correction, Tyagoraj is one of the destructive batsmen. Keeping these 2 batsmen, keeping that 2 batsmen quiet is definitely going to be a great job done by Bhagwan. But I think comparison, just like you mentioned about it, not a big difference. 3 runs which is scored by Durga Konchadi, but they got acceleration in the mid stage of their innings and end of their innings. And wait and see, because they're chasing the target, isn't it, Gopi? The Prince Kutta knows that this is the last over of the power play, and wait and see how these 2 batsmen will go to capitalize this last over of the power play. In this over, definitely they wanted to get more than 10 runs in the second over. Exactly, सतीश। यहाँ पर दूसरे पावर प्ले ओवर में कम से कम 10 से ज्यादा रन उन्हें इस वक्त बनाने होंगे, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ऑफ स्टंप से बाहर अजय की गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला
दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। अजय एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार निखिल के लिए ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, मत स्ट्रेट लाइन, और गेंद लगभग विकेट कीपर के हाथों से टकरा कर सीधे स्टंप्सों पर इस वक्त टकरा चुकी है। अपील इस वक्त जारी है और अंपायर ने इशारा किया कि तीसरे अंपायर इस वक्त के लिए, और देखना यह कि तीसरा अंपायर इस वक्त क्या निर्धार देते हैं। He's bowled him. The ball was just kissing the stumps at the last moment and bells are disturbed. तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है और यहाँ पर जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से गेंद निकले थे अंदाजा लगाना यहाँ पर मुश्किल था कि यहाँ पर गेंद स्टंप्सों पर लगी या नहीं, और तृतीय अंपायर यहाँ पर परामर्श करने के बाद इस वक्त आउट घोषित करते हुए, और आउट होने वाले बल्लेबाज निखिल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 5 रनों पर पहला विकेट यहाँ पर खो चुका, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। अब 38 रन और चाहिए विजय के लिए, और कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं 23। 38 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज। जहां तक सवाल है इस वक्त साझेदारी का, तो इस वक्त न सिर्फ फ्रेंड्स कुत्तार को इस वक्त साझेदारी निभानी है, बल्कि तेज साझेदारी उन्हें यहाँ पर निभानी होगी। खासकर पावर प्ले के जो 5 गेंदें बचे हुए हैं उन 5 गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन उन्हें यहाँ पर बटोरना होगा अगर उन्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। तो देखते हैं नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। नंबर 9 जर्सी पहने हुए इस वक्त त्यागराज ने उनसे कुछ बातचीत की और वापस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए नौशद नए बल्लेबाज, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार अजय की ओर की अगली गेंद का। 38 नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 29 डिलीवरीज, इन फैक्ट 29 balls and 38 runs more. Now they have to score for victory. और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार अजय। अपनी ओर की अगली गेंद नए बल्लेबाज नौशद के लिए, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं, और जब तक गेंद को वहाँ पर फीड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। त्यागराज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और यहाँ पर दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और खासकर जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका पावर प्ले का
फायदा उठाना बेहद जरूरी बन चुका है फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों के लिए इस वक्त। और देखना यह है कि त्यागराज इस वक्त पावर प्ले का किस तरह फायदा उठाते हैं करारे स्ट्रोक्स खेलने के जरिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर अजय इस वक्त तैयार, त्यागराज के लिए उछालना चाहा, गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को पहले ही भांप लिया था कि बल्लेबाज थोड़ी सी स्टंप्स को कवर करने वाले, मिड और लेग स्टंप पर गेंद फेंकी, गेंद बल्लेबाज त्यागराज के पैरों पर टकराती हुई और बैक टू द बॉलर की दिशा में जाती हुई रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर अजय एक बार फिर से ये गेंद उछालना चाहा, चूके गेंद सीधे वहीं विकेट कीपर के हाथों से छूटकर वहीं पर गिर गई और आखिरकार रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज अजय और 6 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त अजय तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती है बैक टू द बॉलर की दिशा में, एक बार फिर से डॉट गेंद। तो सिर्फ 2 रन इस ओवर में अब तक अजय प्राप्त कर चुके हैं और एक और बेहतर ओवर साबित होता हुआ दुर्गा कुंचाड़ी की पारी में। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और अजय इस वक्त अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ दिया है और थोड़ा सा लेट मूवमेंट विकेट कीपर द्वारा, आखिरकार गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और ओवर समाप्त हो चुका है। तो एक और बेहतर और दुर्गा कुंचाड़ी की पारी में समाप्त हो चुका है जिसमें 2 रन बने और इक्वेशन अगर सतीश इक्वेशन देखा जाए तो 2 ओवर में 8 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर दुर्गा कुंचाड़ी ने, जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स कुत्ता ने बनाए 6 रन। तो इक्वेशन रिमेन स्टैंड्स ऑन द सेम, लेकिन बाकी के 4 ओवर में कमबैक किया था दुर्गा कुंचाड़ी के बल्लेबाजों ने और यहाँ पर कमबैक करना, लेकिन इस वक्त वो रन का पीछा कर रहे हैं और निस्संदेह इस वक्त उन्हें रन बनाने हैं 37 रन 24 गेंदे 24 बॉल 37 रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ हद तक लक्ष्य कठिन जरूर है, लेकिन एक गट्सी बैटिंग दिलेर भरी बल्लेबाजी निस्संदेह इस वक्त फ्रेंड्स को तार को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। Exactly, Gopi. It is psychological advantage when you are depending the total, isn't it? And we are just talking about the comparison. It's not a big difference. There are 2 runs difference after completion of 2 overs between these two. But their batting first, they know they doesn't know exactly what target they're going to chase. But here is Prince Kutar. They knows that what kind of runs they're chasing. So under pressure here is that for Prince Kutar is that after getting that slow start, the asking run rate which is climbing up, isn't it? It's a 9.75 runs per over is the required now onwards for team the Friends Kutar, and that's a big problem, Gopi. And at the same time, Tyagaraja little bit struggling. Is not really looks like is that much of comfortable against the bowling of especially the Ajay Raj is tested him with some fantastic piece of bowling. And but having Naushad, Gopi, if you remember me or not, yesterday when he is played for Makyar, Brothers Makyar, his team has become the champion, and one match this man is changed the complexion of the game and hitting boundary and 6 and got the victory for his team. So that I think having Naushad in the middle, having Tyagaraja in the middle, job which is not yet over from the bowlers of team दुर्गा कुंचाड़ी। एग्जैक्टली सतीश, नौशाद ने कल ही खेले गए मैच में टीम फ्रेंड्स मक्यार का प्रतिनिधित्व करते हुए जब 3 गेंदों पर 11 रन बनाए थे तब एक चौका और एक छक्का झड़कर अपनी टीम को विजय दिलाई थी। यहाँ पर गेंद अपील और इसी के साथ नौशाद का विकेट गिर चुका है फ्रॉम इन फ्रंट। और नौशाद के बारे में हमने जिक्र किया कि उनकी उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है फ्रेंड्स कुत्तार के लिए, और पहली गेंद पर उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट ऑफर किया था और देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, और धनुष की गेंद थी, धनुष जो की गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और लगभग फुल टॉस के तौर पर गेंद आए थे। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, गेंद पैर पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े और कुछ हद तक सोच विचार करने के बाद अंपायर ने अपनी उंगली यहां पर उठा दी। तो नौशाद का विकेट गिर चुका है और 6 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है फ्रेंड्स कुत्तार, एंड नाउ दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो नए बल्लेबाज डेरिल इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए डेरिल के लिए, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार धनुष दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई। निस्संदेह इस वक्त बाउंस बैक करना है तो एक तेज साझेदारी क्विक फायरिंग पार्टनरशिप इस वक्त निभानी होगी फ्रेंड्स कुत्तार को कम बैक करने के लिए। और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर,
और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए डेरिल के लिए गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट पिच विकेट पर, क्लीन कलेक्शन, एक रन मिलेगा इस बीच। इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना 2 विकेट के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन्स आर हार्ड टू कम बाय एट दिस सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ फ्रेंड्स कुत्तार। नाउ गेंदबाज धनुष, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन दिस टाइम, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूंकि इस गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस बीच मिलेंगे एक और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, धनुष एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर फुल टॉस, पुल दैट वन दिस टाइम बट नॉट कन्फर्ज द गैप, क्लीनली कलेक्टेड इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 9 रन अमित फील्डर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 2 गेंदें अब कुल मिलाकर इस ओवर में बाकी और धनुष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए त्यागराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार त्यागराज ने गेंद को उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, प्लेसमेंट कुछ खास नहीं रही, एकमात्र रन फिर से मिलेगा। 10 रन 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, स्टील बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, धनुष एक बार फिर से तैयार, इस बार डेरिल सामना करते हुए जो 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद डेरिल के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो और इस बीच धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सफल हो चुके हैं, ऑन साइड पर उछालना चाहा और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है डेरिल के रूप में और दूसरा लेग भी 4 विकेट और गेंद को सफल होकर ऑन साइड पर उछालना चाहता चूंकि और यॉर्कर लेंथ गेंद थी और जहां तक सवाल है रनों का तो यहां पर रन नहीं मिले, विकेट गिरा उनके लिए। तो इस बार 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 3 ओवर्स कंप्लीटेड। सो हाफ द वे मार्क और सतीश 32 रन चाहिए, 7 विकेट सुरक्षित है, 18 गेंदें बाकी है लेकिन पहला 3 ओवर का जहां तक सवाल है तो मैं कहूंगा फर्स्ट 3 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ दुर्गा कोचाटे और बाउंस बैक करना है तो इस वक्त बचे हुए 3 ओवर्स में फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों को तो कुछ एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी यहां पर अब अपनानी होगी। Well, exactly, Gopi. It's not a kind of start what Prince Kuttar needed to get, and when they were chasing a total score of 43 to win the match. That's why, Gopi, that's earlier just I'm pointing out that the second session is not easy, especially in the evening in UCG ground when it's going to be a 42 runs, 43 in the second session, always going to be a big ask. And if you wanted to chase those runs, they need to get some good start, especially using that power play is very important. But so far, I think Friends Kuttar fails to, not only they fails to use that power play over, but even after that power play, Dhanush bowled brilliantly. And 3 overs, 11 on the board, but now it's a do-or-die situation for Friends Kuttar. Having Thagaraj and Mahesh just came into middle, one more good striker of the ball, and wait and see how well these two experienced campaigner will going to do the job for Friends Kuttar. This time Thagaraj dries that one, just like we're mentioning about the lack of placement again there from Thagaraj. Of course, he just dries the ball powerfully, but the placement is not good enough to get any kind of big stroke. Just a single, and with that single, Skoban Namuzan to 12 for the loss of 3 wicket in the over number fourth is in progress. Ajay, after that successful first over, he bowling his second over. Right arm over the wicket to Mahesh. Mahesh this time missed it completely from the bat. Wicketkeeper also fails to collect the ball neatly. Each and every dot ball will go in to create the problem for Friends Kuttar to climb this mountain of runs. Of course, it looks now mountain of runs because 100 is creeping up. Now it's 11.62 runs per over to win this match. Ajay, right arm over the wicket, drives that one nicely down to deep mid wicket for a one ball. Looks like wait for the umpire signal. Ball just landed inside the boundary line, just missing that 6 by Mahesh. Just an inch aside, so looks like that ball is just landed just inside the boundary line, and looks like that was a full toss from Ajay. I want to see that. Of course, taking that one in the low full toss, and Mahesh drives that one down to mid wicket into the cow corner for
for a boundary there. Much required boundary came from the bat of Mahesh and for Friends Kuttar. 16 for the loss of three wicket. That boundary will going to give little bit confidence for the batter as again Ajay. Right arm over the wicket. A quicker one, a faster one, but dripping down the line. Look at his brother Ajay Vijay in the short third man. He thought ball is coming to his left, so he's just slipped out. But wicketkeeper behind the stump did the rest. Again, lovely delivery. Beautifully bowled there by Ajay. Good comeback. And one more dotted delivery. 17 for the loss of 3 wicket. 26 more runs required for the victory. And this is over number 4 is in progress. Ajay bowls again. Wicketkeeper is really very hard to find the ball behind the stump. Ajay again defeating the bat of Mahesh. After that boundary, it looks like the Mahesh is not really able to take the advantage of that boundary, because after that boundary maybe the batsman Mahesh a little bit aggressive frame of mind, but bowler is using that aggressive frame of mind of the batsman very well by bowling that strong line outside the line of off stump. So the 17 for the loss of 3 wicket. Umpire Roland Pinto and umpire Mohan Ayade having some conversation between them, and they are now going towards their respective position. 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Again Ajay from the Rohan Corporation and bowling last time in this over. 20 boundaries and 10 sixes so far in this tournament. Bowl him, clean him up. This is one of the weapon Ajay loves to include in this over. This is the fastest delivery. They're using his arm very well to get that much of quickness. The Mahesh has got no answer for that particular delivery. Absolutely unplayable, isn't it? Absolutely unplayable. Yorkerland with the pace, and Mahesh completely misreading the Yorkerland delivery, and is back into pavilion. 17 for the loss of 4 wicket. The over number 5 is in progress. Still it's a long way to go for Friends Kuttar. And now the batsman just walking towards the middle. I think is Pradeep, the man who hits the 6 in the last ball. When it's a 6 required from the last ball, even the match which is tied because of that 6, scores are leveled, but because of the fall of wickets is concerned, they won the match against Deadly Kankanadi. And now in this match, I think Pradeep have to play a different role. In this particular match, you need to play a different role along with Tyagaraja, because now it's a do or die situation. 26 required, 13 runs per over the required run rate, and Bhagwan is brought into attack. Bhagwan, one who bowled a power play over very well with just a couple of runs. Now wait and see. After that power play, he bowling the 5th over of the innings of their opposition, having some restriction in the having some fielders in the deep. One at square leg, one at mid wicket, one at deep long on. Fielder is deep long off, deep one fielder at deep cover point. 17 for the loss of 4 wicket. 26 required from this time. Oh, Asif. That is a slow reaction coming from the field. The fielder in the inside the ring, and before the fielder from deep extra cover to run across his right to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. 19 for the loss of 4 wicket. Looks like first very confident looking stroke which just came from the bat of Tyagaraja. Just up and over the infield to got a couple of runs. 19 for the loss of 4 wicket. Bhagwan bowling away from us. Right arm over the wicket. This time a low full toss outside line of off stump, and Tyagaraja this time missed it completely from the bat. By call by umpire. One more addition to total. 23 required from 10 balls. Now Pradeep is back on strike. The little master. 23 required from 10 balls. Bhagwan. Right arm over the wicket. This time again fantastic leg cutter. This is a really good strategy from Bhagwan. Once it looks like he's bowling a simple full toss delivery. It's not a full toss. It's a low full toss, almost outside the line of leg stump, and just getting some leg cutter. And this is a really good to see. The Bhagwan is this time a leg cutter. Again, this time Pradeep hits the ball down to square leg region for a single. With that single, score moves on to 21 for the loss of 4 wicket. 22 more runs required for the victory in remaining 8 balls. These last two deliveries very important for Tyagaraja to get one big shot if he wanted to back at this game. Bhagwan, right arm over the full toss. He hammering it down. Will it go into a chance for the fielder? It's a 6.
Just like I mentioned, Tyagaraj, he wanted to get one big shot in the remaining 2 deliveries of this over, and that time Bhagwan bowled a juicy full toss. Have a look at that one, full toss, and Tyagaraj hits that one over and out of the park for a 6. Now it's a very interesting 27 for the loss of 4 wicket, 16 more runs required for the victory in remaining 7 deliveries. This is cricket is all about. This is why the spectators still they are not left the ground. They know exactly, having Tyagaraj in the middle, the match which is not yet over. Here is Bhagwan. Bounce lofted, but I don't think he will going to get the distance. But he's got the fielder in the deep extra cover region. They're coming back for the second. And this time umpire says it's not out. A couple of runs has been taken. So over number 5 completed. Chasing 43 to win this match is a 29 for the loss of 4 wicket. And Gopi, I think you are got ready to reach your home. Just to stay a little bit. Match which is not yet over. And because of that 6 in the previous over, looks like it's a 29 for the loss of 4 wicket, 14 to get from last over, and Tyagaraj looks like he's a key man now, and along with Pradeep, the 14 runs which is required for the victory. And what do you think, will it going to be possible here? एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर पॉसिबल जरूर है अगर त्यागराज को स्ट्राइक मिलता है तो। त्यागराज पिछले ओवर में छक्का जो उन्होंने लगाया था वो छक्का कुछ हद तक उम्मीद की किरण इस वक्त जगा चुका है इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार के लिए, और इस ओवर में 14 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और खासकर इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार के लिए माइनस पॉइंट ये है कि त्यागराज ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। तो दूसरे बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद हैं उनमें भी क्षमता मौजूद है लंबे स्ट्रोक्स लगाने की, और 14 रन बनाना मुश्किल जरूर है अंतिम ओवर में, लेकिन नामुमकिन नहीं। और एक करारा स्ट्रोक जो छक्के में अगर परिवर्तित होता है तो निस्संदेह सीधा स्ट्रेट अवे दबाव गेंदबाज के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंतिम ओवर देखने वाली बात है कि अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज इस वक्त फेंकते हैं। तो गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाजी सौंपी गई है, शायद लेग स्पिन गेंदबाजी वो करेंगे, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है। तो 14 रन अंतिम ओवर में बनाने, तख्ता जरूर भारी लग रहा है इस वक्त दुर्गा कोचारी का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों को। खासकर एक छक्का इस वक्त मैच को फ्रेंड्स कुत्तार की ओर पलट सकता है। Absolutely, Gopi. Will it going to be a gamble to bringing that last bowler, the leg spinner, in this final over from the far end? Because in the previous match, I think Gopi, this man Pradeep hitting the leg spinner for 6. I think Rauf is the bowler who bowled the last over when 6 required for the victory, and Pradeep finishes the match in a style. But I think it's a different, Gopi. This condition, the situation is totally different from the previous match. What you are talking about, and in the previous match, he hit the stroke from far end. And now he's wanted to hit some big shot from this end. And where is he? 14 to get from last over, and bowler Naveen brought into attack. And for Naveen, looks like it's a little bit little bit absence of mind for the captain, because 5 fielders inside the ring before the Rauf were going to start the over, but someone is noticing that, so that they're sending Ajay into deep long off, deep long on, deep mid wicket, deep cover point, deep square leg. The 5 fielders outside the circle. 14 decider over. 14 required for Friends Kuttar to win this match. Here is Naveen from the Rohan Corporation, and round the wicket, right arm. Balls, full toss, full set one. Fielder has the mid wicket. Bhagwan takes a catch. This is really a gifted wicket, Gopi. This is really the batsman gifted the wicket for the bowler. Juicy full toss. Absolutely juicy full toss. Have a look at that one. Pradeep hammering it down, but didn't got the sweet part of the bat. The bottom of the bat, I think that stroke which came from the bat. That's why that ball didn't travel enough. And once again, Gopi, if he's a Tyagaraj is in a strike, it's a different story. And I think they need to search for the ball and out of the ground. But here is, I think Pradeep mistiming the ball, so that I think the bowler so lucky, absolutely so lucky, isn't it? The full toss delivery got a wicket, but Gopi need not to do continue that mistake. What he has got a wicket for the full toss delivery. Now Naveen is came into middle, one more experienced campaigner, and he got ability, he got a potential of hitting a big shots. And Naveen, wait and see how he'll going to get 14 runs in remaining 5 deliveries. 29 for the loss of 5 wicket. Naveen keeping the fielder in the deep mid wicket, long on and square leg. Long off cover point, short extra cover, short third man, short fine leg, short mid wicket.
5 balls remaining. 14 runs required for the victory for Friends Kuttar. It's going to be anybody's game. Here is Navin again from the Rohan Corporation end, bowling round the wicket. Pass umpire Mohan Ayadi to Navin. This time again, lofted at one bounce collected by the fielder Bhagwan. Just a single. Again the Gopi short pitch delivery. This is not a kind of over. This is not a kind of over what the captain wanted to see from him. Again, one is a full toss delivery. He got a wicket. Second one is a short pitch delivery. Navin mistimed that one. But now Tyagaraj. Now Tyagaraj is back on strike. And wait and see how Navin will go into, how he will go into handle the pressure. 13 to get from 4 balls. Navin back to his bowling mark. Right arm round the wicket to Tyagaraj. Passes umpire Mohan Ayadi. Taking his own time, bowler. Bowls. This is a better line. This is a better line. This is a typical leg spin bowling, isn't it? This is a typical leg spin bowling. Now, umpire saying that your fielder need to be inside the ring. As far as the time is concerned, they crossed the time. The penalty has been given. They failed to complete their 4.3 delivery, 5.3 delivery within the time, within the stipulated time. That is a 27 minutes which is given for each and every team. But they crossed the time. So that umpire asking one fielder to come inside the ring. Will it going to be a costly? Will it going to be a costly here for team Durga Konchadi? But I think it's a good comeback here by the bowler. After that, one full toss, one short pitch delivery. The last one is the best one. He bowled. Now 3 balls remaining. 13 runs required for the victory. Still opportunities there for Friends Kuttar to win this match. Here is again a bowler. Navin. Balls outside the run of half time. Tyagaraj doesn't want to run. Now I want to see the fall of wickets. The same. The fall of wickets is the same. If Tyagaraj able to get 2 sixes in the last 2 deliveries, the match will going to be tight. 13 required. 12 will go into tie the match. Even fall of wickets also equal. 30 on the board. 13 required. So this is a decider delivery from Navin. And Friends Kuttar badly required 1-6. Oh my goodness! Oh my goodness! Can you believe this? I don't know why he's tried to bowl that much of pace. He's just missing it. 12 to get from 2 balls. So 12 runs required for the victory in 2 balls. Now, the batsman going to hit the 2 sixes. It's all over. If the batsman able to hit 2 sixes, all over. No question of what will going to happen. The match definitely, the 5 runs I think is going to be difficult to tie the match unless bowler bowling any mistakes. But something here is going under pressure situation here for the bowler. Navin. After bowling 3 very good deliveries, he started to feel the pressure. Now 2 balls, 12 runs required for the victory. 2 ball, 12 runs required for the victory. The someone is passing inside the boundary line because this is a very, very crucial. If the ball was going to hit that spectator, it's going to be very, very difficult. So for that, not for the fielding team, but for the batting team. 31 for the loss of 5 wicket. Now, 12 to get from 2 balls. Navin is on attack. Tyagaraj looking for the one massive shot. And here is Navin again from the far end. Right arm, round the wicket, delivers to Tyagaraj. This time, he lofted. I don't think we're going to get the distance. 1 bounce collected. Now, 1 ball, 12 runs required. Looks like everything is over for Friends Kuttar unless the bowler will going to do any stupidity for bowling no balls and the wide balls. No one can stop Durga Konchadi to qualify for the semi-final. Last ball, 12 required for the victory. Tyagaraj is on strike.
Navin balls the last delivery of the quarterfinal. Lofted, too late. It's a too late. Absolutely too late there from Tyagaraja. I am just saying about the full toss delivery. The second one is a short pitch delivery. 1-6 definitely going to change the complexion of the match. But in the final delivery, Tyagaraja hits the ball out of the park. Victory for Durga Konchadi. Victory for Durga Konchadi. Outstanding victory. But friends Kutar really fought hard. The Tyagaraja really fought hard, but not quite enough for him to finish the match for friends Kutar. Unfortunately, they lost the match, but congratulations, Durga Konchadi. They deserve this place in the semi-final because of their performance. Santosh played well, batted well. Ajay is also batted well and bowled well. And then all of them is contributed. Bhagwan, Dhanush is a key bowler, once again leading from the front. And altogether, Navin handled the pressure in the last over. And the total teamwork for Durga Konchadi, they registered the victory for Durga Konchadi. Congratulations, Durga Konchadi, for the place in the semi-final of this prestigious United Trophy 2023, which is proudly and very systematically, disciplinary organized by Real Estate Group, registered Bejai Manglore in this beautiful ECG ground. And that's it from the day number 1 of this prestigious cricket round from the commentary box. And before we are going to end here, now I want to announce the man of the match. Man of the match ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, please collect your representation memento from our chief guest. Thank you very much, friends Kuttar, for coming here and participating in this prestigious cricket tournament. Played a very good game of cricket. They fought hard, but not quite enough to win the match. So now it's a time to announce the man of the match. It's once again the all-round performance, the one and only one who rescues the team once again. It's Ajay of Durga Konchadi is judged as a man of the match for his all-round performance. ದಯಮಾಡಿ ಅಜಯ್, ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಅಜಯ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ cricket tournament. And here is now Ajay once again collecting T-shirt as well as very attractive cap. It's a second time in a row, and Ajay is in a terrific form. So congratulations, Ajay, and hope we will going to continue for the big semi-final tomorrow. And so please note, Durga Konchadi, tomorrow you will going to play a first semi-final. That is fifth match of the day number 2. Durga Konchadi ತಂಡಕ್ಕೆ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. So till then we are saying goodbye from our commentary box. Thank you very much. Now Captain Navin collecting the memento from our chief guest for the representation for this prestigious cricket tournament. Thank you very much, Navin, and all friends Kuttar teams for your representation. Thank you very much. Thanks a lot.